It's India, it's Australia, it's the gold medal match from Birmingham. Commonwealth Games, first time women's cricket is being played. And for the very first time, two very competitive teams are into the finals. It's Australia. They've won, I have lost the count of how many T20 trophies they have won. It's India, who've not won a major tournament, who's not won any ICC tournament. They have a chance to clinch the first ever gold medal that's available in women's cricket T20 at the Commonwealth Games. Straight up into action, Australia has won the toss. They are going to bat first. I am joined by my colleague Mohit Shah here on the broadcast. Mohit, it's a watch along. 3.5 hours. I don't know how much it is going to take. We are going to sit यहाँ पर बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं. वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर जॉइनिंग. शुरुआत आपसे करते हैं. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया, बैटिंग कर रहे हैं. आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? व्हाट्स गोइंग टू हैपन? ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट, हीली, मूनी टू ओपन द इनिंग्स. जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि सही फैसला लिया है ऑस्ट्रेलिया ने, कंसिडरिंग उनकी बैटिंग थोड़ा बहुत दबाव में रही है इस टूर्नामेंट के शुरुआत से ही. तो मुझे लगता है कि अगर पहले आप बड़े मैच में बैटिंग करते हो तो उतना प्रेशर नहीं होता है और पहले 2-4 ओवर आप थोड़ा कॉशियस स्टार्ट भी कर सकते हो, जो कि अगर आप एक बड़ा टोटल चेस कर रहे हो तो आप नहीं कर पाते हो. तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ने डेफिनेटली सही फैसला किया है, बट इट्स नॉट अ बैड मूव एट ऑल फॉर इंडिया एज वेल, क्योंकि फ्रेश पिच जब रहेगा तब मे बी स्विंग ज्यादा रहेगी, तो रेणुका सिंह ठाकुर के लिए भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा. तो और जैसे हमने देखा है, इंडिया स्ट्रेंथ इज प्रोबेबली देयर बैटिंग लाइनअप, और उनकी बल्लेबाजी ज्यादा अच्छी है उनकी गेंदबाजी से इस फॉर्मेट में. तो मुझे लगता है कि इंडिया वोंट रियली बी कंप्लेनिंग. और जैसे हमने देखा है कि रन बनाना उतना आसान नहीं रहा है इस टूर्नामेंट में, और अब काफी पिचेस भी पुरानी हो गई है. 16th मैच है सेम ग्राउंड में, तो बैटिंग सेकंड माइट बी डिफिकल्ट, बट एट द सेम टाइम अगर आप अच्छी गेंदबाजी करके रेस्ट्रिक्ट करते हो जैसे न्यूजीलैंड ने किया आज ब्रॉन्ज मेडल मैच में, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू चेस डाउन टोटल्स एज वेल. व्हाट डू यू मेक ऑफ द डिसीजन दो ऑफ ऑस्ट्रेलिया चूजिंग टू बैट फर्स्ट? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों टीम चाहती होंगी कि वो पहले बल्लेबाजी ही करे, because in a big match you want to put the score on board. The pitch is already used, so this is the same pitch that both the semi-finals were played, that the bronze medal match was played, so it's not a different pitch. Already a used pitch. कितने ओवर हो चुके? 40-60 ओवर हो चुके उस पिच के ऊपर, ज्यादा ही हुए हैं. So I don't think so, and that is probably the reason why yesterday India chose to bat first. Big match, you want the scoreboard, you want the score ticking, and you can already put the other side into a sort of a danger. लेकिन इस इंडियन साइड बहुत ही स्पिरिटेड है. आई एम श्योर दे वुड हैव कम विद देयर माइंड्स ओपन कि यार टॉस तो अपने हाथ में है नहीं, आप बैटिंग कर लो, बॉलिंग कर लो, लेकिन हमको जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज बोथ टीम्स आर अनचेंज्ड, जो कि लगा ही था. ऑस्ट्रेलिया तो पूरा अनचेंज्ड खेला है 5 मैच, और इंडिया भी अनचेंज्ड है. आपको क्या लगता है, यास्तिका आना चाहिए था तानिया के लिए, या और कोई चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या दिस इज द टीम टू गो फॉरवर्ड टुडे इन द फाइनल्स? नहीं, मैं कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर अगर मुझे टीम लेनी होती तो मैं राजेश्वरी गायकवाड़ को खिलाता मेघना सिंह की जगह, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी कर चुकी है ओडीआईज में कई बार. तो मुझे लगता है कि उनको लेते तो कुछ फायदा हो सकता था, बट अदरवाइज अब ठीक है. मुझे लगता है कि हरमनप्रीत कौर जैसी कैप्टन है, वो जनरली कभी नॉकआउट स्टेजेस में चेंजेस करना पसंद नहीं करती है. हमने सुपरनोवास और इंडिया के साथ भी देखा है इन द पास्ट कि एक बार वो अपना एक फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 डिसाइड कर लेती है तो वो उसी के साथ स्टिक करना चाहती है. तो इट्स नॉट अ सरप्राइज कि बोथ द टीम्स हैव गॉन इन विद एन अनचेंज्ड 11. और जैसे हम बात भी कर रहे थे, मुझे लगता है कि तान्या भाटिया इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे कोशिश ये है कि पूजा वस्त्रकर को थोड़ा ऊपर खिलाया जाए, स्नेह राणा को नंबर 7 पर खिलाया जाए. तो फिर यास्तिका को आप कहाँ खिलाओगे अगर आपको जेमी और हरमन को भी टॉप 4 में खिलाना है? तो मुझे लगता है तान्या भाटिया इज अ गुड ऑप्शन. और जैसे आपने खुद कहा था हमारे प्रीव्यू में कि जब तान्या भाटिया ऊपर आके खड़ी हो जाती है रेणुका सिंह ठाकुर या मेघना सिंह की गेंदबाजी में, तो एक बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि बल्लेबाज बाहर निकलकर आक्रामक क्रिकेट नहीं खेल पाते. और जैसे एलिसा हिली को हमने देखा, उनको काफी पसंद है
कि वो पेसर्स के खिलाफ भी कदमों का इस्तेमाल करके आगे निकल के शॉट मारना पसंद करती है। तो अगर ऐसा कोई विकेट कीपर होता है जो ऊपर खड़े रह के अच्छा प्रेशर रख सके तो काफी फर्क पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि तान्या भाटिया का सिलेक्शन इज अ गुड मूव, और ये एक अच्छा मूव किया है इंडिया ने, लुकिंग एट जिस तरीके से उनका बैटिंग लाइनअप रहा है पिछले 2 मैचों में। और मुझे भी यही लग रहा है कि हीली ने, अगर हम देखें तो पिछले जो 2 बड़े वर्ल्ड कप फाइनल्स थे दोनों में तहलका मचा दिया। पहले तो इंडिया के खिलाफ ही मचाया था। इंडिया वो भूला नहीं होगा, दीप्ति शर्मा स्पेशली वो भूली नहीं होगी, क्योंकि उनका कैच ड्रॉप किया था स्टार्टिंग में ही। अब आज जो मौका मिला है इंडिया को, फिर से हीली है, लेकिन उनके पास उन्होंने एक चीज रख दी है कि तानिया को रख दिया है, तो वो तानिया उनके सामने ही खड़ी हो जाएंगी, तो हीली क्रीज के बाहर नहीं जा सकती है। क्रीज के बाहर गई तो आउट हो। तो वो एक अच्छा मूव है, क्योंकि जब इतने आक्रामक बल्लेबाज है एक टीम में, हीली है, मूनी है, लैनिंग है, उनकी बैटिंग हमने पहला भी मैच देखा, रेणुका सिंह ठाकुर ने पहले इसमें 4 विकेट ले लिए थे, लेकिन फिर भी हार गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ग्रेस हैरिस, जिसने 2016 में लास्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए बैटिंग किया था, वो आके मैच जीता के चली गई। मेरे हिसाब से ये एक जो चीज है, ये इंडिया को ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि एग्जैक्टली उनका करने का प्लान क्या है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है ग्रेस हैरिस काफी की प्लेयर रह सकती है इस मैच में, क्योंकि जैसे हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया के हर मैच में 2-3 विकेट काफी जल्दी चले गए, और बेथ मुनी और तालिया मगरा उनके टॉप ऑर्डर के अकेले 2 खिलाड़ी है who've been performing consistently well in this tournament। क्योंकि अलीसा हीली काफी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, स्पेशली T20 फॉर्मेट में। मैग लैनिंग ऑल्सो अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं दिखी है इस टूर्नामेंट में, और रेचल हिन्स को ज्यादा मौका मिला नहीं है, और जब मिला है वो उतना फायदा उठा नहीं पाई है इन 4-5 मैचेस में। तो मुझे लगता है कि ग्रेस हैरिस को आज बल्लेबाजी जरूर मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि आज फिर से ग्रेस हैरिस से हम कुछ धमाके की उम्मीद रख सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है वो एक ही स्टाइल में बैटिंग करती है और उनको ज्यादा रुक के खेलना पसंद नहीं है। नहीं, मुझे लग रहा है, देखो मुझे तो जो लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया 100 के अंदर ऑल आउट हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। हमने हमारा शेड्यूल रखा है 12:30 के ऊपर तक, लेकिन अगर मैच ना चले तो बेटर ही होगा। उस टाइम पे अगर हम सब लोग ऐसे देखते हुए पोडियम फिनिश अगर देखे तो वो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन हाँ, ग्रेस हैरिस फॉर्म में है, सारे लोग फॉर्म में है। मुझे नहीं लगता है कि जितने लोग खेल रहे 22 लोग उनमें से कोई भी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अगर नहीं होता तो वो अनचेंज साइड नहीं होती। So everyone is in form. Of course, Harris did well, but I'm sure Harman Pawar and the team management might have sat together and would have discussed that what exactly was that weak point we didn't use against Harris. Remember, Sneha Rana did not play that match. Pooja Vastrkar did not play that match. So you have 2 bowlers who are potentially wicket-taking bowlers. So Sneha Rana could be used against Harris. Could be used against a lot of the other players. We can now see that there is this Australian national anthem that's going on. I think so. This is what everyone lives for. We've discussed a lot about the team combination and everything. लेकिन ये जो होता है कि यार जनरली आप बोर्ड्स के लिए खेलते हो। अगर हम ऑस्ट्रेलिया इंडिया को देखें तो वो एक जो ऑस्ट्रेलिया बोर्ड का या इंडिया बोर्ड का जो लोगो है वो होता है हेलमेट पे। इस सीजन इस पूरी कॉमनवेल्थ में वो नहीं है। it's the country flags or the Commonwealth Games thing that is there on their anywhere that is there, and they are literally enjoying the anthems. They want that podium finish so that their flags go up and people are actually seeing कि अरे यार क्या चल रहा है। बिल्कुल, और जैसे हमने देखा है, आई एम श्योर यहाँ पे और इंडियन और ऑस्ट्रेलियन एथलीट्स भी होंगे दूसरे स्पोर्ट्स के जो आए होंगे ये मैच देखने और चीयर कर रहे होंगे इंडियन और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को। तो मुझे लगता है उससे भी एक काफी मोटिवेशन मिलता है जब आप देखते हो कि आपके जो दूसरे कंट्री के लोग हैं जो गोल्ड वगैरह जीते या मेडल जीते हैं वो भी वहाँ है स्टैंड्स में, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे आपने बोला, एक कंट्री के लिए खेलना इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, और यहाँ पे जो मेडल है वो भी कंट्री को मिलता है और ना कि किसी बोर्ड को मिलता है। तो मुझे लगता है कि इट्स अ बिग इंसेंटिव फॉर ऑल द प्लेयर्स, नॉट दैट उनको इंसेंटिव ज्यादा चाहिए इससे। बट अगर हम बात करें अभी इंडियन गेंदबाजी की, सिंस आपने बोला स्नेह राणा नहीं थी, पूजा वस्त्रकर नहीं थी, तो आपको अभी इंडिया का नेशनल एंथम आई थिंक चल रहा है। इट्स अ वेरी गूज़बम्प इंड्यूसिंग मोमेंट फॉर ऑल द प्लेयर्स। यू कैन सी इट
on their faces, how much it means to them. तो आप किसके साथ यहाँ पे गेंदबाजी आपको लगता है कप्तान हरमनप्रीत कौर शुरू करेगी आज इस बड़े मुकाबले में? मेरे हिसाब से तो एक साइड रेणुका सिंह ठाकुर रहेगी और दूसरी साइड पहली मेघना आएगी, उसके बाद दीप्ति शर्मा आएगी। तो 6 ओवर इन 3 बॉलर्स में ही होने चाहिए। अनलेस एंड अनटिल बहुत पिटाई हो जाती है और कोई और आता है तो बात ही अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 में से होने चाहिए सारे लोग। और आपको क्या लगता है कि रेणुका सिंह ठाकुर विल शी बी एबल टू हैव अ बिग इम्पैक्ट अगेन? क्योंकि सेमीफाइनल में हमने देखा शायद थोड़ी नर्वस थी, उतनी अच्छी शुरुआत हुई नहीं उनकी और फिर वो रिकवर भी नहीं कर पाई, जबकि पहले के 3 मैचेस में इंडिया की सबसे बेहतरीन गेंदबाज थी और काफी बड़ा हाथ रहा है उनका इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने में। और पहला जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था उधर भी बेस्ट परफॉर्मर थी। तो कैन वी एक्सपेक्ट रेणुका सिंह ठाकुर टू गेट एन अर्ली विकेट अगेन जैसे वो करती आ रही है अभी तक? मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि आप जब इतना अच्छा परफॉर्म कर चुके हो तो आपको चाहिए कि बड़े मुकाबले में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे। रेणुका चाहेंगी, लेकिन वो होता है नहीं होता है ये हम कोई भी नहीं बोल पाएगा। देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली होगा। टीम इज इन हडल, डिस्कशंस चल रहे हैं, काफी स्माइलिंग फेसेस है। अगर आप देखो तो जो कैप्टन और वाइस कैप्टन उनके चेहरे बहुत ही अलग है। हरमन इज अ वेरी सीरियस पर्सन, सोच रही होगी क्या चल रहा है क्या नहीं। वही स्मृति देखो तो एकदम हंस रही है, डिस्कशन कर रही है। आई थिंक सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, कि बोथ आर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल एंड दैट्स व्हाई when they both complement each other, that is how the team is growing. Do you feel it's the same way? Because we've seen a lot of times Smriti is captaining and Harman is somewhere in the long on long off, deep में कहीं तो भी, और नहीं तो हरमन आ जाएगी तो स्मृति बाहर है, दोनों एक साथ मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को बहुत अच्छे से करते हैं। जी बिल्कुल, हमने कई बार देखा है और जैसे हमने ये बल्लेबाजी के टाइम भी देखा है कि जब भी हरमनप्रीत कौर स्मृति मानधना के साथ बैटिंग करती है, शी ऑफन मैनेजेस टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हरमनप्रीत कौर, क्योंकि वो हमेशा उनको बोलते रहती है कि आप स्माइल करो, रिलैक्स करो, टेंशन मत लो। और कभी कभी ऑन द बिग स्टेज आपको बस वो सुनने की जरूरत होती है, क्योंकि आप अगर इतने बड़े खिलाड़ी हो, इतने अनुभवी खिलाड़ी हो, तो ऑब्वियसली आप बेस्ट इन द वर्ल्ड हो, बट आपको कभी कभी एक पुश और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो मुझे लगता है जैसे आपने बोला, उनका जो ये पर्सनालिटीज में जो एक थोड़ा सा डिफरेंस है वो काफी अच्छे से काम करता है दोनों के लिए, क्योंकि और यंगर प्लेयर्स के लिए भी आई थिंक एक अच्छा काम करता है, क्योंकि हरमनप्रीत कौर जैसी है वो काफी एक्सप्रेसिव है, कई बार वो जो उनके मन में होता है बोल देती है फील्ड पर। बट यंग प्लेयर्स होते हैं तो फिर अगर स्मृति मानधना या कोई जाके उनके गले में हाथ डाले और उनको प्यार से समझा दे तो फिर उनको अच्छा ही लगता है। मुझे लगता है कि काफी यंग प्लेयर्स के लिए भी उनको देख के अच्छा लगता है जब कैप्टन वाइस कैप्टन सेम पेज पे हो और उनका तालमेल इतना अच्छा हो। तो हरमन स्मृति की पार्टनरशिप आई थिंक हैज बीन रियली गुड फॉर इंडिया इन द ever since like they have taken over the full time captaincy and vice captaincy across That's great to formats. hear. यहाँ पर पूरी आतिशबाजी हुई है as Healy and Mooney take to the center stage. Harmanpreet Kaur is ready. Renuka Singh Thakur is bowling the first over. The team is all set. Renuka 2, Healy and Mooney. We will now be joined by Mona Meshram. Hi Mona, you are here. Hi. हेलो, कैसा लग रहा है? इंडिया इज प्लेइंग फॉर द गोल्ड मेडल मैच। जस्ट शुरू होने वाला है। रेणुका सिंह ठाकुर टू बोल, हीली एंड मूनी। कंट्री व्हिच इज नॉट अलाउड इंडिया टू विन अ मैच टिल नाउ। डू यू फील इट्स गोइंग टू चेंज? First of all, I'm very excited to see them in final. I mean, I'm very excited to see India is doing really well. क्योंकि 2017 वर्ल्ड कप में मैं जब थी तो मुझे पता है कि वो जो फीलिंग होती है फाइनल्स वाली, वो फीलिंग क्या होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज अपनी टीम फाइनल्स में पहुंची है एंड फाइनल्स इज समथिंग आई एम वेरी पॉजिटिव कि हम गोल्ड लाएंगे इस बार। आप पॉजिटिव हो, गोल्ड लाएंगे। मोहित, आपको क्या लगता है? मोना को आपको क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, पूछ लीजिए। जी, मैं मोना से ये पूछना चाहूंगा, आप रेलवेज के लिए इतनी अच्छी खिलाड़ी रही है, आप इस टीम को भी बहुत अच्छे से जानती हो। आप मुझे बताइए कि रेणुका सिंह ठाकुर की गेंदबाजी में आपने क्या इम्प्रूवमेंट्स देखे हैं पिछले 3 महीनों में? क्योंकि श्रीलंका टूर हो
या ये CWG वाला जो टूर्नामेंट अभी चल रहा है काफी सक्सेसफुल रही है। नई गेंद से तो हमेशा से ही वो विकेटें लेती आ रही है डोमेस्टिक सर्किट पे भी, बट जो एक वेरिएशन लाई है वो पुरानी गेंद के साथ, और जो मिडिल ओवर्स में भी उन्होंने 3 विकेट्स दिलाए हैं इंडिया को। तो आपने उनके साथ ये साल भी खेला है सीनियर T20 टूर्नामेंट में, तो क्या इम्प्रूवमेंट्स नजर आए आपको उनके गेम में? सी देखिए, रेणुका एक बहुत अच्छी प्लेयर है जो हर बार कुछ ना कुछ सीखना चाहती है अपनी बॉलिंग से। हर मैच में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहती है अपने बॉलिंग में। सो मैंने जितना रेणुका को देखा है हमारे टीम में, वो उसने काफी वर्क किया, अपने यॉर्कर्स पे वर्क किया है, अपनी लाइन एंड लेंथ पे वर्क किया है, जो डोमेस्टिक में आपको देखने नहीं मिलता है। बट इंटरनेशनल अगर आप देखेंगे तो इंडियन विकेट जो रहती है वो आप काफी लो रहते हैं, और जो इंटरनेशनल विकेट्स होते हैं वो काफी ऊपर आती है बॉल, मतलब थाइस के ऊपर आती है। सो वो चीजें लेंथ एंड लाइन, उस चीज पे वर्क करते हुए मैंने उसको देखा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसके जो स्लोअर वंस एंड यॉर्कर्स देखने मिले हैं वो स्पॉट ऑन थे। मुझे याद है जब हम लोग फाइनल्स या हम लोग केरला के अगेंस्ट खेल रहे थे, तब मैं मिड ऑफ पे खड़ी थी एंड रेणुका ने बोल के उसको यॉर्कर बॉल डाला, और उसने मुझे बोला कि दीदी मैं इसको ना बोल्ड लूंगी, एंड सेम हैपेंड एट द नेक्स्ट बॉल। सो मुझे इतना अच्छा लगा वो कि एक कॉन्फिडेंट बॉलर जो इंडिया चाहती थी इतने सालों से आफ्टर झुलंदी, सो वो एक बॉलर उनको मिला एंड शी इज डूइंग रियली वेल। आपको क्या लगता है झूलन गोस्वामी का ऐसा वो जो झूलन गोस्वामी ने जो एक वॉइड रख दिया है वो रेणुका भर पाएगी? इतने सालों से आपने सी झुलंदी का एक अलग ही ऑरा है, और झुलंदी का हाइट के वजह से और स्पीड के वजह से उनका अलग ही बॉलिंग दिखता है। बट रेणुका अभी काफी न्यू है इन सब चीजों में और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, और इम्पोर्टेंटली वो चीजें बहुत पॉजिटिवली ले रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट इज नॉट मतलब छोटी चीज नहीं है। वो वहां पे वो स्टेज पे खेलना और वो स्टेज पे बने रहना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एज झुलंदी हर बार मैंने उनको देखा हार्डवर्क करते हुए कि इतने सालों तक वो नंबर वन पर बने रहे थे, तो उनका हार्डवर्क बोलता था। जो जितनी भी बॉलिंग वो करते थे तो वो उनका हार्डवर्क बोलता था। और सेम रेणुका के लिए बोलूंगी, रेणुका भी इतनी ही अभी जितना मैं देख पा रही हूँ एक मैच्योर्ड प्लेयर बन के उभर आ रही है। सो वो चीज काफी इम्प्रेसिव लगी मेरे को रेणुका को लेके। मैच्योर्ड प्लेयर बन के आ रही है। पहली ओवर का आखिरी गेंद आने वाली है जस्ट। रेणुका सिंह ठाकुर ने शुरुआत अच्छी की है, पहले 4 गेंदों पर 4 डॉट बॉल, फिर एक वाइड, एक चौका बैठ चुका है। हीली ने अभी जस्ट एक चौका मारा है। लेकिन ये जो पूरा सेटअप है जो अभी करंट इंडियन टीम है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि इस बार मोस्ट ऑफ दिस प्लेयर्स इवन प्लेड द डोमेस्टिक सीजन। जनरली हम देखते नहीं है स्मृति हरमन को डोमेस्टिक खेलते हुए, लेकिन कितने ही सालों बाद सारे लोगों ने डोमेस्टिक खेला। आपको क्या लग रहा है ये टीम सही है? इस टीम में जो एक वो अग्रेसिवनेस हमने देखा है पिछले 2 महीनों में, आपको क्या लगता है इज दिस गोइंग टू बेयर अस द फ्रूट्स दैट वी नेवर हैड इन द पास्ट? आई थिंक यस, क्योंकि ये जो टीम अभी T20 की देखने मिल रही है वो काफी बैलेंस साइड है। हम अगर देखें तो हमारे पास 3 ऑलराउंडर्स है, स्पेशलिस्ट बॉलर्स है, स्पिनर्स डोमिनेटिंग अपनी साइड होती है, एंड स्मृति, हरमन, जैमी, इन सब ये सब लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, और टीम एक बैलेंस साइड दिख रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमको एक अच्छा विकेट कीपर मिल गया है तानिया के इसमें। सो मतलब तानिया को और थोड़ी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, बट तानिया की विकेट कीपिंग को अगर आप देखें तो विकेट कीपर एक अलग ही नजर आती है। जो अगर वो 20 रन नहीं बना पा रही है तो 20 रन 30 रन रोक रही है।
और वो विकेट्स भी ले रही है, उस तरीके का आउटस्टैंडिंग विकेट कीपिंग भी कर रही है. सो ये चीजें ना काफी मुझे लग रहा है कि इंडिया टीम अभी काफी बैलेंस साइड है. और इंडियन टीम बहुत बेंच talented है. स्ट्रेंथ भी उतनी ही अच्छी है हमारी. आपने जस्ट अभी तानिया की बात की, काफी लोग गुस्से में हैं. ट्विटर पर अगर देखा जाए तो काफी लोगों ने बोला कि अरे यार ठीक है, मतलब आप पूजा वस्त्रकर को लेके आ रहे हो टीम में, लेकिन आप यास्तिका को ड्रॉप कर रहे हो तानिया के लिए. क्योंकि सारे लोगों को ट्विटर पे लग रहा है कि तानिया इज अ मच बेटर विकेट कीपर, नो डाउट, लेकिन यास्तिका इज अ मच बेटर बैटिंग विकेट कीपर. और हमने रिचा को ड्रॉप कर दिया है. मतलब चल क्या रहा है? क्योंकि अगर आप पिछले 4 महीने में देखो तो हमने 3 विकेट कीपर को यूज किया और सबको इनफ चांसेस नहीं मिले हैं. मुझे लगता है कि ऑब्वियसली एक विकेट कीपिंग एक ऐसी चीज है जो आप एक एक्स्ट्रा एज लाता है अगर आपके पास बैटिंग भी हो. बट विकेट कीपिंग का जो स्किल एक होना चाहिए वो अभी मुझे लगता है कि यास्तिका में थोड़ा लैग कर रहा है. क्योंकि जिस तरीके की तानिया कॉम्प्लीमेंट करती है विकेट कीपिंग, वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभी इंडिया में फिलहाल करता होगा. क्योंकि एक बॉलर को जो कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है वो तानिया इज गिविंग देम. तानिया इज गिविंग देम डेफिनेटली. और इसलिए हम अगर देखें तो रेणुका की पहली पूरी ओवर में तानिया वाज जस्ट नियर टू द स्टंप्स एंड दैट डिड नॉट अलाउ हीली टू गेट आउटसाइड, स्कोर एनी अमाउंट ऑफ रन्स. क्योंकि वहां पे शायद मेरे वही चीज बॉलर्स चाहते हैं कि तानिया ऐसी विकेट कीपर है कि आप अगर उसका ग्लव वर्क देखेंगे तो अगर आप बॉलर के बॉलिंग के वक्त ऊपर खड़े रहे तो वैसे ही बैट्समैन थोड़ा हिल जाता है. क्योंकि अगर रन नहीं आए तो वो विकेट लेने के लिए आप अगर देखें तो चांसेस बनाने के लिए वो चीज बनती है. तो इसलिए फिर मुझे लगता है कि तानिया इज द बेटर कीपर देन एनीवन. तानिया इज अ बेटर बेटर कीपर, ऑप्शन. बेटर ऑप्शन देन एनीवन. आई एग्री टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. आइए थोड़ा बात करते हैं हमारे फास्ट बॉलर की ओर. अगर हमने देखा है कि झूलन और शिखा के बाद में सब लोगों को ऐसा लगता था कि यार हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शन नहीं है या हमने डेवलप नहीं किए हैं. लेकिन जैसी ये दोनों गए तो अभी रेणुका आ गई. रेणुका ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है. उसके बाद में अभी मेघना सिंह अच्छा कर रही है. आपके हिसाब से क्या हमारे पास 5-6 अच्छे फास्ट बॉलर्स है कंट्री में, और है तो वो कौन है? आई थिंक ऑब्वियसली जुलंदी का कोई शू फिल नहीं कर सकता है. एंड एज ऑफ नाउ शिखा अभी अगर टीम में नहीं है तो बट शिखा इज अ वेरी गुड बॉलर. वो कभी भी कम बैक कर सकती है. एंड अगर आप देखें रेणुका और मेघना सिंह दोनों अच्छे बॉलर है एंड दे आर इम्प्रूविंग डे बाय डे. सो मुझे नहीं लगता कि उनसे बेटर अभी तक कोई आया है. और बीसीसीआई इज डूइंग रियली वेल टू गिव इंडिया बेस्ट बॉलर्स. उन्होंने कैंप्स लगाए हैं काफी इमर्जिंग फास्ट बॉलर्स के लिए, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए. सो जो 10 इंडिया में बेस्ट बॉलर्स हैं उनके लिए कैंप्स लगाए हैं. तो वो एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि कोई ना कोई तो आएगा जरूर. और इंडिया में बहुत टैलेंट है अगर देखा जाए, बैटिंग बॉलिंग बहुत सारा टैलेंट है. मोना, आपने इतने सालों से इतना डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है. आपके हिसाब से आज देश के अगर 5 टॉप फास्ट बॉलर्स आपको बताने हैं, मीडियम पेसर्स बताने हैं, तो आप किसको बताएंगे? हम थोड़े देर के लिए झूलन और शिखा को बाजू में रखते हैं क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस हो चुके हैं. मुझे थोड़ा यंगस्टर्स से आप मिलाइए कि जो हमने अभी तक उतना देखा नहीं है या कम देखा है हमने उनको. मुझे लगता है शमा सिंह एक है जो पेसर ऑलराउंडर है. एंड आई थिंक मानसी जोशी भी है इन द लाइन. क्योंकि काफी डोमेस्टिक खेलते आ रहे हैं. अभी बीच में हमने देखा आईपीएल में भी थे तो उनको चांसेस काफी कम मिले हैं. अगर मानसी जोशी को चांसेस मिलेंगे तो मे बी शायद ऐसे ही कुछ निखर के आएंगे वो.
सो मानसी जोशी है, शमा सिंह है, एंड अमनजोत एक अच्छी प्लेयर है। अमनजोत कौर जो पंजाब के लिए खेलती है, हाँ जी। मानसी जोशी को तो हमने सबने बड़े स्टेज पर भी देखा है, तो उतने ज्यादा उनको चांसेस नहीं मिले। हमेशा टीम में इवन आना जाना। सिमरन काफी अच्छी प्लेयर है। अगर मीडियम पेसर आप देख रहे हो, सिमरन है, श्रद्धा एक महाराष्ट्र की प्लेयर है, वो एक अच्छी प्लेयर है। एंड हमारे यहाँ से अंजलि शर्वानी करके रेलवे से खेलती है, लेफ्ट आर्म पेसर। काफी सारे प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक में आपको देखने मिलेंगे, जो बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं टीम के लिए। उनके डोमेस्टिक में काफी प्लेयर्स है, इनमें से काफी नाम तो दर्शकों ने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन इन सारे प्लेयर्स ने अच्छे खासे टाइम के लिए खेला है। अगले साल जब विमेन्स आईपीएल आता है तो उस टाइम पर जैसे हमको बहुत सारे प्लेयर थे, जैसे अर्शदीप सिंह होंगे या कितने ही प्लेयर्स हमको आईपीएल की वजह से पता चले, क्योंकि हम रणजी उतना नहीं देखते, दुलीप ट्रॉफी उतना नहीं देखते, या फिर उतना ब्रॉडकास्ट भी नहीं होता है। आईपीएल की वजह से सारे प्लेयर्स लाइमलाइट में आए और उसके बाद इंडियन टीम में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। मेरे हिसाब से वो सेम चीज, और ये पहला विकेट गिर गया है, पहला विकेट गिर चुका है। डीआरएस लिया था इंडिया ने, पहला विकेट गिर चुका है। कौन है बस, और वो भी रेणुका ने लिया है। रेणुका सिंह ठाकुर ने, अलीसा हिली जो सबसे बड़ा थॉर्न बन चुकी थी इंडिया के लिए। हर मैच में, अगर इंडिया का मैच है 7 रन बनाए उन्होंने, आज 12 बॉल में एलपीडब्ल्यू हो चुकी है। अंपायर ने आउट नहीं दिया था, लेकिन हरमन ने डीआरएस लिया, डिसीजन टर्न हो गया और हीली पहला विकेट गिर चुका है भारत के लिए। कितना इंपॉर्टेंट है ये विकेट? जी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हीली इज अ वेरी बिग मैच प्लेयर। क्योंकि मैंने हर बार देखा है कि बड़े बड़े मैचेस में, जैसे फाइनल्स हो गया, सेमीफाइनल्स हो गया, उसमें इंडिया के अगेंस्ट अगर वो बैटिंग कर रही है तो वो मतलब बहुत रन करती है। और रेणु का एक बहुत अच्छा बॉलर मिला है इंडिया को, कि उसने हिली को आज मतलब 10 रन के ऊपर भी नहीं जाने दिया इस टूर्नामेंट में। और अगर हम देखें तो उनका आज सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो लगा वो है कि उन्होंने सिर्फ 7 रन बनाए, लेकिन उन्होंने 12 गेंदें ली। तो इंडिया इज बॉलिंग अ वेरी गुड लाइन एंड लेंथ। अगर हम देखें तो अभी तक 2.2 ओवर 14 बॉल हो चुके हैं और सिर्फ 9 रन दिए हैं, 1 विकेट लैंडिंग आ चुकी है क्रीज के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम चल रहा है। आपको क्या लगता है? प्रेडिक्शन टाइम, चलो आप मुझे पता है आप बोलोगे इंडिया गोल्ड मेडल जीतेगा, आप मेरे को ये बताओ कि स्टार प्लेयर कौन रहेगा आज का? आई थिंक टाई हो सकता है, मतलब 2 लोग उभर के आ सकते हैं। आज मेरी आंखें शेफाली के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि शेफाली को बहुत अच्छा लगता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बैटिंग करना। मतलब अच्छे बॉलिंग के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग करती है वो, शेफाली एंड हरमन। ये 2 प्लेयर्स है जो बहुत निखर के आएंगे, मुझे लग रहा है। आपको लग रहा है निखर के आएंगे जो 2 प्लेयर्स, वो है शेफाली और हरमन। हमारे पास और एक फैन भी अब ज्वाइन कर चुके हैं, नेहा शेट्टी। बहुत बड़ी सपोर्टर है विमेन्स क्रिकेट की। आपको नेहा, आपको मोना से कुछ पूछना है बिफोर मोना टेक्स हर लीव? I'm really happy to be here, and interacting with a cricketer is obviously a big moment. If I had to ask a question, I'm just overwhelmed at this time. But आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया गोल्ड मेडल जीते, so is it a step in the right direction for women's cricket in India? Exactly. मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम हम CWG में खेल रहे हैं एंड फर्स्ट हमारा ही गोल्ड रहेगा, तो ये बहुत बड़ा एनकरेजमेंट रहेगा। अगर बिग टूर्नामेंट्स की आप बात करें, वर्ल्ड कप बीट चैंपियंस लीग वगैरह, सो ये काफ़ी अच्छा मोरल बूस्ट रहेगा अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो क्रिकेटर्स के लिए, स्पेशली वुमेन्स क्रिकेट के लिए। Especially women's cricket के लिए this is going to be a huge morale booster. Mona, thank you for joining us. You have predicted Shefali, Harman to do well.
let's see if India wins the gold medal. We are all backing them to win that gold medal. Neha, I think thank मतलब ये पूरी टीम अच्छा कर रही है, बट शिफाली, मैं चाहती हूँ कि शिफाली और निखर के दिखे, क्योंकि शिफाली के बैट से मैंने जो अभी तक रन्स देखे हैं वो उतना बैटिंग उसका, दो शी स्कोर्ड 40s and 50s, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि वो क्रैकिंग परफॉर्मेंस वो देखने मिले, क्योंकि शिफाली एक बहुत डिफरेंट प्लेयर है। जब भी वो खेलती है तो वो डिफरेंट दिखती है, एंड शी इज वेरी यंग। तो मैं चाहती हूँ कि यंग जनरेशन को उतना वो देखने मिले कि शिफाली अगर कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ये चीज काफी इम्पोर्टेंट रहेगी अगर शिफाली स्कोर करती है तो। ऑब्वियसली important है, स्मृति but और ये सारे लोग तो कर ही रहे हैं, बट शिफाली आई वांट हर टू स्कोर। Mona's prediction is Shefali has to do well. India has to win. Let's see whether India wins the gold medal. Thanks, Mona, for tuning in. Neha, thanks for joining. Thank you so much. Thank you, Yash. Thank you. Neha, we've started 3 overs gone, 14 for 1. India started on a brilliant level. What do you see? Did you expect them to do this, or did you expect Healy to go berserk like she does in a final? Absolutely, this is a fantastic start. Any Indian fan would have wanted this, right? And getting a big fish in the form of Alyssa Healy out early on is definitely what India did want. And I think we are setting up for a good match. Hopefully, we can restrict Australia to a low score and chase it. Hopefully, we can restrict Australia to a low score. Hi, Reema. Reema is joining in from the India versus West Indies men's game. Reema, we've पहले अर्ली विकेट आ चुका है 14 पर 1. हीली आउट हो चुकी है. रेणुका ने बहुत ही अच्छी शुरुआत दे दी है इंडिया को. आपको क्या लगता है कि क्या चल रहा है? भारत का जो एक अलग मोटिवेशन, अलग एक अग्रेसिवनेस हरमनप्रीत कौर ने जो लेके आए हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इस मैच का? देखिए, मुझे ना बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है, स्पेशली जिस तरीके से इंडिया खेल रही है, क्योंकि आप हारना और जीतना तो एंड रिजल्ट है ना, आप किस तरह से खेलते हैं ना, वो जर्नी, वो कहानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। और वो कहानी यहाँ पे एक मैसेज मिल चुका है कि हम अटैकिंग खेलेंगे। मैं यहाँ पे इंडिया वेस्ट इंडीज की सीरीज कर रही हूँ, उसमें भी रोहित शर्मा ने साफ बोल दिया कि हम एक सर्टेन ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, ओपोनेंट को पहले अटैक करेंगे, आने का मौका नहीं देंगे, उसमें चाहे हो सकता है हम फेल भी हो। वही हमें इंडिया की अप्रोच से भी देखा, जिस अप्रोच से इंडिया खेल रही है। और मुझे लगता है अगर ऑस्ट्रेलिया को आपने यहाँ पे आउटप्लेड करना है, उसकी शुरुआत भारत ने कर दी है, अटैक कर रहे हैं। और आज अगर आप देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज इंडिया की अभी तक बेटर है। इंडिया की बॉडी लैंग्वेज बेटर है। ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये सोच के ही नहीं आया था कि इंडिया ऐसी आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था 2020 में, तो मैं ग्राउंड में था और जिस हिसाब से वो लोग मार रहे थे, इंडिया वाज कंप्लीटली ऑन द बैक फुट। मतलब पहले गेम से जैसी डर रहे थे, जैसे कि 86,000 पीपल, ये वो सब कुछ, ऐसा लग रहा था कि दे आर ओवरवेल्म्ड। लेकिन आज वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। एजबेस्टन फुल है, लेकिन जो पहले गेम से तानिया को बोल दिया कि तू सामने जाएगी, हीली बाहर नहीं निकल पाएगी, और रेणुका और मेघना जैसी बॉलिंग कर रहे हैं। रेणुका तो मतलब एक अलग लेवल के फॉर्म में ही चल रही है। और आप स्टार्ट अगर देखेंगे, मैं साथ में मैच भी देख रही हूँ यश, तो सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इंडिया को अब क्राउड के साथ खेलने की हैबिट हो गई है। अब वो नर्व्स नजर नहीं आ रही, वो एग्रेशन नजर आ रहा है। हरमन ने बहुत अच्छी बात बोली थी पोस्ट मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट कि मैं एग्रेसिव होना चाहती हूँ, मैं हो रही हूँ, ताकि मेरी टीम भी चढ़ के खेले। सी हर किसी की ताकत अलग होती है, किसी की स्ट्रेंथ उसका एग्रेशन होता है, किसी की स्ट्रेंथ उसकी कामनेस होती है। यहाँ पे एक क्लियर मैसेज आ गया कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर इस पूरे टूर्नामेंट में ध्यान देना तो इंडिया ज्यादा बेटर खेल रही है इंडिया के लेवल के हिसाब से। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया जो नाम है, जो दबदबा बना के रखता है, उस हिसाब से बारबाडोस के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने कोई मैच आराम से जीता नहीं है। जीते जरूर हैं क्योंकि जिनके पास 8 नंबर तक बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं, बैटिंग डेप्थ है, सो वो क्या करता है, वो एक विकल्प लेके आता है कैप्टन के लिए, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, कि आपके पास बॉलिंग में भी डेप्थ है, आपके पास बैटिंग में भी डेप्थ है। डिफरेंट मैच विनर्स है, डेफिनेटली एडवांटेज इसमें ऑस्ट्रेलिया को जाता है। उस दिन आप कैसा खेलते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है समहाउ इंडिया तैयार होके आई थी इस बैटल के लिए। समहाउ इंडिया तैयार हो चुकी है। नेहा, आपको कुछ पूछना है? रीमा इतना विमेंस क्रिकेट कवर करती है, आपको क्या पूछना है रीमा?
राइट, सो मैम मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि ऑस्ट्रेलिया का जब हम परफॉर्मेंस देखे इस टूर्नामेंट में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहा है, ऑल्दो वो विनिंग साइड पे रहे हैं, तो एज अ यूनिट क्या रॉन्ग जा रहा है, लाइक आपका थॉट्स ऑन द सेम? ऑस्ट्रेलिया के लिए तो मैं ये जो मैं नजर आ रहा है, अगर आप मैकलैनिंग के नंबर्स देखेंगे, बैटमूनी के नंबर्स देखेंगे या हीली के नंबर्स देखेंगे, कुछ खासा उन्होंने किया नहीं है। लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है, गार्डनर है या मैकग्रॉथ है या कोई भी नीचे आके जो रन बना रहे हैं, इवन अलाना किंग ने भी मैच विनिंग रन बनाए थे, चाहे वो 10 रन ही थे। सो मुझे लगता है कि मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये टीम है, ये हार नहीं मानती। और ये उन्होंने पहले मैच में ही बता दिया था कि 49 फॉर 5 होने के बाद भी हम दमखम रखते हैं फाइट करने का। सी मैच अगर वो वहां सोच लेते कि हम लोग 5 आउट हो गए तो शायद हार जाते, उन्होंने सोचा कि हम मैच को पास लेके जाते हैं। यहाँ से मैं कहती हूँ कि आप ना ओपोनेंट से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आप मैच को पास लेके जाइए। और वापस तो धोनी है, और धोनी ने हमेशा ये सिखाया ही है कि जितने आप मैच में पास जाएंगे उतने आप जीत के करीब जाएंगे। वो हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से भी देख चुके हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स उनके पास ज्यादा है। आने वाले टाइम में अगर मैं कोई बदलाव देखना चाहूंगी इस इंडियन टीम में, सो इंक्लूजन ऑफ वन और टू ऑलराउंडर्स वो होने चाहिए, चाहे वो बैटिंग ऑलराउंडर हो, जैसे हार्मन बैटिंग करते हैं साथ में 1-2 ओवर डाल दें। अब हम शेफाली को देख रहे हैं, एक आधा ओवर वो डाल देती है, विच इज अ गुड साइन फॉर इंडियन टीम। सो ये चीजें हैं जो इनको और कॉम्पिटिटिव बनाएगी अच्छी टीम के अगेंस्ट इंडिया। आपको अभी आपने ऑलराउंडर की बात कही, रीमा आप इतना डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखते हो, कवर करते हो, आप खेले भी हो पिछले साल तक, आप मुझे ये बताइए कि अगर वो जो आपके 1-2 ऑलराउंडर है वो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में से ढूंढा जाए तो कौन है वो, कौन से ऐसे हीरे हैं जो अभी तक हमने इंटरनेशनल स्टेज पे देखी? देखिए वो तो जोरी काम करेंगे ना, उसके लिए सिलेक्टर्स रखे हुए हैं। लेकिन मैंने तो थोड़ा बहुत थोड़ी नजर इधर उधर घुमाई है। जो मुझे नजर में आता है सिमरन दिल बहादुर, अगर आप उसको बैक करेंगे लगातार, जैसे उन्होंने आईपीएल में वुमेन्स T20 चैलेंज में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट मैच जिताया था। हेमलता जिन्होंने रेलवेज के लिए बहुत अच्छा इस बार बैटिंग किया, वो बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में आ सकती हैं। सो 1-2 और भी यंगस्टर है जिनके मुझे नाम याद नहीं आ रहे, बट डेफिनेटली 3-4 ऐसे विकल्प हैं जिनको आप तैयार कर सकते हैं। एटलीस्ट आप उनको स्कीम ऑफ थिंग्स में रख सकते हैं। स्कीम ऑफ थिंग्स में रखना चाहिए। एक 25 का अगर कैंप पूल तैयार हो जाए तो वो बढ़िया होगा इंडिया के लिए। अभी हम कैंप पे देखो यश, मुझे लगता है कैंप्स तो लगते रहेंगे, हो सकता है लगे भी, जैसे अभी हाई परफॉर्मेंस कैंप एनसीए में अंडर 19 का भी लगा है। मैं वो ज्यादा देखना चाहती हूँ इंडिया ए टूर्स हो, ऐसे और चाहे वो अंडर 19 के हो, इमर्जिंग कप हो 23 का, या वो इंडिया ए टूर्स हो, क्योंकि जितने आप मैच टेम्परामेंट से जज कर सकते हैं ना, उतना आप कैंप से शायद आप फिटनेस पे वर्क कर सकते हैं, या डेफिनेटली कोई स्पेशल टैलेंट को पिक कर सकते हैं। बट आपको एक मैच प्लेयर तैयार करना है, उसके लिए ए टूर्स होने चाहिए, इमर्जिंग कप्स होने चाहिए, अंडर 19 के नंबर ऑफ सीरीज होनी चाहिए। अब तो जैसे कि डोमेस्टिक में जोनल ऐड हुआ है, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक मैं खेलती कुछ टाइम पहले तक जोनल होते थे, जोन होते थे, डेज होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैटल ऑफ बेस्ट होता था। नॉर्थ के बेस्ट प्लेयर पिक करते थे आप, वेस्ट साउथ ईस्ट, सो उसके बीच का जो बैटल होता था ना, उससे मुझे लगता है कि आप बेटर प्लेयर्स निकाल सकते हो, वो जो प्रेशर अच्छे से हैंडल कर पाए। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, राइट? आपने एकदम सही बोला कि जोनल आ चुके हैं इस बार। अभी हमने रिसेंट में अनाउंसमेंट सुनी थी कि 2020 के पहले हमने काफी 8 ओवर्स किए थे। 2 साल कोविड की वजह से ये सब बंद हो गया था, लेकिन अभी हमने अनाउंसमेंट फिर से सुनी है कि इंडिया 8 ओवर्स शुरू होने वाले हैं। दे आर गोइंग टू ट्रैवल डाउन टू इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया टू प्ले गेम्स। अगेन समथिंग दैट यू आर हाईलाइटिंग इज देयर। एंड चलो एक थोड़ा टॉपिक को डिविएट करके हम अंडर 19 की बात करते हैं, क्योंकि आपने वो टॉपिक लेके आया है। इंडिया ने काफी अच्छी चीज करी कि उन्होंने आफ्टर द डोमेस्टिक सीजन उन्होंने 15-15 प्लेयर के 6 गढ़ बनाए, 6 अलग अलग जगह पर अलग अलग कोचेस के साथ उनकी प्रैक्टिस करवाई। और अब इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स को, अंडर 19 प्लेयर्स को उन्होंने एनसीए में 1 महीने के कैंप के लिए लेके आया है। Are we moving in the right direction? Because we have the first ever under 19 World Cup coming up in January. और इसके लिए और क्या करने की जरूरत है, क्योंकि वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है। मोस्ट ऑफ ये जो अंडर 19 प्लेयर्स है, इन्होंने शायद देश के बाहर गए नहीं है खेलने के लिए। देखिए जितने आप मैचेस खिलाएंगे, जैसे कि आपने कहा कि डिफरेंट जगह कैंप्स लगे, उसमें से आपने पिक किया, बट ऐसा हो सकता है कई टैलेंट हो जो उसमें से पिक ना हुए हों। क्योंकि मेरी नज़र में, जैसे मुझे मान लो फॉर एग्जांपल शाहरुख खान पसंद है, आपको ऋतिक रोशन पसंद होगा, उनको कोई और रणबीर कपूर पसंद होगा। सो माय पॉइंट इज कि वो एक नज़र से आप कब देख सकते हो, जब आप डोमेस्टिक में ज़्यादा से ज़्यादा अंडर 19 के मैचेस खिलाओगे, आपस में उनको एक प्लेयर को इनफ चांसेस दोगे टू परफॉर्म।
क्योंकि मैचेस से ही पता चलेगा ना कि वो मैच डेवलपमेंट उसका कैसा है, क्या वो इंडिया अंडर 19 का मटेरियल है कि नहीं है। अगर उससे पहले आपको टाइम मिलता है तो आइदर बांग्लादेश या श्रीलंका किसी की भी अंडर 19 टीम को बुला के आपको यहाँ पे ABC टीम बना के मैचेस खेलने चाहिए। सिर्फ A टीम नहीं, अंडर 19 टीम नहीं, अंडर 19 भी A, B और C टीम बना के खिलाइए। उसमें से भी अगर आपको लगता है फिर आप पूल ऑफ 20 निकालिए। थोड़ा सा कट टू कट हो जाएगा, एकदम बिजी शेड्यूल हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अंडर 19 में भी इंडिया को जीतना है, टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को कैंप से ना जज करके मैचेस से जज करेंगे तो वो बेटर, मुझे ऐसा लगता है बेटर आउटकम मिलेगा। बेटर आउटकम मिलेगा, जरूर मिलेगा। रीमा बोल रही है कि पहले अंडर 19 का आपने कैंप बनाया, वो सही किया, उसके बाद आप जाके थोड़ा सा मैचेस खिलाइए। क्योंकि लेकिन रीमा, आपको लग रहा है कि बांग्लादेश या श्रीलंका के साथ अगर हम मैचेस खिलवाएंगे तो बेटर है, या हमको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ ही मैचेस खिलाने पड़ेंगे? क्योंकि अगर जीतना है आपको तो आपको टॉप टीम के साथ ही खेलने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम देखें रिसेंट में श्रीलंका और बांग्लादेश की मेन टीम के परफॉर्मेंसेस, वो कहीं भी एकदम पास भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले बोर्ड को डिसाइड करना होगा ना। अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में से कोई भी आता है, गुड इनफ। नहीं आता तो एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम बांग्लादेश, एनी टीम, एटलीस्ट आप स्टार्ट कराइए। इसलिए मैंने कहा ABC टीम बना के आपस में ट्रायंगुलर सीरीज करा दीजिए। इन द मीन टाइम अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं है, अगर उस टाइम पे भी वो आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनका BBL भी होने वाला है, डोमेस्टिक भी होने वाला है, उस टाइम पे क्या वो अपने अंडर 19 टीम को पिक करके भेजना चाहेंगे? अगर वो चाहते हैं, गुड इनफ। इससे बढ़िया इंडिया के लिए कोई बात होगी नहीं। हमें भी बेटर टीम्स मिलेगी खेलने के लिए, बट नहीं मिलती देन एटलीस्ट प्लान B आपके पास होना चाहिए, विच इज बांग्लादेश, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, व्हाटएवर इट इज। और अगर आप जा सकते हैं तो गुड इनफ। यू शुड हैव प्लान B, यू शुड हैव प्लान A। लेकिन एब्सोल्युटली, मैं कैप्टन रह चुकी हूँ तो मेरे को हमेशा से प्लान A, B, C पॉकेट में लेके चलने की आदत है। आपको नोट्स बनाने की भी उतनी आदत है अभी कमेंट्री में कि आई नो दैट यू स्टडी अ लॉट। आप एकदम पढ़ाई कर करके जाते हो। ऐसे नहीं है कि कुछ लोग जाते हैं कि डायरेक्ट जाके हम बात कर लेंगे, आप वैसे नहीं जाते हो। आपके पास पूरी पढ़ाई रहती है। जैसे आज भी हम देख रहे हैं कि 10 मिनट में आपने इतनी चीजें बता दी जितनी शायद लोग 3-3 घंटे के चैट में भी नहीं बताएंगे। देखिए, ये काम होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई में मैं इतनी कभी अच्छी थी नहीं, तो भगवान ने कहा तब नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट अब पढ़ ले। और बहुत जरूरी होता है क्योंकि पूल ऑफ प्लेयर्स, पूल ऑफ टैलेंट इतना बढ़ गया है ना कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपका एक प्लेयर, एक टीम है तो उसमें कौन सा उसका बैकग्राउंड क्या है, या वो किस जगह से आता है, क्या उसका स्ट्रगल है। क्योंकि मेंस क्रिकेट में बहुत लोग एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि मीडिया बहुत टाइम से कवर कर रही है। वुमेन्स क्रिकेट को 2017 के बाद वो रेवोल्यूशन मिला है। सो एज अ व्यूअर, मैं जब देखती हूँ टीवी तो मैं सुनना चाहती हूँ कि क्या स्ट्रगल रहा है, क्या प्लस है, क्या माइनस है। सो मैं चाहती हूँ जब मैं बोलूँ तो लोग समझ पाए, मैं उनसे कनेक्ट कर पाऊँ जो वो सुनना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। हमारा ये पावर प्ले जस्ट खत्म हुआ है। 42 for 1 is what Australia have scored. Sorry, 43 for 1 is what Australia have scored. आपको क्या लग रहा है रीमा? पहले 3 ओवर हमने काफी अच्छे डाले, लेकिन जो नेक्स्ट 3 ओवर है उसमें लैनिंग और मूनी ने शुरू कर दिया है धमाका कि अब तो हम थोड़ा दिखाएंगे आपको। आखिरी के जो 2 बॉल थे रेणुका के, उसी में 10 रन मार चुके वो लोग। देखिए, कोई फेज तो ऐसा आएगा जब ऑस्ट्रेलियन बैटर भी अटैक करेंगे। इंडिया को यहाँ से पैनिक नहीं होना चाहिए कि T20 गेम है, रन्स तो आपको पड़ेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो आप पिछले थोड़ा पहले जाएंगे तो 6 ओवर में वो 70-80 रन के पास पहुंच जाते हैं। सो अभी भी मैं कहूँगी एक अच्छी शुरुआत इंडिया के लिए, क्योंकि आपको एक विकेट मिल चुकी है। 40 के रन एक्सपेक्टेड थे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीम से खेलोगे तो ये एक्सपेक्टेड है, ये लेवल आपका। मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है इंडिया की। मिडिल ओवर में जब वो ओवर अटैक करना चाहेंगे, पहले बैटिंग कर रहे हैं, इंडिया की बैटिंग को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि मैगलैनिंग के दिमाग में कम से कम 170 या 180 के ऊपर का टारगेट होगा। नोइंग द विकेट, आज फर्स्ट गेम हाई स्कोरिंग, लो स्कोरिंग जरूर हुआ है, बट विकेट पे अगर ध्यान दे तो अच्छा खेल रही है। सो 170 ऑस्ट्रेलिया को पार करना ही होगा, और बीच में इतना सम होने वाला नहीं है। एक आधा विकेट और गिर गया तो मुश्किल में आ सकते हैं। मैम, मुझे भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे मेंस क्रिकेट में 83 मोमेंट हैपेंड एंड तब से मेंस क्रिकेट को परसीव बहुत डिफरेंटली करता है नेशन। तो आपको लगता है कि इफ इंडिया विंस दिस कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड, the whole narrative and perception will change around women's cricket in India? एब्सोल्युटली। इससे क्या होता है ना कि हम अच्छा खेलते हैं तो हमें शाबाशी मिलती है। लोग हम नहीं जीते तो हम सीखते हैं, लोग हमें बताते हैं ऐसा करिए वैसा करिए। वुमेन्स क्रिकेट ने अपना एक नाम जरूर बना दिया है। लेकिन अगर आपको और ऊंचाई पे जाना है और कुछ अलग दिखना है, मेंस की तरह दिखना है, जैसे कि आपने कहा 83 वर्ल्ड कप,
तो जीतना होगा, क्योंकि जीत बदलाव लेके अपने साथ आता है। वो चेंजेस तभी आएंगे जब कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतेंगे, चाहे वो आईसीसी ट्रॉफी हो, चाहे वो आज का अगर गोल्ड मेडल भी लेके आता है, तो आप देखिए कितनी चीज़ें बदलती हैं। 2017 में आप फाइनल में पहुंचे, अब आप देखिए कि पेरेंट्स खुद अकेडमी में लड़कियों को लेके आते हैं, पूल बढ़ रहा है, अंडर 16 स्टार्ट हो रहा है, जोन स्टार्ट हो गया, टेस्ट मैच स्टार्ट हो गया, वुमेन्स आईपीएल की अनाउंसमेंट हो चुकी है, टीम 4 इस बार बढ़ चुकी थी। सो पॉजिटिव ही नजर आया। द मोमेंट आप जीतेंगे, कोई ट्रॉफी जीतेंगे, आप जीतते हैं, आपके पास टैलेंट है, लेकिन जब टैलेंट परफॉर्मेंस में चेंज होता है और ट्रॉफीज लेके आते हो, तो वो फिर आप बिल्कुल मेंस क्रिकेट के आसपास आप चलना शुरू कर दोगे। हम बिल्कुल उनके साथ हैं, लेकिन अगर और दिखना है और चमकना है, कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, तो ट्रॉफी दिखेगी ना तो वुमेन्स क्रिकेट और निखरेगा। वुमेन्स क्रिकेट और निखरेगा डेफिनेटली। और जैसी वुमेन्स आईपीएल शुरू होगा, Absolutely. वो एक चीज है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। बहुत टाइम से सी मेरे हिसाब से 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, बट बीसीसीआई की सोच अलग है, वो प्लानिंग से चलते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन करने में समय लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। और वो चाहते हैं कि कोई चीज़ चलाएं तो वो फेल नहीं होनी चाहिए, इतना पूल आपके पास होना चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल है, क्योंकि मैं तो 6 नहीं, मैं तो 8 टीम कहूँगी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आप इंटरनेशनल प्लेयर डालेंगे, आप उसमें अंडर 19 के प्लेयर्स डालेंगे, आप उसमें सीनियर डालेंगे, उसमें कोई एज बार भी नहीं होता, तो रिटायर्ड प्लेयर भी खेल सकते हैं अगर वो फिट है। सो आपके पास डेफिनेटली पूल ऑफ प्लेयर होगा। और मैं चाहती हूँ कि यंगस्टर के साथ एक्सपीरियंस का वो मिक्सचर जरूर होना चाहिए। मिताली राज ने बोला कि वो चाहेंगी खेलना, उनको खेलना चाहिए, और भी रिटायर्ड प्लेयर को आना चाहिए जो खेलें, तो वो आईपीएल का पूल भी बढ़ाएगा, कंपटीशन भी बढ़ाएगा, और यंगस्टर के लिए चैलेंज भी होगा कि एक्सपीरियंस काउंट करता है। यंगस्टर के लिए चैलेंज। थैंक यू रीमा फॉर ज्वाइनिंग अस। अ लॉट ऑफ टॉपिक्स डिस्कस्ड। हमने अंडर 19 के बारे में बात की, ये टीम के बारे में बात की, डोमेस्टिक के बारे में बात की, हमने आईपीएल के बारे में भी बात कर ली। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। होपफुली इंडिया गोल्ड लेके आए, फिंगर क्रॉस्ड। आपके लिए आज का सबसे टॉप प्लेयर कौन रहेगा इंडिया के लिए? हरमन। समाओ हरमन का और ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशन है ना, वो बाउंडिंग ना मुझे बड़ी पसंद आती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं अपने दिमाग में लेके करता है कि हरमन एक दिन, जिस दिन हरमन चलेगी ना, उस दिन इंडिया दौड़ेगी और जीतेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली एक स्टार्ट अच्छी होनी चाहिए, और एक प्लेयर पे मैं फिर भी दाव नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आप एक प्लेयर से मैच नहीं जीत सकते, मैजिकल इनिंग देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज हरमन को, क्योंकि हम चेस कर रहे हैं, हरमन को एक कैप्टन नॉक खेलने पड़ेगा। अभी मेरे साथ जस्ट मोना थी, उन्होंने भी हरमन बोला, आप भी हरमन बोल रहे हो, और अभी मेरे साथ नुपुर ज्वाइन कर रही है। आई एम श्योर शी इज रूटिंग फॉर हरमन, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट एवरीथिंग। We just don't Big boss. we are not stopping at only one place. We have former cricketers, we have commercial managers, we have fans, we have everyone today. नुपुर 2 वोट मिल चुकी है हरमन को, अभी घर से हरमन को वोट नहीं आने चाहिए, इससे सेपरेट प्लेयर लेना। आप लोग हो ना, तो आई थिंक आई डोंट वांट टू बी बायस्ड। पूरा इंडिया है नुपुर, हम लोग ये पूरा इंडिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हरमन I think she survives because the team is backing her. So which is why she has to lead from the front, and that is her job. And I think today she's going to, sort of do what she hasn't done, and she has to take back home what she wants to. So which is very कल उसने important. पोस्ट मैच में कहा भी था नुपुर कि वो एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि वो चाहती है कि वो एग्रेशन लेके आएगी, चढ़ के खेलेगी, तो टीम भी उनके साथ एग्रेसिव होगी, चढ़ के खेलेगी। और ये मन का शुरू से सोच है, और बहुत अच्छी है, क्योंकि ये वो कैप्टन है जो बोल के बताना नहीं चाहती, करके बताना चाहती है कि क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, you guys please carry on. I have to go for a commentary. All the best. See you. Thank you. India hopefully gold. Bye. We'll discuss after we get the gold medal. Yeah. मिलते हैं गोल्ड मिलने के बाद। Bye. बिल्कुल। Cheers. Bye. Hi Yash, thank you for having me here. Welcome to the show. For people who don't know, Nupur manages Harman, family friend, family. She takes care of all the endorsements. She takes care of all the interviews, everything. And a very good friend of mine as well. Nupur, welcome. You actually happened to get me before the camera. It's only you who could do that. Yeah, I don't think so. You have ever come in front of camera, right? No. This is the first time Nupur is on camera. And it's for the all important match. मेरे हिसाब से इससे बड़ा मैच मैंने तो नहीं देखा in terms of cricketing history. देखो T20 I think 2020 World Cup, I was right there, the finals, and it was being a spectator and being there amongst
that entire emotion I felt after they being defeated. So I think that what touched me, and today is, I think it's time to sort of get back at them and do something which makes a name. And yeah, I mean that emotion is there, it's still there. But Nupur, let's Yeah. talk about the T20 World Cup. That time they Yeah. were playing for a board, or they were playing like you have that BCCI logo, and that it's a different phase. It's a different thing. Today, when you see, it is whatever Team India. Like you have the hockey team, you have the athletics, you have Yeah. everyone in the village, and you are actually playing for your country. How different that feelings are. See, I'll tell you a very small story because, obviously I'm very closely connected with Harman and a lot of other players, Harleen and everybody. So, this time when they were going for the tournament and they were just supposed to get their helmets. So usually it's the BCCI logo that comes, right? So that India flag, when they received, I mean, for Harman, I can say she was speechless for some time, and she literally felt that yeah, this is representing your country, and obviously being in that multi-format sport, it's a huge thing. It's remarkable. I mean, they feel that now is the time to actually do justice and play for the country, and मतलब वो बहुत amazing है. And I'm sure other players around them are motivating them. Every day there's medals coming in, and every sports person doing something in their own field. So I think that is very motivating, and I think we can see it. मतलब their performances and everything वो सब बहुत ज़्यादा मतलब I think बहुत enhance हुआ है. They play like a very very bold team now. So it's beautiful. I think वो बहुत अच्छी feeling है. It's very beautiful. Like there is a different Yeah. level of feeling, because we see they've played a lot of world tournaments. Harman herself has played a lot of world tournaments, but we see that there is a difference between how you play an ICC tournament and how you play for Team India. It's like two very different things. You play for the national anthem. That's very clearly visible. मेरे को बताओ, मैंने हरमन पिछले शायद 3 T20 वर्ल्ड कप कैप्टनसी करते हुए देखा है. Now she's captaining at the Commonwealth Games. Have you seen difference between her then and the difference between her now? See, ICC tournaments में see number one वो एक they're just going there and वो एक ही स्पॉट के लिए है. यहाँ पे जब रोज मेडल आ रहा होता है ना, तो उनको रोज एक रात को इट्स लाइक एन अलार्मिंग क्लॉक. यार मेडल लाना है, मेडल लाना है. ट्रॉफी के लिए नहीं जा रहे. ये नहीं है 10 दिन 15 दिन खेला और ट्रॉफी लानी है. नहीं, हमें मेडल के लिए जा रहे हैं. तो वो एक बहुत डिफरेंट फीलिंग है. एवरीबडी अराउंड देम वो एक मतलब एक सर्किट क्रिएट हुआ है उनके आसपास में, जो एक बहुत अच्छी एनर्जी फ्लोट हो रही है. तो इसीलिए आई थिंक जब भी मेरी बात हुई है, व्हाट व्हेनेवर आई हैव स्पोकन टू देम, दे लाइक नहीं मेडल लाना है. तो वो मेडल वाली एक उनकी एक डिफरेंट फीलिंग है. तो इसीलिए आई एम श्योर व्हाट दे आर फीलिंग इज व्हाट वी कैन नॉट फील. वो एक बार जीतने के बाद ही वो एक्सप्रेस कर पाएंगे. वी नीड टू वेट फॉर दैट. मेरे हिसाब से वेट से ज्यादा आई विल नीड टू बुक नाउ. आई थिंक वी नीड टू बुक अपॉइंटमेंट्स कि एक बार गोल्ड मेडल आ जाएगा तो एक हमको भी फोटो निकालने दो गोल्ड मेडल के साथ. वो एक बड़ी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी सारे प्लेयर्स के साथ. नहीं, आई थिंक दे आर सो हम्बल. वो सिर्फ इसलिए इतना कर रहे हैं बिकॉज दे रियली वांट टू रीच दैट प्लेटफॉर्म कि उनको पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में, और आई एम श्योर अब तो अदर स्पोर्ट्स personalities would also know them as much as other cricketers, and people from the cricket fraternity recognize them. तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक achievement होगा. You just told me a very simple word which is humble, humility. अगर हम let's talk about this, क्योंकि देखो मैंने काफी लोगों से बातचीत की है, but the way this women cricketers or athletes from other sports, how humble and humility जो उनके पास है, वो शायद हमको बाकी इसमें नहीं दिखता है, because maybe the other sports have grown to a level that people have that I don't know what should I call it. It's either attitude or they just feel that they are mobbed everywhere. But still, whenever I see this women players or I have interacted with them, that humbleness is very much there. Like I think so. I messaged most of the cricketers today morning, wishing them all the best, and even responded.
You know, I think it is their story that has got them to a level जहाँ उनको humble होना पड़ा है. You know, they've dealt with a society and they've crossed those crossroads for sure to come till here. And if now also they are not humble and they don't respond to people, I mean, who are actually applauding to their achievements, तो फिर उनका वहां तक पहुंचने का भी कोई फायदा नहीं है ना. So I Absolutely. think the main reason behind this is this कि उनको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगी है and they like to be recognized. That's why they're humble. So They like yeah. to be recognized, and that's why they are humble. And that's, I think, so the Yeah. beauty of the sport, that when Yeah. you want what you want from your Hmm. players is they stay connected with you. They Yeah. share what is going on. Whenever people ask them for a selfie or whatever, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, that's what makes the sport more beautiful. I'll talk That's to you. I'll talk to you a little about the brand value as well. 2017, उसके पहले हमने सबने देखा है कि women's cricket did not have a great brand value. Let's be very honest there. But since the 2017 World Cup to 2022, see, you manage commercials of a lot of players, you work with their agent, you work with the state board, you understand all of this. Tell me, how much have these player brand values grown? The women's cricket brand value has grown in the last 5 years. See, a very small term, as we say, कि है ना, जो दिखता है वो बिकता है, right? अब अगर रीमा मार्केट में सिंह- मेरे को जाके धंधा करना है, right? तो उसके लिए मेरे को दिखाना पड़ेगा. और आई थिंक 2017 के बाद में जो एक ट्रांजिशन फेज आया है विमेन्स क्रिकेट में, इज वाई विमेन्स क्रिकेट का भी ब्रांड वैल्यू बढ़ा है, एंड ऑब्वियसली इंडिविजुअली सबका ब्रांड वैल्यू बढ़ा है. एंड ऑब्वियसली, आई मीन, यू अचीव समथिंग एंड दैट्स व्हेन यू गेट something back in return. तो वही हुआ. उससे पहले not too many matches were played, इतना क्रिकेट टेलीवाइज नहीं होता था, there was hardly any PR around it, so which is why बहुत ज्यादा loopholes थे. And I think it's their hard work कि उन्होंने वो उस पीरियड के बाद वो सब मेंटेन भी रखा है. It's not that they've not. ठीक है, वो कंसिस्टेंट रहे हैं पिछले कुछ सालों में. आई एम श्योर वी आर गोइंग टू हैव मच मोर championships coming around, and they'll be winning also. एक बारी streak start हो जाती है, I think it's very tough to break it. I mean, we can see it. Australia they know it, who they are playing against, and उनको पता है कि this is the only team who can probably take them down. So yeah, probably the only team who can beat them. They've already played Yeah. England a lot, and they always beat England. Yeah. And I think बहुत हो गया है, थोड़ी मोनोपोली टूटनी चाहिए. टुडे न्यूजीलैंड विनिंग वाज अमेजिंग, है ना, कि चलो अब देयर इज लाइक एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी इक्वल्स हियर. So yeah. Everyone is going to be equals if India win this gold medal against this mighty Aussies, what we call it. Is it going? I asked Harman the same question when we interviewed her. कि 2017 में जो मैंने शुरू किया था, जो आपने शुरू किया था, या 2017 वो 171 मारा, उसके बाद अपने देश में क्या हुआ वो तो नहीं पता मेरे को. मतलब बहुत सारी लड़की आई, उसके वजह से सबने खेलना शुरू किया, ब्रांड वैल्यू ग्रो हुई, ये तो सब है. बट एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया वेंट एंड दे बिकेम अ वेरी डेंजरस साइड. और इतना डेंजरस कि उस टाइम से अभी तक दे हैव ओनली लॉस्ट 2 ODIs. नाउ फाइनली, now it is Harmanpreet Kaur's India who actually have a chance to break that, I don't know, pride, क्या exactly है वो ऑस्ट्रेलिया का. लेकिन वो अब फाइनली हरमन के पास ही वो मौका है कि हाँ, अब मैं ही इनको रोक सकती हूँ. See, as you said है ना कि 2017 के बाद में I think it was a learning for them. उन्होंने वो learning process नहीं छोड़ा. And उस दौरान India has also lost couple of big matches against Australia. तो उन्होंने भी वो process में उतना ही सीखा है. So I think this is today who's learned more. तो आज वो उसी का ही रिजल्ट आएगा, किसकी लर्निंग बेटर थी थ्रू आउट दिस प्रोसेस. सो मुझे ये लगता है. आप मेरे को बताओ. चलो मैं हरमन, अभी रीमा ने बोल दिया क्लियरली कि आप हरमन का नाम नहीं ले सकते हो, तो आप मेरे को बताओ आप प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन है, कौन आपको लग रहा है कि भारत को आज मैच कौन जिताएगा. ऑलरेडी इंडिया इज इन अ डीप ट्रबल, आई कैन से. दे आर 83 for 1 in 10 overs.
Lanning and Mooney are set. Mooney is on 34 of 22 and Lanning is 36 of 26. See, honestly, I really want to watch Shefali and Pooja. मतलब ऊपर भी और नीचे भी मेरे दो इस आज के दिन के फेवरेट्स हैं जिनसे आई एम रियली होपिंग something big and they can do it for their team. So yeah. They can do it for their team. You want Shefali and Pooja. Shefali loves Australia. मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को जितना हरमन प्यार करती है उतना ही शेफाली प्यार करती है कि हाँ मुझे अगर मारना है तो मैं ऑस्ट्रेलिया को मारूंगी. मैं give me the right set of balls and I will hit them. But it is 83-1. Any message that you want to give to the Indian team, you want to give to the fans? We are waiting to welcome them and in a great way, and I think जब वो यहाँ से बाहर निकले, they need to see the magic around them, and I'm waiting for that magic. मुझे काम करना है. So that's it. आपको काम करना है कि यार जल्दी गोल्ड मेडल लेके आओ और ब्रांड एंडोर्समेंट्स होने चाहिए. जितने ज्यादा प्लेयर्स के लिए होता है बहुत ही बढ़िया बात है. We have a women's IPL. I just want to quickly ask you that. Next year, when the women's IPL comes up, you talk to a lot of brands, you manage players. Tell me, what do you feel? From 2017 to now, we've seen enormous value growth because it was 0 and 0 से grow हुआ तो हम percentage में count ही नहीं कर सकते. But from now to the women's IPL, what do you feel the X grow होगी इनकी brand? See, men's cricket ना is a red ocean. तो अब सबको इधर आना है. Everybody will want to, grow in the women's, and not just women's cricket, but women in sports entirely. Because सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, and I think they need to feel empowered. और उनके लिए अब brands will have to come here and they need to understand कि entertainment and sports should go, hand in hand. सिर्फ entertainment से endorsements नहीं हो सकता है. There are a lot of things with a lot of capacity these women can also sell. So that's from a brand's point of view I would want to share. That's what from a brand point of view. And as we were talking about the brands, is the second wicket that has fallen. Mooney is run out. Radha Yadav takes the second wicket, 36. She's gone for 36 of 26. That was a brilliant wicket. क्योंकि वो बॉल कर रही थी Lanning को. Okay. Sorry, Lanning is out 36 of 26. It's not Mooney. So that's the change. She was bowling at the other end. Ball आया, touch लगा और दूसरे side पर wicket गिर चुकी है. That's a big wicket. Australian captain is gone. So we were talking about the brand value. The Pur says everyone was on the men's cricket and it's that ocean is full. So now everyone wants to come to the women's cricket side. Once the women's IPL starts, once a lot of state leagues start, that is where the growth is actually going to happen, and this gold medal is going to start everything that is going to be there. Nupur, any final closing words you have before you leave? बस अब मुझे मैच देखना है and I really want to connect with you again and say कि बस हो गया है. We are there. Done. So yeah, till good then, luck to you guys also. Thank you for joining us. Thank you so much. Thanks a lot. Once this is all done. Absolutely. Thank you so much. Thank you. Bye. So Australia are 2 wickets down. I need to update the score ticker. But yeah, the first wicket fallen very early into the innings. Healy went. The second wicket, Lanning goes, but it is Mac Mooney on the crease. ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिया they have been a thorn to India. What is going to next happen? I really don't know. But we have a little special thing that's going to come up for you guys. I will take a little bit of a break because we have an interview with Talia Magra that is going to play for the next 8.5 minutes. Talia Magra is on the crease. Of course, as an Indian fan, I would want कि ये इंटरव्यू खत्म होने के पहले तालिया मगरा वापस डगआउट चले जाए. वो होता है या नहीं होता है मुझे नहीं पता, बट 8.5 मिनट कल्याणी मांगले स्पीक्स टू तालिया मगरा. First
First of all, massive congratulations on the World Cup win. Tell me, how were the celebrations like post April 3rd? Thank you. Yeah, it was a pretty special night. Some really good celebrations, and it was awesome. My favourite bit was just sitting on the pitch with the team that night after the game, just enjoying each other's company, reflecting on the game, and just celebrating the success. So yeah, the celebrations lasted a while, a couple of nights, and then it was really nice to have some time back off when we got home to Australia. You've been part of the system since 2016, and even before that, you debuted in 2016. There was a gap between, and you improved your game a lot in that time. So how do you think that gap kind of helped you to become a player you are right now, and what you have achieved in that period? Yeah, I think I was really lucky that I got to debut when I did in 2016. And while it was only sort of the one game and then I was out for a while, it sort of gave me that hunger that's the level of cricket I wanted to be playing at. And that was driving my every training I went to, just getting the most out of myself, never settling for, just always trying to improve really. So that certainly improved my work ethic. It made me improve my strength, my fitness, be more specific around my training, and certainly work out what works for me personally as a cricketer. And I certainly had to wait my time. It took me, I think I played 5 games in the space of about 5 years, and I had to wait my time. But that's the way it is when the team was having so much success. And then I just had to make sure that when I got that opportunity, and I really, really took it. And from there, it's just gone from strength to strength, and I'm loving being a part of the Aussie team and loving being able to contribute to some of their success. Also, during that time, you were a massive part of both Scorpions and Adelaide Tigers. How do you think that stint in WBBL and WNCL has helped you to achieve what you have achieved since coming back to the team? Yeah, that's been massive. And in saying that, yeah, while I was, especially at the World Cup, while I didn't have a lot of international experience, I had so much experience in playing 100 Big Bash games. I've been playing for the Scorpions for 10 years, so I still count myself as an extremely experienced cricketer. And the standard we have here in Australia, we're extremely lucky that while I wasn't playing international cricket, I was still chipping away at my game and doing everything I could to help both the Strikers and the Scorpions win games of cricket. So that definitely helped me, that when I got to put the yellow shirt back on and play for Australia, that I knew I'd done the work. I knew I'd been playing some really good quality cricket, that I could just trust the work I'd done and yeah, go from there. Yeah. Also, speaking about that experience, many people on Twitter and otherwise in media do comparison between you and Elise Perry and saying that Australia has found their all-conquering all-rounder already. Like, what do you make of that comparison you have with Elise as a grade of the game? Oh, it's a pretty cool comparison. I'm not going to lie about that, but there's only one Elise Perry, and there'll only ever be one Elise Perry. So she's been my idol growing up. I'm loving playing alongside her. I'm loving learning from her. And I think the special thing about Australian cricket is we've got so many talented all-rounders with, yeah, Annabelle Sutherland, Nick Carey, and then even some of our spinning all-rounders. So we're really lucky with the stocks we've got. And Pez is leading the charge there, and we're all sort of learning as much as we can and helping each other out. So, yeah, I don't really read into those comparisons too much because she's the greatest of all time. Also, she'll complete 15 years in international cricket. That's a lot of time in 22nd July, end of this month. What do you remember? Is there one memory that Elise Perry has told you something, or there's one memory you learned from her that just stuck with you in these years? The most special one for me was when we got to bat together in my Test debut when she made her 200. That was very special. I was a nervous wreck in the middle and she calmed me down. And I think I was out there when she passed 150. So to have such a good partnership with her was really special. And there's no one moment that really stands out, but she's just always helping me out with my bowling, with my batting. The amount of times I've been in the middle and over and she's on the drive helping me out with a few things. Yeah, she always goes out of her way to help others and pass on her knowledge and experience. So yeah, my Test debut where I got to bat with her is probably the one that I reflect on the most.
Also, you have played with Shelly, if I'm not wrong, at the Strikers a bit and Scorpions a bit, and now you also have the GOAT Coleman as one of your coaches. How good is that to have the coaches that you have players and coaches you have played with and coached under to have this job at the Australian level? Yeah, it's pretty crazy to reflect on. I debuted for the Scorpions as a 16-year-old kid, and Shelley was playing in that team in her last year. And yeah, WBB 01, she was part of one of my strikers teammates, one of the absolute greats of the game that not only I, but most people have looked up to. And sort of, now to have her as a head coach is so exciting. And Shelley's really good. She's got that balance of you can have the banter with her, but you can also have the really serious cricket chat. So I love that about her. And even just we've had 2 camps with her as head coach, and really loving what she's bringing to the squad, and loving the chats we're having individually and as a group as well. So excited for what the team's got in store playing under her. So now going towards the Commonwealth Games. First of all, how excited you are personally that cricket is part of the Commonwealth Games? Yeah, I can't wait. The whole experience is something that's at the moment it's a bit unknown of what it's going to be like, but I just can't wait to experience the whole thing. And I suppose the most exciting thing for me is I'm not just part of Cricket Australia, but part of Team Australia in general. So sort of technically teammates with a whole heap of swimmers, athletics, beach volleyball. So I can't wait for the whole experience and to see what it's got to offer. It's going to be pretty special. Also, I know this is a pretty biased question, but who do you think is going to be that one player from Australia everyone should watch out for? You've seen them in the camps recently, you've seen them in the World Cup. Who's that one player we all should look out for? That's a really good question. I want to say everyone. We're looking pretty good. The last couple of camps, everyone's looking pretty good. If I had to pick one, I'm going to go Beth Mooney. T20 specialist. She's just a freak, really. I don't really know what else to say. She gets us off to an absolute flyer every game, takes some ripper catches in the field. She just backs it up game after game, super consistent. I don't really know what else to say, but yeah, I'm glad she's on my team because I hate bowling against her in Big Bash and WNCL. So Beth Mooney for me. I just want you to give me the list of teams you think are going to get gold medal, silver medal, and bronze medal in Commonwealth Games. Oh, that's a tough one. Well, gold's easy, Australia. Bit biased, but Australia. T20 cricket, anything can happen, but India will certainly be up there. So I'll go them silver, and I'm going to go South Africa bronze. That's my predictions. We're live again, and जैसा मैंने बोला था कि a little biased, लेकिन I wanted कि बाबा जब तक ये तालिया मगरा का इंटरव्यू चल रहा है तालिया मगरा की आउट हो जाए, और वो सच में आउट हो गई. And now I am again joined by Mohit. Okay. Hi Mohit. मैंने जस्ट व्यूअर्स को यही बोला था कि जाने के पहले तालिया मगरा का इंटरव्यू चल रहा है, शायद आने के बाद वो आउट हो जाए. और मगरा का इंटरव्यू 2 मिनट हुआ था, तभी उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हाँ यश जो बोल रहा है वो हो जाना चाहिए अभी. लेकिन जो एक मूनी फैक्टर है वो अड़ के बैठा इंडिया के लिए, और गार्डनर भी आ चुकी है, हैरिस आने वाली है. अब आपको क्या लग रहा है कि कैसे चल रहा है इंडिया का, क्या होगा नेक्स्ट? मुझे लगता है कि तालिया मगरा कोविड से अफेक्टेड है आज, फिर भी उन्होंने आके बल्लेबाजी की है, तो आसान नहीं होता है. तो हमको उनकी तारीफ करनी चाहिए कि ऐसे स्टेट में भी उन्होंने आके अपना बेस्ट दिया है अपनी टीम को. Yeah, she has COVID, but because like players who test positive are allowed to take part at the Commonwealth Games after due protocols, she has been allowed. Like that is why she's sitting separately to the rest of the team and has a mask on throughout when she's not playing. So I think firstly we need to like praise Talia Magra for still like choosing 100%. To play and giving her best, like even while going through something so difficult personally. But I think and she has also been the best player
फॉर ऑस्ट्रेलिया इन दिस टूर्नामेंट सो फार विद द बैट। तो बहुत बड़ा विकेट ये एक मिला है इंडिया के लिए। जैसे आप बोल रहे हो, बेथ मूनी काफी खतरनाक फॉर्म में लग रही है, अभी अपने अर्धशतक के काफी करीब पहुंच गई है। पर मुझे लगता है कि अभी स्नेह राणा के और 2 ओवर बचे हैं, तो वो काफी क्रूशल रहेंगे। तो लास्ट मैच में भी यही स्टेज के आसपास दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा ने कमबैक करवाया था इंडिया का। तो अभी यहाँ पे विकेट्स लेते रहना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास काफी बैटिंग है। जेस जॉनसन, अलाना किंग भी बाउंड्रीज लगा सकती है। इस टूर्नामेंट में भी अलाना किंग ने अच्छी बैटिंग की थी एक मैच में। तो विकेट्स लेते रहना पड़ेगा यहाँ पर इंडिया को। और मुझे लगता है 160 के अंडर अगर इंडिया रोक पाती है ऑस्ट्रेलिया को तो दे विल बी कंफर्टेबल। अगर जितना ऑस्ट्रेलिया उसके ऊपर जाती है उतना मामला इंडिया के हाथ से निकलता जाएगा। कितना बोल रहे हो आप? कितना बोले? वापस बोलना एक बार। मैं बोल रहा हूँ 160 के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया को कंट्रोल कर पाते हैं तो दैट विल बी बेस्ट फॉर इंडिया। उसके जितना ऊपर ऑस्ट्रेलिया जाती है उतना मुझे लगता है उनका प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाएगा जीतने का। प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाएगा अगर ऑस्ट्रेलिया 160 के ऊपर मार देता है। 13 ओवर हुए हैं, 109 रन, भूमि जस्ट 47 मार चुकी है। जितना आप बोल रहे हो उतना तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया उतना तो बना ही लेगा, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया उतना नहीं बनाता है तो ये ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। देखिए अभी फिर से दीप्ति शर्मा आ गई है बॉलिंग में। आज थोड़ी सी महंगी साबित हुई है अभी तक 2 ओवरों में, पर मुझे लगता है लास्ट मैच का कॉन्फिडेंस होगा उनके अंदर काफी। और इन द पास डेथ बॉलिंग कई बार अच्छी की है उन्होंने इंडिया के लिए। डेथ बॉलिंग काफी अच्छी की है दीप्ति शर्मा ने, लेकिन आज तो वो तीसरा ओवर उनका 14वीं ओवर में ही डाल रही है। मतलब उनके पास एक ही ओवर बचेगा 6 ओवर में, और वो काफी पिट चुकी है। आपके हिसाब से इंडिया ने आज कहाँ पे गलत किया है? क्योंकि आप मैच देख रहे थे, हम तो यहाँ पर बहुत बातें कर रहे थे, लेकिन अगर हम देखें तो आज हमने काफी बॉलर यूज किए हैं। हरमन पिटी, पूजा वस्त्रकर पिटी, स्नेहा राणा 2 ओवर में 18 रन दे चुकी है। राधा यादव जो जनरली महंगी जाती है वो आज 2 ओवर में 7। तो काफी उल्टा चला है भारत के लिए, एक्सेप्ट वो जो 2 पेस बॉलर्स है रेणुका और मेघना। बाकी सबका जो जिस हिसाब से जनरली राधा पिटती है और बाकी सब कम पिटते हैं, आज उल्टा हुआ है काफी। नहीं देखिए, राधा यादव काफी अच्छी गेंदबाज है। ऑफ लेट कभी कभी उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है, पर एक 2 साल का पीरियड था वो 2020 T20 वर्ल्ड कप के आसपास, जब राधा यादव कंसिस्टेंटली इंडिया की बेस्ट बॉलर थी इस फॉर्मेट में। और आज भी अगर हम देखें 2 गेम चेंजिंग मोमेंट्स ऑलरेडी वो दे चुकी है। मैग लैनिंग को रन आउट कर दिया है फॉलो थ्रू पे, और बहुत ही एक शानदार कैच भी लिया उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट पे तालिया मगरा को आउट करने के लिए, जो कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी बोल सकते हैं हम। और 2 ओवर बचे अभी राधा यादव के। तो आज मुझे लगता है कि, और हमने कई बार देखा है विमेन्स T20 चैलेंज में कि अगर टूर्नामेंट फाइनल है तो राधा यादव काफी विकेट्स लेती है या विनिंग रन्स बनाती है और प्लेयर ऑफ द मैच हो जाती है। तो अभी तक राधा यादव का दिन है। एक कैच ले चुकी है, एक रन आउट ले चुकी है। अब बचे हुए 2 ओवर में अगर वो 1 या 2 विकेट भी ले ले या और ज्यादा विकेट्स ले ले तो मुझे लगता है कि फिर से राधा यादव विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर प्लेयर ऑफ द मैच इन अ मेजर फाइनल। Player of the match in a major final, you put it very right that she's done it, I think so, in 2 women's T20 challenge things. She didn't get the player of the match in one. Jemima Rodriguez got the player of the match in that. But she scored the winning runs. But she scored the winning run. She took, I think so, 2 or 3 wickets, if I'm not wrong. I don't remember exactly. So she is your big match player. She's done that a lot of times. And absolutely. So if I have to stand corrected, my meaning of that was, okay, there is another 6. Gardner is in her own berserk form, 22 of 11. राधा यादव की हम बात कर रहे थे। राधा यादव आई, पहला बॉल डाली और गार्डनर ने सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का मार दिया है, और काफी लंबा छक्का है, सीधा क्राउड में जा चुका है। 120 रन पे आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया। Is this the game changing partnership that we can say? Because see, Mooney is not going to hit you a lot, like not going to hit sixes a lot. She's your more of conservative player, but at the same time you have a Gardner who's going to basically go berserk, and which she is doing.
बिल्कुल बिल्कुल गेम चेंजिंग पार्टनरशिप है एंड फॉर द शेयर रीजन जो आपने जस्ट बताया कि एट द रेट एट विच एशली गार्डनर स्कोर्स, अगर वो कुछ भी अमाउंट ऑफ रन स्कोर करती है, भले ही वो 20-30 रन ही क्यों ना, वो काफी गेम चेंजिंग होते हैं, क्योंकि 10-15 गेंदों में 20 या 30 रन अगर आप बना दो T20 में, तो वो ओडीआई में 50 या 60 रन बनाने से कम नहीं है। और यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि इंडिया ने काफी एक कंट्रोल में रखा था पहले ऑस्ट्रेलिया को, 8 के ऊपर कभी गया नहीं था उनका रन रेट, 8 के आसपास ही था। तो उसमें अगर आप 1-2 विकेट कभी भी ले लेते हो तब आप पीछे खींच सकते हो, जैसे इंग्लैंड के साथ किया था उन्होंने। बट जब से एशली गार्डनर आ गई है, उन्होंने रन रेट को 8 के ऊपर भी ढकेल दिया है। इट्स ऑलमोस्ट 8.5, इट्स 8.44। बट मुझे लगता है कि अगर शेफाली वर्मा या स्मृति मानधना ये देख रहे हैं तो दे विल बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये पिच बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आप देखो ज्यादा टर्न नहीं मिल रहा है, जैसे पहली गेंद जो थी राधा यादव की, कुछ गलत नहीं था गेंद में, पर फिर भी काफी कॉन्फिडेंटली एशली गार्डनर ने कदमों का इस्तेमाल करके 6 रन के लिए खेल लिया और काफी लंबा छक्का था। तो मुझे लगता है कि ऐसे इंडिया चाहती कि ऑस्ट्रेलिया 160 से कम बनाए, बट लुकिंग एट द पिच यहाँ पे 170 175 तक का टारगेट भी चेस डाउन हो सकता है, अगर वन ऑफ द इंडियन ओपनर्स मैनेज टू बैट फॉर 10-15 overs. One of the Indian openers manages to bat for 10-15 overs. And I've already received predictions. So Mona was with me. She told Harman and Shefali are going to be the players. Reema told me Harman is the player to watch out for. Nupur says made Shefali and Pooja Vastrikar that she's backing today to win, because I put her in the spot that no Harman anymore because everyone is talking about Harman. So I want you give me some other name, and she gave me Shefali. I think so. How important Shefali is to the team. We have a few comments that are coming. So David from Nepal says, I'm an Indian cricket fan, but I think Australia will win the match today. There are people who are backing India. Manjeet Rana says India. Of course, a lot of people are excited for other sports as well. We just won a bronze in hockey. There is a fan who says I'm more excited for hockey though. Of course, Indian men's hockey team is going to play for that gold. So there are enough competitions in the Commonwealth Games for people to just choose their sport, or to choose all sports and then decide what it's going to be. There is a wicket. Sneha Rana takes the wicket of Ashley Gardner. She departs for 25. Bhangra is in the house. There are people who are doing Bhangra. So I think so. This is the beauty. Like, see, you don't see this in ICC tournaments. This is it's a ball. Tanya Bhatia, the wicket keeper, stumps, and Ashley Gardner. The biggest mistake Ashley Gardner did was when you have Tanya Bhatia behind the stumps, you cannot just go in front of stump. You cannot just cross that crease line, because it's either a 6 or a wicket. Do you feel that is what Lanning and Nitsky have told them, that Gardner, you need to do this because we have 5 overs left. We have enough batting in the tank. Your job is to go berserk there, and Mooney will take control of that innings. बिल्कुल यही बताया होगा। और एशली गार्डनर जैसी खिलाड़ी है, उनको आप कुछ भी बताओ वो इसी अंदाज में खेलती है, और T20 फॉर्मेट में खेलना भी आपको इसी अंदाज में चाहिए, क्योंकि काफी लंबा बैटिंग लाइनअप है और ज्यादा गेंदें अब बची नहीं है। तो जहां पे भी मौका मिले, और जैसा गार्डनर का स्टाइल है, शी लाइक्स टू हिट द बिग शॉट अर्ली इन द ओवर। लास्ट ओवर में भी हमने देखा पहले बॉल पे ही 6 लगाया राधा यादव को। तो यहाँ पे सेम कोशिश थी, पर अगर आप ये बॉल देखें तो ये गेंद यहाँ पे पिच होके सीधी निकल गई है, जबकि ऑफ स्पिन के लिए खेल रही थी एशली गार्डनर। तो हमको तारीफ करनी होगी स्नेह राणा की, क्योंकि ये जो एक वेरिएशन है स्नेह राणा का, ये बहुत ही बेहतरीन है कि हर बॉल उनकी ऑफ ब्रेक नहीं होती है। कुछ कुछ बॉल वो सीधी निकाल देती है या थोड़ा सा बाहर की तरफ भी निकाल देती है। और ये बॉल अगर हम देखें बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, टर्न नहीं हुई, और एशली गार्डनर वाज प्लेइंग फॉर द टर्न। तो आई थिंक लाइक यहाँ पे तारीफ हमको स्नेह राणा की करनी चाहिए, क्योंकि आइडिया ठीक था एशली गार्डनर का, बट जिस द बॉल वाज टू गुड। एंड तान्या भाटिया वी नो डजंट मिस मच behind the stumps at all. We've discussed enough of Tanya. I have with me Ridhima Pathak who joins in. Hello guys. Ridhima, Hello everybody. Hi, what's up? Sorry वो थोड़ा हम इंडिया वेस्ट इंडीज के ब्रॉडकास्ट में बिजी हो गए। इंडिया वेस्ट इंडीज के आप ब्रॉडकास्ट में बिजी हो गए। यहाँ पर जितनी देर आप लेट आए हो उतनी देर में
और एक विकेट मिल चुकी है और एक सफलता मिल चुकी है भारत को. स्नेहा राणा ने एशले गार्डनर को आउट कर दिया. मैंने अलीसा हीली के विकेट तक देखा था. उसके बाद मैग लैनिंग का मैं थोड़ा बैटिंग देख रही थी. उसके बाद फिर से मैं जो है इंडिया वेस्ट इंडीज पे कॉन्सेंट्रेट करने लगी. तो हाँ, बताइए मुझे, अपडेट बताइए. अपडेट ये चल रहा है कि मूनी ने जस्ट अपना 13वां अर्धशतक ठोका है. 130 पे 4 चल रहा है 15.4 ओवर में. सो वी स्टिल हैव व्हाट 4.2 ओवर्स. It's 154. So it's a tough contest that's going on. We've not given Australia the go right from the front. It was always a two-sided game. That whenever Australia is trying to hit, we are taking a wicket. But it is that big thorn of Mooney which is striking India again. She was that player of the final in the T20 World Cup. And now she's still here. She was the player of the series in the T20 World Cup. Now she's still here. Everyone is congratulating. आप मेरे को बताइए कि who's your favorite player in that Indian team? Listen, it's difficult to look past Renuka and Smriti Mandhana, but I also have to give credit to Jemima Rodrigues, जिस तरीके से middle overs को संभाल रही है. I think she had a crucial contribution to getting India to the gold medal match. But so Jemmy has always been my favorite. Smriti Mandhana, not just with the bat, but वो जो throw था to dismiss Nat Siver. I think that was the most crucial throw, and that's one of the reasons why we have approached the gold medal match. But it's difficult to pick one in that women's team. I'm just very happy, and I'm hoping we get the gold, because that will really change the game for women's cricket in India. Yash, that would be a moment. That would be a moment for women's cricket. That will be a moment for women's cricket. Tell me, see, you're covering 2 matches right now. You're doing the men's match. It's when you see that match, you have the BCCI logo, you have MPL, you have Byju's on the jerseys. Herein, when you see, it's that Team India feeling. You have the India logo, you have the flag, national anthem. Tell me the difference between the two, because दो बहुत ही अलग टाइप के गेम्स हैं. एक जहां पर आप बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हो और एक आप जहां पर देश को रिप्रेजेंट करते हो. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट women's cricket is representing the country as a whole. No, that is, ये आपने actually बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है, because the other day we were also talking how women's cricket has made nation proud. The men's team has also done it many times, but right now it's the women's cricket who's doing it on that platform. अभी देखिए, इन दोनों गेम्स में आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो इंडिया खेल रहा है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इज मोर ऑफ ट्रायल एरर मेथड है फॉर द T20 वर्ल्ड कप व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन ऑस्ट्रेलिया. तो वो तो एक डिफरेंट बॉल गेम ही हो गया. लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करना एंड गोइंग फॉर द गोल्ड मेडल मैच, वो एक अलग ही लेवल का क्रिकेट है और अलग लेवल का कंपटीशन, अलग लेवल का पेट्रियोटिज्म है उसमें. तो I don't think there is a comparison there between these two, because this is a very different stage of cricket that we're talking about for the women's in the Commonwealth games. वहाँ पे तो कंपैरिजन ही नहीं है अभी फिलहाल जो वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहे हैं. बिल्कुल ही कंपैरिजन तो नहीं है. और जैसी हम बात कर रहे थे, जिसने पहली मैच में हमारे को मैच हराया था हैरिस ने. रेणुका ने हैरिस की विकेट ले ली है. इट वाज अ ग्रेट, एंड रेणुका अगेन. So last time mistake that we did, we finished Renuka's 4 overs at the start. Harman doesn't do the mistake again. She doesn't like to do mistake twice. रेणुका ने 1 ओवर बच के रखी थी. रेणुका ने अभी डाली और हैरिस की विकेट ले ली है. So Australia is already 5 down. It is 133 for 5 in 16.2 overs. Renuka has the last over that's going on. We were talking about Team India, the atmosphere, of course, very much non-comparable stuff. And tell me, see, you told me that this gold medal is going to mean a lot for India. We've not seen a women's IPL. Of course, we're going to see it next year. But how much do you think, because the 2017 World Cup changed a lot of things, the way women's cricket is seen in India, how much do you think the 2022, this particular gold or silver medal is going to do that for India? You know, I was speaking to a lot of cricketers here, and they said that this could be the 83 moment for women's cricket. So if that really happens for India, for the women in India, for the Indian team in that blue jersey,
then what can I say? Anyway, with the women's IPL coming in, and with what India has done at the Commonwealth game platform, I think this is the era for women's cricket to be taken very very seriously. And we keep talking कि अगर हम जीतेंगे तो eyeballs मिलेंगे, और लड़कियों ने वो कर दिखाया है. तो I don't see, अगर आज के भी मैच में देखे, you won't believe it यश, यहाँ पे हर कोई टीवी पे तो देख रहा है, बिकॉज हम फैन कोड के ऑफिस में टीवी पे तो खैर इंडिया और वेस्ट इंडीज चल रहा है, लेकिन नीचे सब लोग अपना आईपैड खोलकर विमेंस मैच देख रहे हैं. वो तो अलग बात है कि इस मैच में कुछ खास बचा नहीं है, बिकॉज इंडिया बहुत ही अच्छा खेल रहा है मेंस टीम अगेंस्ट, और वो सीरीज भी हमारे हाथ हो गई है. और अगर गोल्ड मेडल मैच है तो शुरुआत से तो वही बिल्डअप है कि गोल्ड मेडल मैच है, गोल्ड मेडल मैच है, और इट्स वुमेन्स टीम. सो आई डोंट थिंक इन मेंस और वुमेन्स में कोई फर्क पड़ता है. जब वो प्लेटफॉर्म पे आप भारतीय ही हो, आप इंडियन ही हो, चाहे आप लड़की हो या लड़का, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. तो हम भारत को सपोर्ट करते हैं. You are playing for the country. We You're saw playing for the very country. beautiful- Yeah, we saw a beautiful video which BCCI put it out today morning, in which Rohit Sharma, Rahul Dravid, DK, Ashwin, everyone is just wishing the Indian team all the best for that gold medal, and it just gives you goosebumps because see, you are sitting somewhere in a studio in Film City. We are sitting at our home. Someone is sitting. I'm pretty sure उस डगआउट में भी देखिए, आज रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, आज सूर्य कुमार यादव नहीं खेल रहे, वो सब लोग भी बैठकर विमेंस गेम ही देख रहे होंगे. I am very sure. वो सब भी बैठ के विमेंस गेम देख रहे होंगे. वो बोल रहे होंगे यार ये तो मैच रोहित शर्मा ने तो मेरे हिसाब से फिर आज नहीं खेल रहे होंगे. क्यों? क्योंकि यार मुझे विमेंस मैच देखना है, तुम लोग अभी खेल लो. गोल्ड मेडल मैच है. ऐसे भी वेस्ट इंडीज टीम के सामने हमारा क्या, हम तो जीतने ही वाले, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. हमको हमारी लड़कियों को सपोर्ट करने, तो हमको ये मैच में ज्यादा मजा आता है. बिल्कुल. और इसके बारे में हम बात भी करने वाले अपने पोस्ट शो में कि जिस तरीके से लड़कियां खेली हमारे बॉक्सिंग में भी, जो अगेंस्ट इंग्लैंड वो है, फिर विमेंस हॉकी है. ओलंपिक्स जब मैं कर रही थी, मुझे याद है कि जितना भी हमारा मेडल टैली था, जितने भी हमारे मेडल के दावेदार थे, उसमें सबसे ज्यादा लड़कियां थी. एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वो हुआ है. ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रिकेट के लिए ये जो चेंज होने वाला है, बिकॉज बहुत ड्यू है, और यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन भी है ना कि मेंस टीम कहाँ से कहाँ चली गई, और वुमेन्स आर स्टिल wanting and struggling to get that due. I think this is the moment, man. This is really the moment. And the best part is that even men want it for women. It's not only that women. Men also want it for women. Everybody wants it. So it's a very big moment. It's really a big moment because nothing of this sort has happened. Everybody wants. Just speaking to Harman's manager, come family, and she explained us that even the brands, like for example, she talks to a lot of brands, and she says us on the show that see Yash, मेंस क्रिकेट का अब जो पूल है ना, वो पूरा ओशन बन चुका है. अब उसमें कुछ भी डालने लायक कुछ बचा नहीं है. So even the brand wants ki, oh, okay, women's cricket does well. We can sign up a lot of women's players. And when the next year women's IPL comes up, it's just going to go 3x, 4x, whatever value it goes. Because that is how the entire economy is going to change. See, men's cricket economy has reached to a level. And as we speak, Deepti Sharma has taken another great catch. Nirana has taken the wicket. Lovely. Beth Mooney is out for 61 or 41. Oh, this is the big that's for India now. 142 for 16, 17. How much did Mooney make? 57? 61. Okay. 61. Mooney goes for 61. That's a brilliant thing. I'll just get in a couple of fans. Hi Neha, hi Achal. You have Ridhima. You want to ask her something? Hey guys, what's up? Yeah, you want to start? Right. So really excited to have you here, ma'am. So how are you liking the game so far? Considering Australia had such a fantastic start, how is it, shaping up for India? Listen, we have to say that irrespective of Australia having a good start, India has fielded pretty well. Of at least till that I saw, India had actually kept them under the radar. So India has actually fielded very well. So liking the game, the heart is in the mouth right now. There is no time to like. There's only time to just react. I like the previous game a lot. But this is the time to only react.
So there is no liking the game. It's only reacting to the game today. It's only reacting. Liking का तो अभी मुझे you have to liking मतलब loving the fact that India is playing the gold medal match. I mean, this is the epitome of excitement. जहाँ देखो वहाँ everybody is talking. मैं 9:30 बजे घर जाना था. India का gold medal match था. So liking has now taken another. Like is a very small word to actually define the emotion that people are feeling for Team India right now on that platform. You know. Ridhima, we've talked a lot about cricket. See, you are one person that I know who doesn't only follow cricket but who follows all sports. You've done Olympics. You just very active on all the other sports. Which is your favorite sport except cricket? Hockey, man. Any day hockey, because any day hockey. Let's talk a little bit about hockey. We just saw India. India, New Zealand. इंडिया ने अभी ब्रॉन्ज जीता है. जस्ट इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है. एंड आपने एक पहला ट्वीट ही किया था मेरे हिसाब से, something about flick and coffee and something. I don't remember. It was. Yeah, I had said that this morning we don't need a coffee kick. We need a Gurjeet flick. So and we got it. So we are happy there. Indian women's team has won the bronze medal. Indian men's team is going to compete for the gold. Yeah. Excited for the gold match there as well. Yeah, like I said, the excitement is one thing, and then like excitement. I don't know, dude. Like, I mean, I remember when I was watching that India-Pakistan wrestling match. Also, I literally jumped off my sofa. I literally jumped off my sofa. So yeah, excitement. It's going to be that level of excitement कि कहीं मैं कुछ तोड़ ना दूँ, neighbors आके ये ना बोल दें कि भाई क्यों इतना शोर मच रहा है. I'm sure नहीं बोलेंगे because वो भी match देख रहे होंगे. But we will get to that. First is the first thing that we have in our hands, which is the Indian women's cricket team versus Australia in the finals for the gold. A quick question before you sign off. Have you been sleeping in the last 10 days? Because as much as I know, you do WWE in the morning, and you've been watching all sports till 3 o'clock in the morning again. So when have been, आप कब time निकाल रहे हो सोने के लिए? अरे क्यों सोना है? सोना क्यों है? For what? सोने के लिए यार बहुत टाइम. अभी जब तक मैं हर like I know physically and जितने भी लोग जितने भी फिटनेस एंथुसियास्ट हैं वो लोग मुझे बैन कर देंगे, लेकिन मैं जो भारत का जो यूथ है उनको ये बोलना चाहूंगी कि जब तक जवानी है तब तक सो कम. स्पोर्ट्स देखो, दिन रात चल रहा है. स्पोर्ट्स खेलो, काम करो और उछल के काम करो. सोना क्यों है यार? सोना क्यों है मतलब बिल्कुल भी मजा ही नहीं है सोने में. ऐसी ऑलरेडी वो सोना हम कम कर देते हैं. इस सोने के ऊपर ध्यान देते हैं. जब सोने की तलाश में हमें सोना कम करना पड़ेगा. So let's not go to sleep wala sona, but let's go to gold wala sona. Correct. Go for gold. Go for gold. Cheer for India. That's what we have been doing. Ridhima, thanks for joining in. Do you have any final predictions? Do you want to say anything to the audience? Just don't switch off that TV. Don't get up from that sofa because अभी इंडिया की बैटिंग बाकी है. So India की बैटिंग बाकी है, and as we were saying bye bye to Ridhima, Alana King's wicket has gone. Oh, perfect. Rana Yadav strikes again. She's a big match player. We were discussing it already. What is the score? 150 जो मैं आपके टिकर में देख रही हूँ. The score is 150 for 7 in 18.3 overs. With 9 more balls left, Rachel Haynes and Just Jonathan are at the crease. Let's see if they are able to do the 160 mark. Yash, I have to say this is revenge on cards because I remember 2020 maybe India had a fantastic run, and the only team they lost and against was Australia in the finals. So I think it is revenge on the cards. I don't think Team India is ever going to forget that. I remember MCG, 85,000 people, and we were both there. Yeah, both of us were there. I remember the faces. I remember we did the skydive on MCG one day before. Yeah. So I mean, I'm sure that moment is pretty much imprinted on their minds, is because it's, that thing that they say that nobody remembers who stepped second on the moon. I don't think India's going to forget that match. So I'm pretty sure revenge is on the cards. 19 overs done, 156. We'll say bye-bye to Ridhima because she has to move to another men's game.
Yeah. Thanks, Ridhima, Sorry. for joining. All right. Thank you guys. All the best. All the best to Team India and you guys. And keep doing the Thank fantastic you. job that women's cricket has been doing, guys. See you. Bye. Thank you. Bye. Hello, Neha. Hello, Achal. Achal, I've been Hello. speaking you for the first time. Tell me how big a women's cricket fan you are. Oh, I love the game. I mean, I've been following women's cricket since 2011, I think. Yeah, so I've been following the game since a very long time, and I love every moment of the game. And yeah, so really excited for the finals, and good to see that they've restricted Australia for 156 for 7 till now. So I hope they keep them under about 165 in the final over, which will be, I think, good score to chase down. And I think we have a very good match on the cards here. We have a very good match on the cards. Tell me, who's your favorite player? Oh, I love Smriti Mandhana from the current team, simply for the fact that I come from her city, Sangli. So I love Smriti Mandhana, and I love the way she bats. Love the way she scored in the previous match, the fastest ever 50 for a Indian woman. So yeah, I absolutely admire her. Yeah. Okay, maybe I get a few. इसके लिए मुझे क्या मिलने वाला है मुझे नहीं पता है. But have you visited her cafe SM18? अगर आप सांगली से हो तो मेरे हिसाब से you should have visited that cafe, right? No, I actually don't stay in Sangli. I was born there, and I stayed for a very less time over there. So I don't stay in Sangli currently. I kept going there up until about 2010 or 11 when her cafe wasn't open yet. So I haven't visited. But whenever I visit next, I would surely visit her cafe. So you will definitely visit her cafe. मुझे नहीं पता इसके लिए मुझे पैसे मिलने वाले या नहीं. मुझे एक फ्री पास्ता मिलेगा, पिज्जा मिलेगा, मुझे नहीं पता exactly क्या होने वाला है. That's another wicket. So a big run out has come from the boundary line. That just looks awesome. Who's gone? Is it Jonathan? Is it Haynes? कौन है? Wicket किसका है? That's more important. Looks like Rachel Haynes, huh? Yeah. Okay, that looks just Jonathan. So just Jonathan is gone. That's 157 for 8 in 19.2 overs. That's a great wicket run out. Smriti Mandhana. So we were talking about Smriti Mandhana, and Smriti Mandhana takes a wicket, another run out. Ridhima was telling me her favorite moment in this tournament hasn't been Smriti Mandhana batting, but that big run out Smriti Mandhana did of national game. Tell me, Neha, आपके लिए सबसे बड़ा मोमेंट कौन सा था इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट? मेरा स्पेशल मोमेंट था when Jemima Rodriguez was scoring runs right in the last match. Every boundary के बाद she was like pumping and she was so enthusiastic about that. I really love to see that because she's a class player. उन्हें टीम में होना चाहिए. But because of BCCI's very weird selection policy, she's in, out and everything. But I feel जो उनके performances हैं अभी, it is definitely knocking the doors of the selectors. And for me, she has been the standout moment this Commonwealth Games. Your standout moment or player has been Jemima Rodriguez. Jemima Rodriguez has been a very crucial cog in this T20I setup. Right since 2018, she's done well then, has been in and out of that ODI setup, has been a little consistent with the T20I setup ever since the 2018 World Cup, the first time she played the World Cup for India. This particular tournament, she's been very gritty. A lot of people will talk about her strike rate or something, but it's been very different kind of a thing for her. She's not your player who is going to hit you a lot of sixes, but she sees, oh, okay, यहाँ पर gap है, I'm going to squeeze in my four here. I'm going to go above the fielder there. Do you mind that? Do you like that kind of a batting, or are you more of a Shafali Verma type of? I think I really like Jemima's batting approach. That's one of the major reasons why I like her, because she's a very calculative cricketer. She exactly knows how to keep the scoreboard ticking. She knows the areas to, hit and focus on. And also the fact that she gives so much importance to other aspects of the games, right? She is such a hardworking cricketer. She
give so much importance to fitness. And I think we need more multifaceted cricketers like her in the current Indian setup, because there are a lot of people who raise questions about, are India mein depth nahi hai, kya baat hai, we can't have a women's IPL. But there are players like her who really, just make a mockery of all the people who raise the question of, we shouldn't have a women's IPL. Like, she is the epitome of, everything a modern cricketer should have. Everything a modern cricketer should have, of course. Hopefully, the modern cricketers are listening to that. Australia has done its 20 overs, 161 for 8. In the 20 overs, we have Ananya Upendran, who joins us. Ananya has worked for Women's Cricket Zone. She is right now doing a lot of things. Ananya, welcome. Hi. Long time. Thank you. Yeah, it's been a very long time. But a good day to catch up, I guess. Yeah, it cannot be a better day. Gold medal match. I am sure you would be backing the India team to get that gold medal. But because I'm talking to you, I'll talk a lot about technicalities. You've seen this India team right since whatever, I don't know, ages, 2 decades. What do you think is the differentiating factor this particular India team brings in that a lot of the other teams haven't been able to do? I mean, that's a really interesting question. That's probably something I could answer, for the next 2 hours. But to try and keep it as short as possible, I think it's just exposure. I think this group has been exposed to a variety of situations over the last, say, 4 or 5 years. Quite a few of them have gone abroad, overseas, and played in different leagues. And I think it's just, an understanding of having failed in these big games before, an understanding of what they shouldn't do or what they need to do better in terms of, having to, if they want to win big tournaments. So I guess for me, the big difference is definitely the fielding today. It's something that went bad in 2017, 2018, and 2020. The fielding was something that let us down massively. But I guess it's the attitude, the self-belief, and I think it's a kind of a reflection of this generation, not just of cricketers or of athletes, but of I think of young Indian people in general. I think the attitudes are, we're generally much more self-confident. You speak to a 12-year-old coming up and you feel like, they're much more confident than, we were, or when I was 12. So I think it's just a reflection of the way India is growing generally as a country, and the athletes themselves are definitely much more confident. And it's also, like I said, an awareness that comes with the exposure that they've gotten. Yeah, you want to chip in? Right, yeah. So hi Ananya, I did interview you on my podcast, and it's amazing to see you here as well. I did have a quick question for you though. I mean, you love swing bowlers. So how impressive has Renuka Singh Thakur been? Has she been the revelation that India has wanted for so long after Jhulan Goswami? You've taken my question. Look, I think, Renuka has been extremely impressive. And she's done exactly what she's done through her career in domestic cricket, bowled big booming in swingers at the start, come back and bowled a lot of cutters and slower balls. So I think, look, I wouldn't go as far as to say she's been the revelation that we've needed since Jhulan Goswami. I think it's unfair to everyone who's come before her. I think we've had a very good group of fast bowlers who kind of played in the shadow of Goswami, so haven't had the opportunity to shine without her being there. But yeah, Renuka has been exceptional in the opportunities that she's gotten. So that's exactly what you want with young players. Well, she's not very young, but with players coming through, with new players coming through, it's just generally you want them to come in and feel like they belong, and that's exactly what's happened with Renuka. That's what exactly has happened. Ananya, how impressive has this Indian team been this particular tournament, and what was your moment of this tournament? It's been extremely, extremely impressive, I guess. My moment of the tournament, I guess I'll tell you at the end of the final, but I think that semi-final was incredible. Just the way I think India had no business winning that. The way England were going, they
think England would be kicking themselves. But yeah, I think the way that the likes of first Smriti started off the day, kind of took the bull by the horns and said, we're here to play. But after that, the way that the bowlers kind of backed it up, like I said, England had no business losing that game. They found a way to lose it. But I think the way like Rana and Deepti came together and bowled in those middle overs kind of pulled them back. That was extremely impressive. It was extremely impressive. A lot of people have spoken about Renuka Singh Thakur. A lot of people have spoken about Jemima Rodriguez. But except for them, do you feel still that India still lacks that finisher's role, or aren't we using our players well? Look, I don't think so far in this tournament India have used Pooja Vasserkar very well with the bat, at least. She's someone that I think in the future would be like probably the perfect answer to Rumelidhar, playing that batting all-rounder role, doing a really good job as a third seamer. I think, we haven't used her as well as we could have. Why that is, I'm not sure. But look, I feel like maybe it's because, they weren't sure. She's come back from COVID. Maybe they didn't feel like she was hitting the ball as well as Deepti. We don't know why. But yeah, I think going forward, I feel like Pooja should be batting much higher in this order, especially if there's so much talk about this killer instinct that they want to have. And I think there's no player that kind of defines that killer instinct better than Pooja Vasserkar. So hopefully she plays a more central role going in the future, or maybe even today. I think if India kind of fall behind the rate, then she'd definitely be someone they'd be looking to promote. She'll definitely be someone they're looking because 161 gettable, 162 gettable. It is gettable, but I think like it has been with Indian teams in the past. Let me rephrase my question. 162, Edgbaston, Commonwealth gold medal match, the crowd, the expectations of 140 crore people. Now is it gettable? Again, it is gettable. My answer doesn't change. It is gettable, but I think a lot will depend on how we start, and that's generally the case with the Indian team. If they start well, you do feel like they'll just go with the momentum. But I feel like more than Shefali, if Smriti goes early, then it may be an uphill task. It will be a lot on, say, someone like Harman to pull that chase through. I feel like Smriti is the big wicket, and Australia will feel that too. Australia will feel that too. Australia always has been that particular team wherein they always say that India is the most difficult team that they they have on their cards, and that's what is again shown today. 161. Australia did not start well with Healy's wicket, then had a good partnership between Lanning and Mooney. Again, Mooney has been a thorn for India. I think so has been a thorn for a lot of teams. She's not talked about a lot, but still there is something to Mooney that is not to a lot of players, which is consistency. Yeah. So, I mean, yeah, she is one of the best players in the world for a reason. I mean, she made the cover of our magazine for a reason, obviously. But yeah, she is an incredible player. I think just her temperament, her big game temperament. I mean, we don't know if that's a real thing, but just her temperament overall, her ability to kind of find ways to score in pressure situations against different opponents in different conditions all the time it's pretty incredible. She doesn't get the kind of limelight that her the other teammates do, but yeah, she's kind of been. I think she's a batter that India hates seeing out in the middle. They must be sick of her at this point. But yeah, she played an excellent knock, and I think India will, at least the top order batters, will take something out of it. I mean, she didn't get a lot of strike at the start, but she kind of found a way to score quickly, to find the boundary. So yeah, I think people like Smriti, maybe even someone like Jemima, will take something from that innings, and hopefully that's something that they're able to implement when they go out to bat. When they go out to bat, and I'm sure with the innings that Gardner had, a very short and sweet one, Shefali Verma will definitely be saying there's something in the pitch. I can still hit those sixes, if not for anything else.
This is the same pitch that has already had 3.5 matches played. Is it going to be difficult for India to chase 162 down, seeing that pitch must have deteriorated but hasn't been that many number of overs still? Look, I don't think it would have deteriorated too much. It does seem slightly on the slower side in the sense that the ball doesn't seem to be coming onto the bat as much. But I think the thing with Australia is they are an attack that kind of they are, I wouldn't say pace heavy, but even their spinners are quicker through the air and quicker off the surface. Someone like Alana King, Ash Gardner are quite quick when you compare them to, say, the Indian spinners. So I don't think it would be as big a problem if Australia were chasing. I think you would say that India has the upper hand. But again, like I said, it's how they start. I think that new ball, that power play will be critical, and something that India have done really well through these Commonwealth games is kind of take advantage of that power play, really get ahead of the game. So if they're able to do that against the likes of Schutt and Brown, that will be interesting. Whether Australia actually start with Darcy Brown at the other end is another question. I think someone like Jeff Jonathan may be quite useful in the power play, but we'll see how they go. Will be how they go. I've talked to you a lot about the technical aspects of things. I want to, and this is a question I'm asking everyone. See, there's a difference when you play for a board, and there is a difference that you play for Team India. It's a village, it's Commonwealth Games, other sports that are involved. On your helmet, there's an India flag that's going on, and all the team members, especially Harman and Smriti, have consistently told that we want to not be at the podium, but we want to have that Indian national anthem going on. That means they want to go for the gold. As an athlete, where do you see this difference comes from? Because if you've been at ICC tournaments, and now this is a very different kind of thing. It is massively different. I mean, I think for one, the focus isn't on you, just on your sport. I mean, at World Cups, these athletes are the ones who are kind of always looked at, so they are the central focus. There's so much more pressure on them, whereas in the Commonwealth Games, I assume they don't feel as much pressure. They don't feel like the spotlight's on them all the time because there are so many other medal events. There are so many other sports in which India is doing really well. So, that pressure is kind of taken off you in the sense that you're not the main event. But on the other hand, I guess, I mean, they've spoken about it. They've put up Instagram posts, meeting other athletes, seeing them being successful, talking to them about different things. I guess it's just a new experience for all of them. And I guess seeing other people succeed is definitely something that inspires not just athletes, but anyone. I think when you watch someone winning or succeeding at something, it's definitely something that makes you feel like I want to be better as well. So I'm sure they're kind of reveling in the situation that, unfortunately, I don't think they're staying in the village, but just that opportunity to have gone there and meet all of them and see how they're doing, what they're doing differently, and how they're able to kind of perform under pressure, win big medals. I guess I'm sure they're learning a lot, and they'll come back hopefully with the gold, and hopefully that will translate into a World Cup in early next year. That will translate into a World Cup. That will translate into potentially a women's IPL. Shefali Verma has already started on the right path. 2 force for her against Megan Schutt, the person who took her wicket in that 2020 World Cup final. Before we close in, Ananya, tell us your prediction. How many wickets is India going to win by? Or how many overs are they going to chase this in? I think they're going to chase this in the, let's say, 19.2. My God, 19.2. And who's your player? Is it Smriti? Is it Shefali? Is it Harman? Who's your player? Since it's Australia, I'm tempted to say Smriti because she always does well against them. But because I'm saying 19.2, I'm going to say Pooja Vastrikar. Pooja Vastrikar to close in for India is what Ananya says. Ananya wanted Jess Jonathan to come. It's Darcy Brown who's started at the other end. Smriti Mandhana. Smriti Mandhana is going to have a good time with Darcy Brown. So.
Okay. Let's hope that happens. And Ananya, thank you for joining in. India is already 12 for no loss after the first over. Darcy Brown has just come to the crease. Ananya, thank you for joining in. Yeah. Bye-bye. Yes, so it is 1.2 overs, 12 for no loss. Darcy Brown joins in. It's Smriti Mandhana. Smriti Mandhana has had a lot of success against Australians. This is again her time, hopefully, and that is what a lot of people would want. She started again a 4, so 16 for no loss, 1.3 overs. Before we head to something else, we'll have a 9 minutes and 40 seconds break, but that break is not a break. That break is for me. But till then, you can watch an exclusive interview where Akash Coach speaks to Australia's newest sensation, Alana. Welcome to this very special episode with a very special player. Alana King is here. Welcome to the show, Alana. Thank you so much for having me. How are you? How's England? I'm great. Ireland's actually quite good. First time being here, so it's really nice to be here, and hopefully the weather stays a bit warm for us in our final game. Talking about UK and the conditions there, this is your first time there. Is there something differently that you're planning to do? Not necessarily. I'm just loving to be in a different place, playing some cricket and just trying to adapt to the conditions, I guess. It's been a bit cold and wet recently here, so it's just adapting to the conditions as best I can. Speaking about the Commonwealth Games, it's obviously something that we all are looking forward to, and you're part of Team Australia. What are the sports other than cricket that you would be cheering for and you would be watching? Oh, definitely growing up and watching the Commonwealth Games on the TV. I think you can't go past our swimming team. I think they've been incredible, and they showed that in the recent Olympics. So hopefully they can continue that form into the Commonwealth Games, and we'll be cheering hard for them. Speaking of your own team, who is that one player that we should all watch out for? Oh, I think we're pretty blessed, to be honest, to have such great players in our team, and I think we're all just excited to be part of a pretty historic moment for women's cricket, and being the first time it is in the Commonwealth Games. So look, it's going to be another great tournament, and we've got some great players who are ready to go, and I know myself I'm very excited to be a part of it. So I think just keep your eyes peeled. I think there will be plenty of action happening. Speaking of the Commonwealth Games and the addition of women's cricket into it, what do you think it will do to the development of the game across the globe? In Australia, it's pretty huge already, but across the globe, what do you think the impact would be? I think it just creates more exposure for the women's game, I guess, and putting it on a bigger stage. And I know many countries around the world, whether they're Commonwealth countries or not, they will be watching and seeing that cricket's in there. And hopefully that it keeps growing, and maybe one day we can dream big, and hopefully it could be in the Olympics, and that will really grow the game, and hopefully more countries can jump on board and wanting to aspire to be playing in the Commonwealth Games or the Olympics. That's something that is on the cards in the near future. We are hoping that it happens. Speaking of Commonwealth Games again, I'll put you on the spot on this one. I want you to tell me, who do you think is going to win the gold, silver and bronze? Obviously, I know Australia are quite the favourites for the gold one, but come on, I want the rest of the teams from your end. Well, hopefully. I'm being very hopeful that Australia are putting the gold medal around their necks. But look, I think it's going to be quite even. There's 8 great teams, and they've all been playing some really good cricket across, the last 12, 18 months. So, and everyone's been having some warm-up games in the lead up to the Commonwealth Games. But I'm not too worried about who gets the silver and bronze, to be honest. I'm hoping that we get the gold. You are pretty diplomatic. That's something that I knew, but I'm just sensing that much. However, let's talk about the last 12 months that has been, it's been such a experience for you. It's been quite big for you. You won the WBBL, you went on to win the World Cup, you made your debut at the international stage in all the formats. Just sum it up for me. How does it feel looking back over the last 12 months? It's been pretty spectacular, to be honest, and I don't think anyone
including myself, would have dreamt that this has happened and I'd be in this stage 12 months ago. Yeah, I was just, as I said, and I've always said, that I was really excited to be joining the Perth Scorchers last WBBL, and the prime focus was trying to win the first title for that franchise, and I'm glad we did it, and yeah, I'm glad I could contribute in that team and get us over the line as much as every other player in that team did. But yeah, to get the call up into the Ashes squad and to make all 3 debuts, that was pretty special, especially with my family being there for all of my debuts, to be honest. And yeah, it's just been a great roller coaster to be honest. And yeah, heading over to the World Cup and winning the World Cup, it happened really quickly. So there was some time after the World Cup that I got to spend some time with the family back in Melbourne, and then things got into gear again and went to the IPL and had a lot of fun there, and yeah, and won it with the Supernovas, which was an incredible experience. Hoping it was a bit longer and a few more games, but I'm hearing that, you know, next year is going to be a pretty big year for the women's IPL, and yeah, there's been some crazy times in the last 12 months, I guess, but yeah, I've loved every minute of it, and I'm pretty fortunate to be in this position that I am today. I think you have the Midas touch. You won the WBBL, you won the World Cup. Then you went on to win the Women's T20 Challenge as well in India. So, I mean, if there's franchise cricket going on, they would want you around. Moving on from the World Cup, obviously it was a big moment for you and the Australian team. You went to the Women's T20 Challenge. You came here to India. How was the experience of playing in Indian conditions, firstly? And how was the experience or overall playing in this tournament? Yeah, I loved every bit of being part of the T20 Challenge, and yeah, shame it was such a short tournament, but I loved every opportunity and just getting to know the Indian players a lot more, and playing with obviously Harman and a few of the other Indian players. It was a great experience. We had a really great support staff as well. I know the coach was very into it, and she was obviously riding the highs and lows from. She even said, she's like, I'm getting the domestic players that are coming through. I think it's pretty scary to see the talent that India have, especially with their domestic players. And yeah, I just think a proper women's IPL will put all these domestic players on the global stage, I guess, and let the world see what the talent is like over in India. And I think it'll do a world of good for not only women's cricket in India, but for the global game as well. And yeah, I know there's plenty of players around the world who are hoping that it all goes ahead next year and we can get another T20 tournament in another country. Speaking of the women's IPL, if you were, and you will obviously get a gig once it starts, which would be that one team that you would want to represent? Oh, it has to be Chennai, surely. Obviously, mum and dad born and bred in Chennai, so I love going back to Chennai whenever I've been able to and had the opportunity to. So we've got still some close family friends and some family over there. So definitely I'll be putting on the yellow if I can. Speaking of the relationship with Chennai and India, how would you sum it up? Obviously, there's a family connect with this country and the city. How would you describe that as a person? How would you describe that for yourself? Chennai is a bit chaotic, I can tell you that, and it's very hot. So, and that's what I love. Like, I love a bit of chaos, and I love hot weather. So it suits me and is me in a nutshell pretty well. So I'll be excited to get back to Chennai and hopefully play a few games at Chepauk Stadium. Do you like the food that comes in India? Is that something that you care for? Yeah, of course. I love the food, and Dad was a chef back in India, so I'm very blessed to have some of the best South Indian food going around. So love all the sweets and the dishes that come from Chennai, and I know if I go back and family are there, they'll always put on a good feast for me. Speaking of your career again, Shane Warne, you did give a tribute to Shane Warne in the opening game against England in the Ashes. It was one of the most heart-touching moments for me as a fan. How did he impact your career as a young leg spinner growing up in Australia? How did he impact your career? Well, he was the reason why I picked up the art of leg spin, and yeah, didn't really
know what I was getting myself into because he just made it look so easy and so effortless. But realised pretty quickly that it's a pretty hard task to master. But yeah, I think not just me, but many kids around the world. He's inspired to pick up leg spin because he made it look fun. He made cricket fun again, and he brought that energy that people were wanting. So yeah, big inspiration to me. And it was a really sad day when we got the news that he passed, because only 24 hours prior, Rod Marsh passed as well. So it was a pretty tough tough few days, I guess, for Australian cricket. And yeah, hopefully we put some smiles on faces back home. We come back from the interview, or a little break for me, and both the Indian openers are gone. It's going to be a little dangerous for both the teams, for the Indian team, because we are in the fourth over and it's already 23 for 2. I don't know what's it going to be like now, because it gets a little difficult. The last ball of the fourth over, it's a bouncer to Jemima Rodriguez. What's it going to be? Is it a wide? Is it a no ball? No, nothing of that sort. 4 overs, 23 for 2. We have another guest who's here. Akanksha, welcome to the show. Hi Yash, thank you for having me. Yes, so India 23 for 2 in 4 overs, 4 overs lost. What do you think? We're all backing for that gold, cheering. Everyone wanted Shefali Smriti to do well. That didn't happen. Do you feel Jemima, Harman, and the rest of the team is going to win this for us? Well, it is not been the best start for us, like how it's been in the Commonwealth Games. But I think probably it would have been important for at least one of them to stay. But we also have got good depth. Jemmy has been amongst the runs. She's been been in good form this Commonwealth, and along with Harman, she is a big match player. Probably this would be the finals, and this would be the match which will definitely get her in form, hopefully, because all the hopes of India is on these two at the moment. The hopes of India are on these two at the moment. You've played a lot of domestic cricket with these players. Do you feel there is a lot of this? There is this thing called aggression. There is this thing called killer instinct that is going on around. What do you make of this team? Well, I think initially when the squad was announced, it looked a bit inexperienced, I would say. But I think the way these girls have, turned around it for themselves and played their hearts out in this Commonwealth, since it is the inaugural for women's cricket. And I think we've done a really good job to reach the finals. Beating England wasn't easy. Beating Barbados also wasn't easy. But I think we've done a really good job coming this far. Barbados to be beat, like it was 162 we made and 62 was something that Barbados made. It's like 100-run difference. But that England game was very interesting. Smriti Mandhana started very differently to how she generally does. It was more of a Shefali Verma skew innings that she did. And Sneha Rana did very well with the ball. Who's that one player that you feel you've been most impressed? Because you told that this is a very inexperienced team that's going, but at the same time you have the likes of Smriti, you have the likes of Harman, who played multiple years. Even Jemima Rodriguez or Shefali Verma have 2+ years of experience under them. Who's that one player that you feel has gone above what you were thinking and has delivered exceptionally well? Well, I think for me it would be two of them. One is definitely Renuka Singh. I think seeing her play in the domestic, and probably initially when she was selected for India, she wasn't amongst the wickets. She was initially getting hit quite a bit. But I think from there to come and bowl the way she has bowled, even the first match, I think the first match against Australia, that was the confidence booster for India. We almost beat them, though they are definitely a very good team and they were better that day in their batting. But I think the way Renuka Singh has, performed this Commonwealth,
I think a big kudos to her and credit to her to actually, the team is reached in the finals. Probably she has a big role to play. And apart from her, I would also mention Sneh Rana. Um, Coming from an injury, I think she was in NCA rehab. I had seen her a couple of times here when I used to go for my training. Coming from an injury and performing like that, performing the last over that she bowled even in the last game, that really shows great character. That really shows great character. It was an amazing innings from Sneharana. Renuka Singh Thakur has been in the scheme of things. I think so she's taken 11 wickets, the most wickets at this Commonwealth Games. Likely, I don't know if they're giving a player of the series or player of the tournament kind of a medal, because they haven't had any player of the match medals. So if they are giving a player of tournament, if they are, Renuka Singh Thakur makes her case for being at the top level there if India closes in with a gold medal. That's true. I think. I don't think there would be any player of the series or anything that for that sort, because it is a Commonwealth game. It won't be fair on other participants and other sports also if they start introducing such awards. But definitely, I think she has really nailed it with her bowling, and that too, she's taken some big wickets. It's not been easy. It's never been easy to get batters like Lanning and Healy out consistently. I think she's been a great bowler, and her in swingers have been, I think, it's literally banana swinging, especially that wicket of Tahila McGrath. I think everybody were really shocked, and that has to be the ball of the tournament. That has to be the ball of the tournament. Let's hope that was the ball of the tournament. Now let's come down. We are Indians. How much are you rooting for India today? Obviously, everybody is rooting for India. Even who are not Indians are rooting for India because I think at one point, though Australia is a better squad, but I think they do want a change in champion for a change. And I think India truly deserves to win. They can win. And I think if one team that can give competition to a team like Australia, it has been India consistently. It has And been India. probably revenge time for us, because every time we lose, usually we beat Australia in the first game of a match or a big tournament, and then they come around and win the finals. Hopefully, this should be a sweet revenge today if we can get the gold medal home. If we can get the gold medal, it's a sweet revenge, is what Akanksha is saying. But end of the day, how important is it going to be this particular player? Let's come down to this particular player. It's Jemima Rodriguez, who's done pretty well this entire tournament. People are saying that, oh, okay, either it's a strike rate issue. Last year when she was not performing well, oh, she's too much on social media. You're an athlete yourself. You're not very active on social media. But do you feel there is a personal life to the athletes and then there is this professional life, and people try and mix both the things together? See, people are meant to talk. There's a very famous saying, ना लोगों का काम है कहना, because उनको और कोई काम होता नहीं है. But yeah, I mean, at the end of the day, you are an athlete and you have certain things which you want to, you want to unwind from, because it's not easy to live a life of an athlete, especially when you're playing at a highest level. There's a lot of pressure, not just performance pressure, but there's a lot of external factors that come into play. And social media now, if you look at it, is something that has, because of social media, people know about women's cricket, and it is important for players and athletes also to be in touch at the same time. And with the way Jemmy has also come back, I think she was dropped, and then the way she's playing at number 3, all of us know that she's not a power hitter. She's not somebody who can, hit sixes at ease. But then her strength is rotating the strike, and probably, the way she's been accelerating her game towards the end. That has been the strength, and that's actually helped the team. And I think it's a good move to push her at number 3 and not juggle around with her batting, because initially they were trying her out in the middle overs. But middle overs, you need somebody with that kind of power hitting, like we've seen in Richa or probably in Veda. But since these guys aren't there, and Jemmy's doing a great job at number 3, and she's actually, the best part, what she also mentioned, I think I read one of her interviews where she said that she's realized that what her strength is. She knows that she's not someone who can hit those long sixes, but it's a good thing that she's realized, and she's using her strength to the best use. And India is doing well when she's using her strength well.
India is doing well when she is using her strength well. Jemima Rodriguez, she recently told in an interview that Smriti Mandana, her best friend in the Indian team, told her that you don't need to be the next Smriti or the next Harman. You need to be Jemima Rodriguez. You work on your strengths, and that's what you're going to give. Back-to-back matches, winning it for India. Again today, she looks to be in form. 3 fours already in the last over by Jemima Rodriguez and Harman Kreitkov together. Uh, we finished the power play on 42 for 2. Akanksha, final closing words from your end. What do you feel? India is going to go for gold. But as an Indian, what do you feel? What's next for all of us? What's next for cricket? Women's IPL? What else? Well, there's a lot in store for the women's cricket, starting with the domestic season starting in October. It is starting with T20, then you have under 19, then you have 50 overs, and followed by IPL. So I think this year's the domestic tournament for T20 is going to be something which everybody is going to watch out for, especially the franchises who are going to buy players for the IPL. So yeah, that's the next big thing that's just about a month away now. That's So just a quite Yes, finally cricket is there for the domestic players as well now. final things for the domestic players. There's an under 16 that's getting in, that's again going to start this particular year. It's going to be zonals for this year. That's There's an true. under 16 World Cup coming up. The camp is right now going on at the NCA where you practice a lot. Do you feel that an under 19 system is also going to be very important to getting players like Shafali Verma and Richa Ghosh, which we have already seen at a bigger stage? Obviously, definitely. I think, our young, talented players are the next big thing. And it's a good thing that now there's under 19 World Cup being announced, under 16 is come back. And interzonal also, which is very important, is come back. It probably bridges the gap between, just domestic and then directly playing to the international. But I think the tournament to watch out for would be under 19 World Cup. This is the first time ever it's going to happen in women's cricket. And we've seen even Jemmy's come from there. Like she's performed really well in under 19, like you mentioned, Shafali. Quite a few have been big performers in under 19, but now for the players who are currently in the camp, they are the best in our country. And I recently did visit the stadium, and I saw that they've been really practicing hard. It would be a great tournament for them and a good opportunity to probably make it to the country for these young girls. Let's hope that all happens. Let's hope India goes for the gold. Thanks, Akanksha, for joining in. We will see you again soon. But let's hope when we speak after an hour or 2 hours, it's India which is on the podium and winning the gold medal for the country. Definitely, Yash. I hope we do. We're looking in good touch so far. But yeah, fingers crossed, we should get this home tonight. Bye bye. Thank you. Thanks, Yash. See you. I have another guest who's joining me, Sonia Dabir, former India cricketer. Hi, Sonia. How are things? We're both in Pune at different places. How tensed is the situation? We're already 7 overs down. Actually, not tense. I It's won't say the situation is tensed, but it's good to see few boundaries coming in, which was required. Few boundaries coming in, which was required. Early wickets, Shafali, Smriti, both gone. It's all about Jemima Rodriguez and Harman Kreitkov now. Yeah, definitely. But I think they are now aware of what they have to do. Basically, as I said before, that I know this is a very big final Commonwealth Games gold medal match. But if I remember that whatever I remember, Harman likes to chase. She likes when she has a score to chase on the board. So I think she will be taking the team through. You feel Harman will be taking the team through? I had Mona Meshram today on the show. I had Reema Malhotra on the show. I have Nupur Kashyap on the show. Everyone is backing Harman. I don't know उसके ऊपर प्रेशर कितना है, क्योंकि मतलब यार देश की कैप्टन है, सब कुछ कर रही है, and nearly every expert, every former cricketer, every fan wants Harman to do it. मतलब इतना प्रेशर आप जब डाल दोगे तो वो प्लेयर क्या करेगा? नहीं, एक्चुअली ये प्रेशर उस पे, दिस इज नॉट अ प्रेशर, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच शी एंजॉयज डूइंग. दैट्स द रीजन शी इज अ प्लेयर हु लाइक्स टू चेज. और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने जैसे बोला कि उसको अच्छा लगता है कि आप रन चेज कर रहे हो और शी इज कंट्रीब्यूटिंग, सो शी इज एंजॉयिंग, आई थिंक, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी.
I'm sure she is because just Commonwealth जाने के पहले I had a chance to interview her and I told Harman मैंने जितना आपको देखा जब भी आप कैप्टनसी करते हो तो you are in the face, मतलब आप ऐसे साइलेंट कैप्टन बिल्कुल नहीं हो, एकदम बहुत अग्रेसिव हो, जाके इन द फेस करते हो और जितना भी जब भी आपको एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है योर परफॉर्मेंसेस ओनली ग्रो like and you just try and do every time you do something you only do better and she was like यार मेरे को बहुत मजा आता है क्योंकि तुम मेरे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हो ना तो मेरे को बहुत मजा आता है। आज जब आपके 4 लोगों का और 140 करोड़ जनता का जब प्रेशर है वो उसको ज्यादा मजा आ रहा है। अगेन जेमिमा रॉड्रिक्स ने और एक चौका मार दिया, हरमन ने एक चौका मारा, मजा आ रहा है मतलब मैच में। दैट्स व्हाट आई सेड कि हरमन जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजॉय करती है और उसको जो ये चीयर अप जो कल इंग्लैंड के मैच के बाद शी सेड इन एन इंटरव्यू दैट आई आल्सो स्टार्टेड चीयरिंग अप विद जेमिमा बिकॉज जब वो एग्रेसिव होती है तो एक ऑटोमेटिकली टीम को ऐसे पेप करने का मौका उसको मिलता है और this is the way Harman is, you know, she likes the responsibility and she more than anything else she is enjoying the captaincy. She's been saying that pretty frequently, so it's good for the Indian team that she's, you know, into the zone, into the groove of being the captain, leading the side, and she's been doing really well actually. Absolutely, she's been doing really well and that is what is needed at this big stage. अगर आप तालिया मगरा को 2 चौके मार रहे हो, who's probably the most consistent player in the last 2 years, you are really doing something good and it is not that, so they are not, जितना मैंने जेमी और हरमन को बैटिंग करते हुए देखा है, they are not the players who will go from ball 1. शेफाली ट्राई करती है, स्मृति ट्राई करती है, पूजा ट्राई करती है, बट both जेमी and हरमन they take their little time, they try and settle in and then they will strike and at the same time but they don't stop. They will remove you singles and four singles, doubles, fours. Exactly. That's the difference that brand of cricket that they bring in. Actually, they like to rotate the strike. They keep the scoreboard ticking. Harman definitely, as we all know, कि थोड़ा time लेके खेलती है, लेकिन जब वो settle होती है तो सबको पता है what she can do. So we've seen in that World Cup 2017 or even in the T20s, she has 100 behind her opening the innings. So she is kind of a player. वो टाइम लेती है लेकिन शी बैक ऑफ द माइंड शी इज अवेयर कि उनको रन्स कितने बनाने हैं, हाउ शी इज गोइंग टू गो अबाउट इट, शी इज दैट क्लैरिटी इज देयर इन हर अप्रोच व्हाइल शी इज चेजिंग और व्हेनेवर शी इज बैटिंग, आई विल से she is batting to right now she's 59 for 2 in 8 overs and I think so that is what is going really well. 59 for 2 in 8 overs. Megan Shoot has come back. जनरली ये सब हमको देखने को नहीं मिलता है. मेगन शूट डजंट कम बैक सो क्विकली बट राइट नाउ आई एम श्योर लैनिंग नीड्स अ विकेट टू स्टॉप दिस टू एंड दैट्स व्हाई मेगन हैज कम so early. Do you feel? I think Harman and Jemmy are kind of players, you know, both like to bat with each other. They know, you know, if you see they're running between, they are so comfortable, you know, they are, you know, they just know when to run that single or when to take that ones or converting ones into twos or twos into three for that matter. Ones into twos, twos into threes. Harman hasn't scored a lot of runs, but whenever she does it against Australia and she does it in important games. Yeah. Today, hopefully that important game is she's already 21 of 17. She's going to face another ball of Megan Shoot. Wow, that's a dot ball. But yeah, Sonia, tell me about this killer instinct brand of cricket that Harman Kreitkov and the Indian team is talking about. Because generally, India has been a lot conservative. मैं हरमन से अभी बात कर रहा था, हरमन मुझे बता रही है कि 2017 का जो वो वर्ल्ड कप मैच था, मैंने पूछा कि आप मेरे को एक ऐसी मेमोरी बताओ कि जो किसी को नहीं पता है. तो शी वाज लाइक कि 2017 का जो वर्ल्ड कप का मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ जिसमें उन्होंने 171 मारे, शी केम टू द क्रीज एंड द फर्स्ट थिंग शी सेज मिताली दी मैं आराम से नहीं मारूंगी, मैं जोर से मारूंगी. तो मिताली बोलती है अरे थोड़ा रुक जा. तो वो रुकी नहीं 4-5 बॉल बाद और फिर से जाती है मिताली के पास और बोलती है कि नहीं मिताली दी मैं मारूंगी. तो मिताली बोलती है अरे नहीं
इतने जल्दी मत मार, अभी ज्यादा विकेट नहीं है हमारे पास. तो शी सेज कि मिताली दी, हम हमेशा इस पोजीशन पे आते हैं और फिर हम 220 240 बनाते हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया चेस कर लेगा. उससे तो कम से कम मैं अगर मारूंगी और अच्छा खासा स्कोर हो गया तो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड कि शी बिकॉज शी वेंट बिजर वी वर एबल टू गेट दैट टोटल एंड ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट एबल टू चेस. Yeah. So that is what Harmanpreet Kaur brings to the table. Yeah. See, this is one attitude which definitely initially we lacked. I will say lacked, or more than lacked. हम में था, लेकिन it was not on a consistent basis. You know, we are a bit conservative. Definitely, we were a bit conservative. Definitely, but it used to be that कुछ साल पहले तक ऐसा था कि people at almost few of the batting was dependent only on Mithali. So it was like being a sole person who is going to take through the team or cover, वो सब चीजें थी. तो that's the reason that attitude was there. But now as we see that the middle order is getting settled, they are scoring the runs at whatever pace they want, and the acceleration and the steadying the ship, what we say, is there. So हरमन का जो ये अप्रोच है, एग्रेसिव अप्रोच और किलर इंस्टिंक्ट अप्रोच, definitely 2017 even I felt that after that 2017 171 innings, क्योंकि it is not wrong, definitely it is not wrong, because हम लोग जब बाहर जाके खेलते हैं, like for teams like Australia, England, you have to have this kind of an approach, because otherwise they will get on you. If you have, you're going to, they are like Ganguly once said, they are going to hit you, but if you hit them back, definitely they'll be getting onto the back foot. So that is a very good approach, and it is helping the team, it is helping in the Indian team as well. It was also there when Mithali played, but a bit late, maybe the after 17, as rightly you mentioned. But this is the new approach for the Indian team, and it is helping them. Even if there are few matches they are losing or not getting the result which they want, but this approach has helped the whole team, that it is not it's not going to be one man show. Someone or the other is going to put their hand up, and they are going to contribute and make sure the team is getting the result which everyone expects. And there's a big long six from Harman. Sorry. Juan and outside, it's sixer. Yeah, Harman it's has opened her Harman. arms. Just Jonathan gets hit for a six. Yeah, you know, First and this six. is the bowler actually whom Harman should be hitting actually. No, Harman loves spinners. आप उसको Yeah. spin देंगे तो वो मारेगी. I'm sure Amelia Kerr, Devika Vaidya, all of these people know कि, how much Harman loves spinners. So ये जो अप्रोच हम लोग देख रहे हैं कि if she is confident of hitting, जैसे हम लोगों ने, I think which match, I don't remember, last match England match या Barbados match, first ball she swept Harmanpreet for Yeah. I think last Australia match, or I don't remember that match. But that is the way. If she is confident, she is very clear about how she's going to approach, or the, for that matter, few of the batters, if they have that confidence or they are clear in their mind, then this is the right approach, and it is definitely helping them. It is the definite approach that is helping them. Sonia, 2017, post that, you are a coach. You've seen a lot of girls have taken entries. That little Harmanpreet Kaur 171 innings has changed a lot. Today, the captain Harmanpreet Kaur is back at the crease. A lot of people, 140 crore audience, that gold medal is waiting. What do you think after this? What is going to change in India or global women's cricket as a whole? See, basically, this is going to be a big thing, because the rightly, I was hearing what Akanksha was saying, that IPL is going to be there. There are a lot of franchises who are watching this Commonwealth Games, and they're going to be following the domestic season T20s as well. So, see, if you are going to have IPL next year, that is what is being heard. So, अगर इतना बड़ा आईपीएल टूर्नामेंट गर्ल्स के लिए स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज अ बिग थिंग व्हेन यू आर गेटिंग दिस गोल्ड मेडल. देयर आर लॉट मेनी गर्ल्स हु आर वाचिंग दिस मैच लेट नाइट एज वेल इन पुणे एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो एक जो 2017 वर्ल्ड कप के बाद हुआ कि there were so many girls who wanted to play cricket, or who are now aware of so many women cricketers, which was not happened many years back, or like few of the cricketers were known. Now
बहुत से लोग हैं जिनको हरमन, स्मृति के अलावा ऋचा घोष या फिर तानिया भाटिया, ये सब लोग पता है, and they are aware about it, who the girls are. So this is definitely after this Commonwealth game, whether it is a gold or a silver, there is a big revolution, because as we know, IPL is starting. So many of the girls now are more aware of how they are going to play the cricket, and the standard and approach towards playing the cricket is going to change for sure. That is for sure. We know what happened after 2017. We know what is going to happen after today. But अभी जितना मेरे को दिख रहा है, लैनिंग का चेहरा ऐसा है, एंड लैनिंग इज लाइक अब मैं इसका क्या करूं. 2017 में भी इसी ने मेरे को डुबाया था, आज भी यही मेरे को डुबाएगी. दिस इज लैनिंग स्पेस. दिस इज हाउ शी इज लुकिंग एट इट. I don't mind this 20 overs and we win. I don't think so. Harman is going to take 20 overs, but let's hope that doesn't happen. Whatever, how many overs she wants, let her take, but just get that gold. Yeah, nobody really cares. Actually, let's hope that gold comes. Reema Malhotra is in form. Harman Kreitkov is there at the crease. She smacked the first 6. We're already 78 for 2. We need 84 runs in 57 balls. Sonia, your final thing. Do you feel this particular pair is going to close, or do you feel Pooja Vastarkar की जरूरत आएगी? You never know. I think after शायद 5 ओवर और के बाद पता चलेगा. But these two are definitely going to take the match very close. That is definitely there. Take the match very close. Let's go for gold. Let's cheer Team India. Let's hope that the first gold in women's cricket comes to India. Thank you, Sonia, for joining in. Thank you so much. Definitely be in touch in an hour's time. Hopefully, the podium finishes ours. Yeah, thank you so much. Thank you, Sonia. Harman Kreitkov is at the crease. It's already 79 for 2. She smacked the first 6. It's 36 of 27 that she's bowling. We'll have the last break, but in that break, you can have the exclusive interview with Harman Kreitkov, which we just shot before the tournament started. Harman Kreitkov talks about everything, including captaincy. This is her first interview after she became the full-time captain. So look into that. And we have 3 or 4 special guests joining after this short, particular, exclusive interview. Harman, welcome to the show. So, वो फीलिंग बताइए मुझे जो फुल टाइम कैप्टेंसी के बाद आई है. मैंने अभी तक बहुत एंजॉय करा है, एंड एज वी डिस्कस कि यू नो सो फार जो टीम एंड बीसीसीआई है सब ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड दिया है, एंड यू नो जब सब अच्छे से रिस्पॉन्ड देते हैं तो आपके लिए एज ए कैप्टन बहुत चीज़ें ईजी हो जाती है. तो आई एम रियली हैप्पी, यू नो एवरीबडी इन द टीम दे आर एंजॉइंग एंड देन दे आर मेकिंग थिंग्स ईजी फॉर मी. फैंस, एक्सपर्ट्स, जितने लोगों ने श्रीलंका सीरीज देखी है, सारों ने यही बोला है कि जितना हरमन के ऊपर आप दबाव ज्यादा डालोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दोगे, हरमन उतनी निखर के आती है. हमने बैटिंग में देखा, हमने बॉलिंग में देखा, हमने फील्डिंग में देखा, हमने कैप्टनसी में देखा. ऐसा क्या डिफरेंट होता है कि एज अ प्लेयर जब आप खेल रहे हो और एज अ कैप्टन जब आप खेल रहे हो, क्या फर्क आता है आपको? एज ए कैप्टन जब खेलती हूँ आई फील कि यू नो मैं हर टाइम टीम ग्राउंड पे इन्वॉल्व हूँ, और जब मेरी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है देन यू नो आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ मोर ऑन द फील्ड. एंड वही हुआ है यू नो लास्ट 1-2 सीरीज में जब मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है ज़्यादा, देन आई जस्ट यू नो आई एम ऑलवेज अवेयर दैट आई हैव टू गिव माई बेस्ट बिकॉज आई हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट. इफ अगर मुझे कहीं पे भी मैं लैक हो जाऊंगी देन यू नो दोज थिंग्स कैन अफेक्ट टू माई टीममेट्स. सो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो कभी भी कुछ भी सिचुएशन है आई हैव टू बी देयर, एंड आई एम रियली हैप्पी यू नो सो फार बीसीसीआई स्पोर्ट्स स्टाफ सब ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड दिया है. एंड यू नो इट्स बहुत ईजी होता है जब सब एक साथ रहते हैं, एंड देन वी आर ऑल एंजॉयिंग, एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी. वर्ल्ड कप के जब पहले देखे थे तो अरे यार परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. वहां से क्या चेंज हुआ? क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज तक हम देखे उतना कुछ नहीं था, लेकिन वर्ल्ड कप में हरमनप्रीत कौर ने दिखा दिया वो क्या प्लेयर है. श्रीलंका सीरीज देखे, विमेन T20 चैलेंज देखे, कुछ भी देखे, तो हमको अलग ही एक हरमन देख के आई है. ऐसा क्या चेंज हुआ है तब से अब तक कि अब ऐसा लग रहा है? और इस साल अगर हम स्टेटिस्टिक्स की भी बात करें तो ये आपका सबसे बेहतर ईयर हो चुका है ऑलरेडी. 2017 में आपने कुछ 505 रन बनाए थे, अभी ऑलरेडी आपके 550 के ऊपर रन हो चुके हैं.
एक्चुअली जो साउथ अपना न्यूजीलैंड सीरीज था उसमें आई वाज गेटिंग दैट रिदम. द प्रॉब्लम ये हो रहा था कि उसको बिग स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी, एंड देन 2-3 टाइम्स आई गॉट सिली मिस्टेक से आउट हो रही थी. देन मेंटली आई वाज ओके कि आई नो एक होता है कि आप यू आर ट्राइंग अ लॉट बट देन यू आर नॉट गेटिंग दैट रिदम, दैट कॉन्फिडेंस. अदरवाइज थिंग्स वर ओके. द ओनली प्रॉब्लम वाज कि मुझे रन्स नहीं मिल रहे थे जो मुझे चाहिए थे एज ए बैटर. बट देन जो प्रैक्टिस मैचेस हुए जो वर्ल्ड कप से पहले, दोज गेम्स गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसमें मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि मुझे आई मेक श्योर कि मैं सबसे ज़्यादा बॉल खेलूँ, क्योंकि जितनी मैं ज़्यादा बॉल्स खेलूँगी उतने जब आप जितना देर आप क्रीज में रहते हो तो यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस. सो दोज प्रैक्टिस गेम्स गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस जब मैंने प्रैक्टिस मैचेस खेले. और उसके बाद वंस आई गॉट द रिदम, and then in the last ODI we played against New Zealand. There I was a little bit lucky also, and I got 2-3 chances, then मेरे को run भी मिल गए. So sometimes you need that luck also, which I got it from the New Zealand series, from the last ODI. And then once I got the rhythm, then I know एक बार rhythm मिलने के बाद I know how to carry that rhythm. So उसके बाद I carried that to the practice games, and then practice game में जब सेंचुरी बनाया उसके बाद तो I know कि now it's time to continue this form. And then मेरे लिए बहुत important था, and I'm really happy that what I was expecting from myself personally as a batter, I was able to execute myself in the better way. और important यही होता है एक बैट्समैन के लिए कि वो बॉल को अच्छे से वॉच करे और मिडल करे, और जब वो चीज़ें होने लग जाती है then runs will अपने आप आ जाते हैं. then मेरे लिए वही इम्पोर्टेंट था, वही चीजें मैं प्रैक्टिस में भी ट्राई कर रही थी. इफ आई कैन वॉच द बॉल वेल एंड मिडलिंग द बॉल वेल इज वाज अ की फॉर मी, एंड वही चीजें अभी कंटिन्यू कर रही हूँ. हरमन, इंडिया स्पेस बैटरी बहुत बोला जाता है कि एक टाइम था झूलन शिखा संभाल लेते थे, लेकिन हमने पिछले 6 महीने में देखा है, अभी वी डोंट नो ऑफ कोर्स द स्टेटस ऑफ झूलन, वी डोंट नो द स्टेटस ऑफ शिखा, बट we've seen that we have evolved from there to Meghna, Renuka, Arundhati, a lot of people in the mix. Do you feel कि वो एक right direction में जा रहा है? Yes, definitely. We had a lot of meeting with Lakshman sir regarding these things, because everybody is working on that. And हम लोगों ने 7-8 players जो अच्छे अभी कर रहे हैं, जैसे you also taken the name, उन लोगों को अपने इसमें रखा हुआ है, training camp में रखा हुआ है. And then once we go from here, these girls will come and they start training. And right now we have Renuka, we have Meghna Singh, we have Pooja, and Simran was also part of the team. So these girls they are taking the responsibility and they are doing well. So as a captain, मेरी responsibility थी if how many overs I can give them, because जब आप ज़्यादा bowling करते हो then only you can get the confidence. Because if you're only bowling 2-3 overs in a match and then you're not getting bowling in that small spells, they are very important for them. So when we went to the Sri Lanka tour, so it was very important for me to bring them on the right time so that they can perform, they can do really well for the team. So whatever we got in the team, so we try to what best we can get from them. So I'm really happy the way especially Renuka, Meghna and Pooja perform, or they are taking the responsibility. And apart from them, we do have few players, they are coming up, and they will in the future they will train in NCA, and then definitely if they do well, they will pick them in the team also. आपको क्या लगता है, हम अभी तक बहुत वर्ल्ड इवेंट्स देख लिए हैं, लेकिन हर बार जब भी देखते हैं तो हम सिर्फ वर्ल्ड कप तक ही बात करते हैं. इस बार एक बहुत ही डिफरेंट एटमॉस्फेयर में आप लोग रहेंगे, जहाँ पे शायद 20 से ज्यादा स्पोर्टिंग इवेंट्स ये वो सब कुछ है. तो ऐसा क्या डिस्कशन है, ऐसा क्या आपको लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स, हाउ इज इट गोइंग टू चेंज वुमेन्स क्रिकेट? फर्स्टली आई फील, क्योंकि हमने हमेशा देखा है जब भी मल्टी स्पोर्ट्स चल रहे होते हैं, बट अब इस बार हम लोग फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने वाले हैं. एंड देन हमारे आसपास बहुत सारे एलीट एथलीट्स रहेंगे जिनसे हमें मोटिवेशन आएंगी, और हम भी ट्राई करेंगे वी कैन मोटिवेट देम थ्रू आवर परफॉर्मेंसेस. सो this time it's not about cricket, it's about playing, watching all the games, all the athletes around you. So ये एक अलग feeling है, and I think we are lucky that we have got this opportunity to participate in this big event. And I think as a player you always want
to keep representing India in different formats. So अभी हमें ये एक platform मिला है, and I just hope if we हम लोग इसको जितना utilize कर सकते हैं, and we will definitely look to win medal, क्योंकि medal is something आप जब Commonwealth में medal लेते हो, people always remember you. So हमारे लिए ये बहुत बड़ा event है, and I'm really looking forward for that. 2018 गए सेमीफाइनल्स, 2020 आए, फिर से हम सेमी फाइनल्स तक गए, 2021 इस बार तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। ऐसा क्या अलग हरमनप्रीत कौर और टीम करने वाली है जो अभी तक हमने नहीं किया है कि वो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मिलना ही मिलना है? हम लोगों ने जब भी ट्राई करा है, जब भी हमने पार्टिसिपेट करा है, हमारा हमेशा यही एम रहता है कि हम लोग अच्छा क्रिकेट खेलें। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, विच वी ऑलवेज डिस्कस इन द टीम मीटिंग, कि हम जो हमारी स्ट्रेंथ है हम उसके ऊपर खेलें, क्योंकि जब भी हमने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेला है और अच्छा परफॉर्म करा है तो हमेशा हमें रिजल्ट जो पॉजिटिव मिला है। सो दिस टाइम ऑल्सो वी आर गोइंग टू गोइंग विद द सेम अप्रोच, कि हम जितना अच्छा अप्रोच रखेंगे, जितने अच्छे से अपने आप को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और प्लस पॉइंट इस बार ये रहेगा कि हमारे आसपास बाकी के इवेंट्स भी चल रहे होंगे, इफ वी कैन गो देम, वॉच देम, सो दोज थिंग कैन ऑल्सो मोटिवेट यू। सो आई थिंक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहने वाला है, एंड वी विल ट्राई टू जो भी हमारे आसपास एटमॉस्फेयर रहेगा उसमें से बेस्ट लेने के लिए, एंड देन वी नीड टू keep ourselves in the happy frame, so that when you are happy you can always perform better. So as a leader I will try to create that atmosphere so that everybody can execute themselves in the better way. हरमन, मुझे बताइए, एक प्लेयर आपकी इंडियन टीम से और एक प्लेयर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और बाकी 7 टीम से, who do you think is the player to watch out for at the Commonwealth Games? मुझे ऐसा लगता है कि from our team I'm really looking forward to watch how Shefali is going to do well, because Shefali is always someone who can bring a lot of energy to the team. Once she started, we know we can always get good runs on the board, and definitely Smriti is also there, and then Jamie is also there. A lot of players, it's really hard for me to take the name, but many players are there we can watch. And apart from देशों से बता दो, चलो बाकी के देशों से बता दो, मैं इंडिया में आपको नहीं धर्म संकट में नहीं डाल। बाकी के भी I think Skiver is someone I really like to watch her batting and bowling, and she's someone who brings a lot of to England team. So I think usko, because it's her home condition, and I'm definitely she's going to dominate this entire event, and I think she's someone jo I personally think कि उसके वो कैसे perform करती है, we can always see. During the little break that I had, we played the Harman Kreitkov interview, and now when we are back from it, Harman Kreitkov has already shown to Australia what she does the best, everything. It's a little things that it's a dropped catch. Harman Kreitkov gets dropped. Who's that ball? Darcy Brown will be इन दैट सिचुएशन कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि हरमनप्रीत कौर का जब आप कैच ड्रॉप करोगे, ऑस्ट्रेलिया नोज कि भैया ये हमारे लिए संकट का समय है। मैंने जस्ट ट्वीट किया है, हरमन, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड इवेंट विमेन्स क्रिकेट चेंजिंग इनिंग्स, क्योंकि 2017 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 171 बनाया था, और उसके बाद में विमेन्स क्रिकेट बहुत कुछ चेंज हो गया, और आज 2022 अगेन इट्स हरमनप्रीत कौर, इट इज ऑस्ट्रेलिया, इट इज अ वर्ल्ड इवेंट, एंड इट इज अ वर्ल्ड इवेंट चेंजिंग इनिंग्स. मोहित शाह, वेलकम बैक. व्हाट्स हैपनिंग? Thank you. I think India is now well and truly in the ascendancy, and like we've seen, Yastika Bhatia is also scheduled to bat. I hope she doesn't have to bat, but that just strengthens the batting order, because she's replaced Tanya Bhatia as a concussion substitute in the Indian batting lineup. So even if there is a wicket or two that fall, there's plenty of batting to come. So I think India are well and truly on top now, and Indian women's cricket is going to have its Lehra Do moment soon. Lehra Do moment soon. I think so we need to get our office colleague Ashlesha here on the big screen to sing Lehra Do.
क्योंकि if we put it as a music, we'll get a big copyright on YouTube. But if Ashlesha sings, we're not going to get that. That's an internal joke, not exactly a joke, but an internal news. The big news that Mohit is putting it out is Yastika replaces Tanya as a concussion substitute that effectively lengthens your batting lineup. India will be very happy because you need that, right? You need Tanya Bhatte as a keeper, but you need Yastika as your batter. Yeah, absolutely. And that is what happened in the 2020 T20 World Cup final as well, where Richa Ghosh came in as a substitute and she batted really well. But by then the match was already out of India's hands. But today I hope Yastika is not needed at all, because the kind of form that both Harmanpreet and Jemima have been in, it looks like there's a close run out call, but she's in. And I'll tell you another big thing. So till now, Deepti Sharma was with her helmets on and she was ready to come in next. But what we just saw on the screen is a little different, wherein it is Pooja Vastragar who's putting her helmet on. Deepti's helmet is off. There's Charlotte Edwards in. There's a lot of people in who just saying that yes, this is our moment. This is an enjoyable moment. I think so. All the biggies are there. I just saw 2-3 days back. I saw Mithali Raj posting something from Birmingham. Everyone looks to be in Birmingham. I think so. We are the ones missing out. That's another Harman Kreitkov sixer. I don't know how much I'm going to enjoy this particular moment. You can take it forward. Yeah, I think but this ability to hit sixes at will is what really makes Harmanpreet Kaur stand apart. Because if you look at a lot of these deliveries, there's not a lot wrong with them. Alana King is not even a bowler that you can easily step out and hit sixes to. She bowls at a very high pace, is probably the best leg spinner in the world right now. So हरमनप्रीत कौर की आप जितनी भी तारीफ करो कम है, क्योंकि ये जो शॉट्स वो यहाँ पर खेल रही है बिल्कुल आसान नहीं है. अनन्या भी आई थी अभी कुछ समय पहले, उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पे पिच थोड़ी स्लोअर साइड पे है, तो इट्स नॉट इजी टू गेट द बिग हिट्स अवे एंड हिट दोस बिग सिक्सेस. बट अभी तक जितना हमने ये इनिंग्स में देखा है, व्हेनेवर हरमनप्रीत कौर हैज स्टेप्ड आउट एंड tried to play the aggressive shot, she has almost always hit a 4 or 6. So that is not an easy thing at all to do. And will we see a Harmanpreet Kaur 100 here? क्योंकि अभी इंडिया को 50 चाहिए, हरमनप्रीत को 37 चाहिए. क्या लगता है आपको, यश हो सकता है? होने की कैलकुलेशन के हिसाब से 100% हो सकता है. अगर जेमिमा रॉड्रिक्स आखिरी तक क्रीज रही तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि जेमिमा प्लेज एज पर व्हाट द डिमांड इज. She doesn't like to. She's not your player who's going to hit you 6 and 4s at will. अभी भी देखो उन्होंने चौका मारा, लेकिन उन्होंने देखा कहाँ पे गैप है, किसके ऊपर मैं मार सकती हूँ. She plays that way. Yeah, if Pooja Vastrikar tries to come in and she will try to close in as soon as possible. That's not Jemima. Jemima will take her time, and she's batting 31 of 31 balls. That's what the innings that you want when Harmanpreet Kaur at the other end is smacking literally every ball now. She's already 63 not out of 40 balls. I would want to watch a Harmanpreet Kaur 100, and that too in a big moment. I just tweeted something, and just before you joined the show, I was saying the same thing. Harman, Australia, a world event, and a women's cricket changing innings. 2017 में हमने देखा, 2022 में हम फिर से देखेंगे. बिल्कुल हम देखेंगे. और जैसे हमने देखा है कि आई थिंक हरमनप्रीत कौर एंड नैट सिवर आर द टू प्लेयर्स हु कंसिस्टेंटली स्कोर्ड वेल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अक्रॉस फॉर्मेट्स. तो दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट. और यहाँ पे जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स रही है हरमन और जेमी की, दैट आल्सो इज वेरी 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 इंप्रेसिव. क्योंकि आप जैसे हर बार एक रन को 2 रन में कन्वर्ट करने की ट्राई करो, या वो क्विक सिंगल्स चुराओ ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम के खिलाफ, तो इट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द फील्डर्स एज वेल. There have been a couple of one dropped catch at least today. थोड़े misfields भी हुए, and that is because of the pressure that Harman and Jemima put on the fielders with their running between the wickets. So that's a wicket. Jemima Rodrigues is gone. She's bowled. Megan Shute takes the wicket. Megan Shute looks to be in a very fiery mode. इतना फायर करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैच हाथ से जा चुका है, क्योंकि 44 needed of 33 balls. India cannot lose it from here. With Australia, you never know, but you would hope that India doesn't lose from here. Or
रही बात फायर की, तो मे बी ये तो आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपके टीममेट्स को आपको लिफ्ट करना है. मेगन शूट इज अ सीनियर प्लेयर, और जब हरमन सेम चीज करती है तो हम काफी तारीफ करते हैं कि काफी पैशनेट है, काफी अग्रेसिव है. और जेमिमा भी खुशी होगी वो रिएक्शन देख के, उनको पता चलेगा कि मेरा विकेट बहुत वैल्यू करती है मेगन शूट, और उनको काफी बड़ा एक अचीवमेंट लग रहा है, और है भी. क्योंकि जैसे आपने बोला जेमिमा यहाँ पे वो खिलाड़ी थी जिसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी शायद दे दी गई थी कि आप एक एंड पर टिके रहो, खराब बॉल आता है तो 4-6 आप मार सकते हो, बट बाकी जो है वो हरमनप्रीत कौर यहाँ पे रिस्क लेगी. तो इट इज अ बिग विकेट, बट मुझे लगता है इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर पूजा वस्त्रकर नाउ. आई थिंक अभी तक एक भी रन नहीं बनाया है ये टूर्नामेंट में, एक भी बॉल फेस भी नहीं किया है, तो इट इज अ गुड टाइम. एंड आज उनको भेजा भी है नंबर 5 पे, जैसे आप बोल रहे थे. नंबर 5 पे भेज दिया है. सब जितने भगवान है सब खुश होंगे आज मेरे हिसाब से. You've done the right decision. Jemima just got bowled by Shoot for 33 of 33 balls. She's played a very valuable innings. A lot of people will say that, oh, okay, it's only 100 strike rate. You're playing at 8.5 run rate per over, and still 33 ball, 33 innings. Do you feel, are you on the same page, Mohit, that I feel it's a very valuable innings? A lot of people will have their questions. Do you feel it's a valuable innings? Wherein, because you needed people? No, it's an absolutely great innings because you have to look at the situation when she walked in. There was a wicket which fell early. Immediately after that, Shafali Verma again threw her wicket away, didn't take advantage of that drop catch by Megan Shute. So I think it was a very responsible innings from Jemima. She is also suffering from an injury. I think her right hand has not been okay for some time now. So in spite of that, to like battle so hard, run so hard between the wickets, like she was the perfect partner for somebody like Harmanpreet Kaur in that partnership, because when Harmanpreet Kaur is in full flow, all she wants you to do is take a single and give her the strike because she can do most of the scoring, and she always wants you to run the singles and twos hard. And I think there are few people who do that better than Jemima. And like you said, whenever there was a bad ball, she punished it. There were a few boundaries that she hit. And these are like very good quality bowlers. Megan Shute, Jess Jonathan have been the best bowlers in the world for almost a decade now. Ashley Gardner is a vastly improved bowler. She's not the bowler she was in 2017. Darcy Brown is a very exciting teenager. Alana King is arguably the best leg spinner in the world. Mohit, we are joined on the show by Suhail Chandhok, who knows Megan Shute very, very well. He's coached her at South Australia. He's done a lot of things. Important thing, Suhail, India is going for the goal, but your student Megan Shute has just taken the wicket of Jemima Rodrigues, 33 of 33. Jemima goes, but Harmanpreet Kaur is at the crease, 64 of 41. Pooja Vastrakar has joined her. As an Indian fan, I'm not going to ask you about Megan Shute a lot. I'm going to ask you as an Indian fan, what are your feelings right now? Well, I think actually it was the best part for me was that Pooja was sent up the order now, right? I think I was actually talking to the guys. I was just commentating on the India-West Indies game, and we were watching this parallelly on the side just because there is so much interest here. And I think the good thing is Pooja has been sent up the order. Maybe a blessing in disguise. Jemmy, obviously a runner ball 33. She was batting really well. But I think Harman still holds the key. And Australia know it. You know, if there's one wicket that needs to fall for Australia's sake, that is Harman. But for us, as long as Harman's there, I think we're actually pretty much in control of this game. Because you look at that 40-odd of 30-odd in a T20 game with wickets in hand, you'll back yourself. Absolutely, you back yourself, and that's a wicket. Pooja Vastrakar is gone. So Gardner takes another wicket. Pooja Vastrakar, who's not played a single ball before this innings, goes for 1 of 5 balls. That's another big wicket that's just come up. But Harmanpreet Kaur is still very much at the crease. 41 is needed of 26 balls. Suhail, you spoke about Pooja Vastrakar, but she's gone. Who's your next big bet? Who should be batting alongside Harmanpreet Kaur today so that India can cross on and win this particular event? Sorry, Yash, the audio's is just really low for some reason. Okay. Is it better now? Yeah, slightly. Yeah, so I was asking that Pooja Vastrakar, we were just speaking, and Pooja Vastrakar is gone. I think so. You should once close in and then
come back again. Maybe it was because some notification or something. Yeah, I'm just trying to figure out why the audio is so poor. Gosh, I don't know. Sorry, just give me a second. Just trying to figure this out. There you go. That should be better. Is it better? Yeah, I think it should be slightly better. Yeah, so we were talking about Pooja Vastrikar and she's gone. Deepti Sharma comes to the crease. She's played really well. There is another wicket. Harman Kreitkov is gone. Australia are back into the match. They've taken 3 important wickets. Jemima Rodrigues is gone. Pooja Vastrikar is gone, and now Harman Kreitkov. 3 wickets back to back. It's so funny because Australia in a big game, and Meg Lanning, the guys, they all said it, right? They said we don't mind. Alyssa Healy said it actually. We don't mind winning as long as we, even if it means we win ugly. And that's what they do. They do this in big tournaments. You see them every time. They put through the grind, and there's just something about the character of the Aussies. When I played there, when I was coaching there, I see this a lot, right? They just don't throw the towel in. Even in situation, I mean, look at this situation, right? 44 of 34 it was, I think, when Jemima went. You've got 2 set batters at the crease. Suddenly, things change. And this is what the Aussies can do. They've just got this knack. And to do it in big games, to do it in World Cup finals, to do it in a Commonwealth final, it's heartbreaking at times, but it's also, you've got to dock your hat off to these guys because there's something about them that just doesn't let them give up at any stage. Doesn't give up at any stage. I was just thinking about that Harmanpreet Kaur holds the key for India. It's Sneha Rana who has come to the crease now. How important Mohit is going to be Sneha Rana right now? Sneha Rana is obviously going to be very important, but we were talking about this earlier today. I wouldn't be surprised if Radha Yadav comes out and hits the winning runs like she has done in the past in major finals. Obviously not a final of this magnitude, but I think she's a player who generally does well in the clutch moments. We saw it with the ball and in the field today. So I think this final is now calling out for Radha Yadav to probably hit the winning runs, and looking at the equation, there will be plenty more of action that will come because India need almost 10 runs in the last 4 overs, 10 overs per over in the last 4 overs. So Sneha Rana will obviously be very crucial, but neither her nor Deepti Sharma can take any time here, and they need to start hitting straight from the outset, which is not exactly a strength for any of these 2 players. So it'll be interesting to see what kind of approach Sneha Rana comes out with today. What kind of approach Sneha Rana comes out today? Neha, we were talking about an hour back, and that time it looked like a very easy thing. Harmanpreet Kaur just was smacking everything. 3 balls, 3 wickets, and it's all changed. It's 41 needed of 4 overs now. I mean, cricket is all about momentum, right? It's there on your side. You're just, riding all the way to victory. But really, Australia, kudos to them for that fight back because Harmanpreet Kaur was totally taking the game away from them. And Jemima was playing an excellent second fiddle. But I think getting these crucial wickets has really put Australia back in the game. And India is under the pump, Getting that 41 runs off 24 is going to be very difficult for India. Very difficult for India. Are we still backing India to win the game, Suhail? Look, it's never over till it's over, right? And as long as Sneha is around, special things that happened with her at the crease, and you can't throw the bat in. Quite honestly, it's one of those moments where also your national pride starts to kick in. You saw it with the steeplechase run yesterday as well, right? There's just something that's different when you play for India in a multi-nation tournament, whether it's a World Cup, whether it's now the Commonwealth Games. And think about it, we've not had cricket at the Commonwealth Games in so long. I was actually commentating a little while ago with Ajay Jadeja, and I was telling him, you were the last captain, and he said, hang on, not the last, the only men's captain that actually captained there, right? So this is a huge moment. It is a huge moment in Indian cricket, and we were also saying, if India go on to win this, or even if we don't, this could be the watershed moment that leads to a women's IPL, to the success of a bit more, right? I think it's like that 1983 World Cup. You never know. It could be the Commonwealth Games for these girls. So it's not over, man. It's not over. I've got a lot of hope. You've got a lot of hope. You talked about the women's IPL. You yourself have commentated, presented a lot of games in the men's IPL.
and you've done that with international cricket. What is the difference that franchise cricket or an IPL brings to the table that an international cricket doesn't? I think there's a sense of camaraderie. Like when you from a presenting perspective, it's similar. But I think when you realize what franchise cricket now means to these players, you realize that it's also the future of the game, right? I think we're not far away from a state where club cricket, franchise cricket becomes 80% of your year, and like in football where you have the Euros or the World Cups, that's your only international cricket. You play the Asia Cup or you play a World Cup or multi-nation tournament. So I think for the girls as well, when that floodgate opens, it really will open doors to a lot of stuff, endorsements and everything else. So there is something special about it because you get to play with people who are normally your opponents. You forge new friendships, you build new bonds, and they're very special. I mean, I say that from a presenting commentary perspective as well. I know when I talk to a lot of the players, they now go to each other's homes and spend time with them when they're on holiday. And this would have never happened in the years gone by. Sunandan sir, welcome to the show. A lot of difference. And over back, everybody was saying India is in for an easy win. 1 over, 3 wickets down. 37 needed of 22 balls. Yes, we all have to agree to a fact that Aussie team, whether it is a men's team, whether it is a women's team, they very well know how to play in the major tournaments, be it ICC, be it Asia Cup, be it any Australasia Cup or any major tournament. They know how to up their game in the important match. So in a way, I am not surprised, but my only hope was a brilliant start by Smriti and Shefali, and then Harman Kreitkov going in for a big innings. Smriti Shefali से तो बढ़िया start नहीं मिली, लेकिन Harmanpreet Kaur did went in for a big innings. She got out on 63 of 41 balls. Sneha Rana just hit a 4. That was, I think, so wide, if I'm not wrong. That's 5 wides. Yeah, that's 5 wides. So that is at least going. Australia is at least putting something in our favor. It is still required run rate is still 8.86. Deepti Sharma and Sneha Rana are both not known to be great finishers, but today is a different day. Deepti Sharma is coming out of the crease, trying to hit. The same goes with Sneha Rana. It's a very different environment. Sunandan sir, you were there in Birmingham a few days back. What is the difference that you saw? क्योंकि आप वर्ल्ड कप इतना कवर कर चुके हो, लेकिन वर्ल्ड कप में एक अलग ही फीलिंग होती है. अभी आपको कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में क्या फीलिंग हुई? बहुत बढ़िया मजा आया था. क्रिकेट मैच एक स्टैंड में से देखना एज अ स्पेक्टेटर वाज अ स्पेशल एक्सपीरियंस फॉर मी, because number of years I have been sitting in the glass box of press box and enjoying my cricket, writing about cricket, covering cricket, but purely as a spectator बैठना और वो मैच देखना, चिल्लाना, cheer करना, when the Indian team is going down, हमारा चेहरा भी नीचे चला जाता है, when the Indian team is doing well, हमारा चेहरा ऊपर हो जाता है. ये सब देखना बड़ी मजे की बात थी. और सर बाकी जितने इतने स्पोर्ट्स थे वहां पर, आप इतने प्लेयर्स से मिले, उसके साथ क्रिकेट, व्हाट वाज द डिफरेंस? और क्योंकि मैंने इतने सारे फोटोज देखे जहाँ पे क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, एथलेटिक्स, एवरीवन इज सिटिंग सेम विलेज, खाना खा रहे हैं साथ में, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. अरे उतना ही नहीं यश, क्या बताऊं मैं तुम्हें कि नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में पूरी इंडियन टीम भी आई थी और मल्टी स्पोर्ट्स देख रही थी. किसी को बॉक्सिंग पसंद था वो बॉक्सिंग के एरिया में देखे, किसी को वेट लिफ्टिंग पसंद था वो उधर देखे, बैडमिंटन, टेबल टेनिस. ये मजा जो है ना वो क्रिकेट के इसमें नहीं आता, बिकॉज यू गेट टू सी मेनी स्पोर्ट्स और उसके जो चैंपियन एथलीट्स को आपको देखने को मिलता है. और सबसे बड़ी बात ये होती है कि समझो फॉर एग्जांपल अगर एक बॉक्सिंग का बाउट हो गया है या एक वेट लिफ्टिंग का राउंड हो गया, तो वो हार जीत के बाद ऑल कम आउट, ऑल आर वॉकिंग थ्रू द सेम एरिना, और जो हारे हुए लोग हैं उनको भी इतना ओवेशन मिलता है, बाद में उनको मिलने को मिलता है, नॉट ओनली टू जर्नलिस्ट बट इवन टू अ लेमैन, इवन टू अ स्पोर्ट्स लवर. वो सब मजेदार था बहुत. इसलिए मेरा आज का भी वही कहना है कि सो नियर सो फार वाली कहानी ये जरा मुझे थोड़ी डरावनी लग रही है. थोड़ी डरावनी तो है. 27 नीडेड ऑफ 17 बॉल्स. सुहेल,
you've covered multiple sports, and I was saying the same thing to Ridhima, that there are very few sports presenters who have covered multiple sports. Do you feel what's your feeling of covering multiple sports and now seeing cricket at the biggest stage of them all? Sorry, Yash, just repeat that, please. So you've covered multiple sports, and from covering multiple sports to seeing cricket being a part of a multiple sport event, what do you feel is that big change? I think it's amazing, and I think it's much needed, right? It's a format also that lends itself to new fans. It's in a country that understands cricket and knows it well. So there's no better time to do it. And why not start it with the women's game again, right? I think it's the perfect way to also kick off women's cricket and give it the lift that it needs. So for me, it's a welcome addition. I just think with T20 cricket, a lot of people, I'm a purist in many ways, right? I actually love ODI cricket as well. I love Test cricket too, but we can't shy away from the fact that T20 cricket is where the crowds are going to come in from. And the minute you start accepting that, the minute you start fighting the purist versus the today's day and age, that's when you accept that this is how you draw in crowds. And look at these girls. I mean, they're playing in front of packed audiences. They're getting the opportunity to be absolute superstars of world sport, not world cricket, but world sport. And I think that opportunity doesn't come by very often. So to do that in a multi-sport event, where, as you said earlier, right, you've got squash players, you've got athletes from javelin throwers to sprinters to tennis players to everything else watching, it is very, very special. It is very, very special. There's another wicket that's fallen. Sneha Rana gets run out. India is leading 23 of the last 15. This is going down the wire. We saw the semi-finals. It happened the same way. And now the finals, it is going the same way. In the semi-finals, we saw England was not able to keep up the track with India. Now we are saying it's Australia finding it difficult against India. Sunandan sir, what's your take? Where is exactly the match going? यश, एक तो बात हमें माननी पड़ेगी कि खेलना और अंडर प्रेशर खेलना इसमें बहुत बड़ा फर्क है. इंटरनेशनल क्रिकेट में वही होता है जो सेमीफाइनल में हमें देखने को मिला कि इंग्लैंड वाज इन अ वे क्रूजिंग, लेकिन अंडर प्रेशर गलतियां हो जाती है, अंडर प्रेशर रनआउट्स हो जाते हैं, अच्छा कैच पकड़ा जाता है, अच्छा कैच छोड़ा जाता है. तो ये सब चीजें जो है वो देखने को मिलती है, इसलिए तो हम इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हैं. और ये एक बात होती है कि आपको हीरोइन बनने का चांस है. अगर आप ये मैच में कुछ कर दिखाओगे तो आप हीरोइन बन जाओगी और पूरे देश की हीरोइन बनने का चांस है. तो ये चांस कोई पकड़ सकता है या नहीं, ये हमें देखने को मिलेगा. अभी कोई ये पकड़ सकता है कि नहीं. ओहो, एक चौका मारा और एक बहुत ही बेहतरीन ड्रॉप हो चुका है. डिफिकल्ट चांस था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फिर से एक ड्रॉप कर दिया. राधा यादव आ चुकी है. मोहित शाह, राधा यादव, आपने स्टार्टिंग में बोल दिया था राधा यादव शायद आज क्लोजिंग करेगी, और राधा यादव के पास वो पूरा मौका है आज क्लोजिंग करने का. 18 चाहिए 13 गेंदों में. Yeah, I think the equation is definitely not out of India's hands. 18 runs in 2 overs with 4 wickets in hand is a very doable equation. And you have Yastika Bhatia at number 9, जो कि एक स्पेशलिस्ट बैटर है. ओपनिंग करती है, नंबर 3 पे खेलती है मोस्टली डोमेस्टिक सर्किट पे. तो मुझे बिल्कुल लगता नहीं है कि इंडिया को निराश होना चाहिए या ऐसे सोचना चाहिए कि ये मैच उनके हाथ से बाहर हो चुका है. एशली गार्डनर का ओवर काफी क्रूशल था, पर वो मिनिमम डैमेज के साथ उन्होंने निकाल दिया. एक अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गया, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे राधा यादव डेफिनेटली हैज अ गुड शॉट ऑफ hitting the winning runs, because she is that player who always saves her best for the pressure moments and does well jab bhi the team needs her, which is why I think Harman Kreitkov is such a big fan of Radha Yadav. और राजेश्वरी गायकवाड़ जितनी बड़ी खिलाड़ी को उन्होंने बाहर रखा है टीम से, तो वही दर्शाता है कि ये कितनी अच्छी खिलाड़ी है. मोहित के लिए यश, मैं एक चिथड़े बंदूक का मिठाई का बॉक्स का एक बड़ा पैकेट क्या बोल रहा है रेडी रख रहा हूँ कि द मूवमेंट वो उसमें घी शक्कर नहीं, मैं चिथड़े का मिठाई डाल दूंगा, क्योंकि इतना पॉजिटिवनेस उसने दिया है. एग्रीड, ये जो हम बोल रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट में 13 बॉल्स 15 या 18 रन ये बिल्कुल आउट ऑफ द राउंड इक्वेशन नहीं माना जाता.
विकेट जो है वो इम्पोर्टेंट है। अभी जो आपने यासिका भाटिया की बात की, अरे बाप रे बाप, पहले तो उसको खेलने को नहीं मिल रहा था, अब खेलने को मिला है ये क्रूशियल मोमेंट पे। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप 100 रन बनाओगे तो भी इतना तो मजा नहीं आता, वो मजा 10 रन में आ जाता है। तो ये 10 रन अगर वो बना पाएगी तो बस रे बस। इसलिए ये कलामिटी और अपॉर्चुनिटी का थ्योरी है कि अगर आप वो सपना देख नहीं पाओगे तो ये कलामिटी है, अगर आप ये सपना देख के कुछ कर पाओगे तो मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी है। Yash, wicket? ये अपॉर्चुनिटी जा चुकी है। राधा यादव हैज बीन रन आउट. That's a big wicket now for India. Yastika should be coming in next. Yastika has effectively replaced Tanya Bhatia as the concussion substitute. So it is actually a good move for India. Kyunki Yastika is a better batter than Tanya. So Yastika has effectively replaced Tanya. She's slated to come in next. Radha Yadav has been run out. Grace Harris has taken that wicket. 17 needed of 11 balls. Very important. But I want to hear a very important thing. Suhail, I'll come to you. How important it is for the games to go thrillers, because ICC is slated to give a presentation to the Olympics committee in September saying that why cricket should be included in LA 2028. Just replay this game. Why not? The way it's heading, I think it's important with any sport, right? You get a photo finish in a 100-meter dash, you get a photo finish in a 3,000-meter steeplechase, whatever it is. When you get a tight finish in motorsport, either there you go, boundary. We're heading there, guys. We're heading there. You think about it, any sport, when you get a photo finish, it is what the crowd loves, right? It just brings the energy through the roof, and you're getting that here. And it's hard to get in cricket sometimes. We just saw it with the India West Indies series now. I was commentating on this game now, and we were like, what the hell is going on, right? Why are West Indies even playing? But you look at a game like this and you think, wow, what is going on? Why aren't we seeing more of this? And to the Olympic Committee, I think this is a great exhibition. Why not? सुहेल यार, लेकिन जो बीपी की गोलियों का पैसा कौन देगा? तू देगा क्या? मैं तो नहीं दूंगा सर, लेकिन कोई तो दे दूंगा. टाइम लेना पड़ेगा ना. 1-2 साल 3-4 साल अगर शुरू होते हैं ना, फिर उसके बाद the repercussions will come in. ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था, जब मैं उधर कोचिंग कर रहा था women's cricket, that was way back when there was no money in the game. अब देख लो न्यूजीलैंड में इक्वल पे आ गए हैं. So it takes time. It's taken a decade for all of those changes to come in. India though is even further back. So it's going to take time, but अगर वो process शुरू नहीं हो जाए तो कुछ नहीं, मतलब फर्क ही नहीं पड़ेगा. You're right. On the big screen, there's an LPW. Deepti Sharma has been declared LPW. She immediately takes a DRS. She's the last known batter that India has. I know Yastika is at the other end. But in case this wicket falls up, it's going to be Meghna Singh and Renuka Singh Thakur remaining at the crease. It's a very tense game, 13 of 10. I did not honestly expect it half an hour before when Harman Kreitkov and Jemima Rodrigues were batting. It's come to this level that it looks a very clear plum. Should be a wicket ideally, but you never know what happens with the DRS. कैसे होता है? यास्तिका भाटिया ने 4 विकेट लिए हैं. अभी 4 रन चाहिए उसके बैट से. रेणुका ने 4 विकेट लिए थे. वही रेणुका ने 4 विकेट्स लिए. अब उसके बैट से हमें 4 रन चाहिए. 4 रन भी अगर चारों बैटर निकाल लेते फिर भी हो जाएगा. उससे ज्यादा उनको जरूरत भी नहीं पड़ेगी. That's impact in line and hitting. Review is lost. No bat. No bat involved. No bat involved. Deepti Sharma is out. So umpire stays with the decision. 149 for 8. 13 needed of last 9. And it's whatever the 2 bowlers, Meghna Singh and Renuka Singh Thakur with Yastika Bhatia. I cannot imagine a better finish to the Commonwealth Games. Yeah. Couldn't imagine it. Sir, I couldn't have imagined a better drive back home, Yash, thanks to you guys also, by the way. My drives back home at 2 in the morning and 4 in the morning have been quite drab. This has just lifted my entire evening. So this is not just the girls, but this is a nice way to watch it also. Perfect. This is a nice way to watch it. I'm sure 140 crore Indians, the TV sets, laptops, OTTs, whatever are on. Sunandan sir, who's sitting there in Manchester,
watching the game. I'm sure this couldn't have a better exhibition to a world event than this particular match or this particular tournament, because this particular tournament as a whole, India hasn't. If India goes on to win this particular tournament, they are not going to win it very easily. They have put in the hard yards. सुनंदन सर, आप वहां पे थे, आपने इंडिया बार्बाडोस का मैच भी देखा. दैट वाज प्रीटी वन साइडेड, लेकिन वो एजबेस्टन में फीलिंग कैसा है? आउटस्टैंडिंग, बिकॉज क्राउड अच्छा आया था. इवन यस्टरडे इंग्लैंड गेम क्राउड वाज ब्रिलियंट. आज भी वहां क्राउड है. तो एक जो एटमॉस्फेयर बनना चाहिए बड़े मैच के लिए, वो एटमॉस्फेयर बनता हुआ नजर आ रहा है. एंड दिस इज अ ब्रिलियंट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर वुमेन्स क्रिकेट, क्योंकि एक दो तगड़े टीम्स है, वो एक दूसरे को भिड़ रहे हैं और ये इतना बढ़िया क्रिकेट बाहर आ रहा है. वन साइडेड मैच अगर होता तो मजा किरकिरा हो जाता है, लेकिन जब वन साइडेड मैच नहीं होता, नेल बाइटिंग मैच हो जाता है, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता. और आज जो वहां क्राउड है, वो ऑफ कोर्स इंडियन सपोर्टर्स आर, प्लेंटी ऑफ देम आर इन नंबर्स, लेकिन वहां जो न्यूट्रल लोग हैं कि जो बस क्रिकेट का आनंद लेने के लिए एजबेस्टन पे है, उनके लिए तो ये समझो एक क्रिकेट की महफिल मुझे नजर आ रही है. क्रिकेट की महफिल नजर आ रही है. मोहित, you want to ask something? It's 12 needed of the last 7. Yastika is on strike. I want to ask the fans who are with us, Neha and Achal, how are the nerves holding up for the two of y'all, and what do you think is going to happen in the last over, and who do you think is going to be bowling it? I mean, my hands are cold. I switched off the fan because the tension is just getting too much. Because, at one stage it really looked like we were going to win. And yeah, just nervously sitting and watching the match. Real nerves now, 11 of 6. I mean, a great match. I just told previously that we have a good match on cards, and that's exactly what it's come down to. So, really hoping that India wins this, pulls this east off somehow. And yeah, really hoping we win the gold medal here. सुनंदन सर, आप बताइए कि अगर इंडिया हराता है ऑस्ट्रेलिया को, तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि ये ऐसी टीम है जो 5 बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, ODI वर्ल्ड कप चैंपियन है, इस टूर्नामेंट में भी अनबीटन है. तो अगर हराता भी नहीं है, पर इतना क्लोज जो पहुंचा है, लास्ट ओवर में सिर्फ 11 रन चाहिए, अभी भी मैच में है, तो हाउ बिग ऑफ एन अचीवमेंट इज दिस? क्योंकि 2020 में भी इंडिया फाइनल में पहुंचा था, पर इट वाज अ वेरी वन साइडेड मैच. मोहित, एक बात तो है कि एक ही टूर्नामेंट में 2 बार हमने ऑस्ट्रेलिया को डराया है. अब डराने का अगला स्टेप हराना होता है. तो डराया तो बिल्कुल है कि 2 बार लगातार हमने उनको ऐसे पोजीशन में, जैसे बॉक्सिंग में आप लेके जाते हो कॉर्नर में, तो ये कॉर्नर में तो हम लेके गए. एक नॉकआउट पंच की जो जरूरत होती है, वो नॉकआउट पंच देना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत मुश्किल होता है. बिकॉज दीज गर्ल्स are not only playing at the highest level, but they are big bash champs. बिग बैश खेलने के वजह से, जैसे इंडियन मेंस टीम का होता है कि आईपीएल खेलने के वजह से उनके पास एक अनुभव हो जाता है, वो अनुभव विमेंस टीम में, क्रिकेट में बिग बैश प्लेयर्स को बहुत ज्यादा होता है. तो उसका फायदा उनको थोड़ा थोड़ा होता है. इसलिए एक ही बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, कि अभी भी थोड़ी सी जो उम्मीदें है, बिकॉज यास्तिका भाटिया इज देयर हु इज अ प्योर बैटर, तो उसके कंधे पे आप सब कुछ है. देखते हैं क्या होता है. It's Jess Jonathan who's bowling the final over, left arm spinner. Yastika Bhatia is a left-hander. Suhail, do you think this matchup plays into India's hands? Yeah, I just actually saw that on my phone. I was wondering what was going on, and I was going to ask you guys, does Megan or anyone else have an over in hand? Because I was a bit surprised. Ashley Gardner does have. So it's a little bit of a surprise to me, especially given that you've got, and I know Australia like to play the anti-matchup cards sometimes to sort of use reverse psychology, but I think this is actually playing into India's hands a little bit, because for Yastika, this is the best thing she could have asked for. The only thing is, if Australia is smart, give her the single. If India is smart, Yastika maybe turns it down or runs the 2 in any case, right? I think it's going to be a tight one. But I think that if they're backing themselves to, there you go, boundary. Perfect. No. What a way to start. She's actually turned the single down of the first delivery, so I think she's going to bat all the remaining balls. So now it's 10 of 5 to tie the match. No. So there is a run out. So she's taken a single of the second ball,
and she was going for a double, but Meghna Singh on the other end is run out, so Renuka Singh Thakur will come. So 10 So they were needed coming of back for the second, four. right? They were coming back for the second. Yeah. Yeah, 10 so needed. Yastika retains the strike, but they only get Yeah. one. Exactly what I would have expected. I mean, it has to go that way, right? When you've got a left-hander batting, you can't not do that now, especially at this stage when, especially she's the last recognized batter. So 10 needed. Yeah, of this the is going to be last 10. This is going to be 10. 9 or 4? Yeah, you cannot run those runs. You have to go for big ones. Pawar has बिल्कुल something मुझे up भी his लगता sleeve. नहीं है यहाँ पे सिंगल डबल से बात हो पाएगी. नहीं यहाँ पे होगी. डेफिनेटली एक या दो चौके चाहिए होंगे या एक सिक्स चाहिए होगा उनको. Yeah, I mean, one boundary changes the context. Oh, Match is over. Oh dear. Then Oh, Yastika no. Bhatia, LPW, she tries to reverse sweep. Reverse. That was not What? needed. Not needed. Yastika Bhatia I mean, reverse it takes away your advantage of a left-handed batter, right? I mean, It's gone 152 all out. She's Oh, reviewed man. the decision, but it is very clear. She's reviewed the decision. It's 152 all out. Australia win the gold medal. They win the match by 9 runs. India have to settle for silver. As much as every one of us would have wanted, but yes, India finishes off with a silver. That's not the way you play a shot at this moment. It's a very clear LPW. The Yes, decision has been reviewed, but yes, रिवर्स स्कूप हो, रिवर्स स्वीप हो, ये सब जब बॉल में क्या बोलते हैं मोमेंटम रहता है, बॉल में जब स्पीड रहता है तो यू कैन प्ले दिस शॉट. Normally watching these women's cricket, hardly any bowler will give you that opportunity because they take off the speed totally. तो इसकी वजह से इवन लास्ट फ्यू मैचेस स्मृति मंदाना को भी वो प्रॉब्लम हुआ था. तो ये रिवर्स स्वीप का डिसीजन ही मेरे ख्याल से गलत था. It should have gone for straight ones. it actually you know, goes it's for an funny. It's funny has what actually- pressure does, though, right? In big moments, pressure does funny things. It's you know, you want to back yourself, but human instinct kicks in. I've been in that position when I was playing, and you tend to do things where you look back on it and you think, why the hell did I do it? You know, but it's funny when you've got all the pressure in the world. We can sit here talk about it. The coach will no doubt be in a year, Ramesh Pawar, but you know, it's funny when your instincts take over. You have a plan in mind. You think, okay, fine, I'm not able to clear the boundary on that side because there's fielders there. Let me try something. If I pull it off, I look like a hero. But when it doesn't come off, you really look quite silly. And unfortunately for her, that's what's happened here. That's what's happened here. The last thing is Australia have won the match by 9 runs. Australia finishes off with gold. They deserve this. India settled for silver. New Zealand beat England earlier in the day to win the bronze medal. Chalo, one last comment from everyone. I'll start with Neha. Neha, you had already switched off your fans. It's done. We get the silver. Of course, we wanted the gold, but what are your feelings right now? Right now, I'm just heartbroken. But if I really had to put my feelings into perspective, I'm really proud of the girls, right? Coming this far, playing so well versus Australia. I know the margin reached just 9 runs, but you know, the hard work that they've put in has really shown, right? So they will be sad for some time, you know, because they just came so close yet so far. But I think this is a great advertisement for women's cricket. And I'm sure the BCCI is also looking at this match, and they've looked at the Commonwealth Games at large too. And this is going to do great to women's cricket, especially Indian women's cricket. So just waiting for the time to come ahead. Yeah. Waiting for the time to come ahead. Achal, what are your feelings right now? Oh, I'm stunned. I mean, 9 runs, that's really a very, very close margin to lose by. And I think it's high time that India require an women's IPL because, I mean, look at Australia with the BBL and England with their women's league of their own. They are such strong teams, but India managed to beat England in the semis, and even without the women's IPL, they still came this far and they put on a great show even in the finals. I think India needs to, I mean, they will learn how to handle pressure once the women's IPL starts. And I think that is the need of the hour. And yeah, I'm really looking forward to the women's IPL that will be starting next year, hopefully. So
Yeah, hopefully the next time in the World Cup or in these multi-team events, we see a much experienced team India where they handle pressure much better. So I'm really hoping BCCI takes steps, really strong steps to introduce the women's IPL for our women to like handle the pressure in these big matches. I mean, to reach 3 finals in the last 5 years, that itself is a brilliant achievement from our team. Well And said. yeah, Well said. we will surely go for one step further if steps of maybe a big league like the women's IPL is taken. So I think that is the main thing to be done right now. There's no stronger team than Australia. They're the current T20 World Cup champs. They're the current ODI World Cup champs. They're now the Commonwealth Games champs. Mohit, is there something else that Australia has not done now? No, I think they've done every possible thing, but like Lele sir was telling, Australia is not a team that gets satisfied easily. So now they'll want to repeat all of these because there's a T20 World Cup coming up, then there's a ODI World Cup coming up in 3 years' time, and then there'll again be a Commonwealth game. So they'll just want to keep repeating this and creating the enviable bench strength that they have. And let's be fair to them, I think they are very deserving winners. They had 3 very close contests in this tournament. Every single time they found a way, and their younger players stepped up. Their inexperienced players also did well in the key moments. And this is ultimately a team which has a player like Elise Perry on the bench and hasn't even had to use her and has still won without losing a match. So that shows how good this team is, because it arguably is like benched the greatest player of all time right through a Commonwealth Games campaign and come up with gold with 100% record. So credit where it's due. But like Neha said, India has a lot to be proud of. Before the tournament, not a lot of people were thinking that they would even make the final. Most people thought that they would at best win bronze. But I think they ran Australia close twice, like Lele sir said, were dominant for large chunks of the match on both the occasions. Even today, till the 15th over, India had the upper hand. I think the difference, like Achal pointed out, was, and like Lele sir also said, was the lack of exposure to pressure situations. So once these younger players face these pressure situations more often, be it through a women's IPL or through more high profile domestic cricket, which is on TV, they will automatically become better. And I'm sure India's time will come very soon. Yes, time will come very soon. Lele sir, departing thoughts, what do you feel? मेरे ख्याल से अब इंडियन टीम को पता चल गया है कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं. अगर ऑस्ट्रेलिया को हरना नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुमकिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरी जानकारी अब उनको मिली है. उसके ऊपर वर्क करना होगा, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो, चाहे कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सिंगल्स हो. और दूसरी बात ये होती है कि खाना खिलाया, जी हाँ, पेट भर गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. उनको ये नौका उस पार लेनी पड़ेगी, तो ही ऑस्ट्रेलियन टीम को ये हराना मुश्किल नहीं. ये लास्ट 2 मैचेस में हमने देखा है, सिर्फ वो फिनिशिंग टच देने के लिए उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. फिनिशिंग टचेस देने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. सुहेल, डिपार्टिंग थॉट्स. Look, I think it's very simple. I think the one big thought for me is you have to remember that in sport, we always say winning is a habit. And when you taste that first win, it becomes a habit that sets in. We're not far, right? And I think, as everyone's already said, you know, when you've beaten England at home in front of their home crowd, that to me is a taste of victory. And that'll power these girls on further. Yes, you've not beaten the world champions. Yes, you've come narrowly close yet again. It'll break their hearts, and it should. You should hurt, right? I think from any perspective, you know, when you lose a game like this, it's got to hurt. If it doesn't hurt, you're not playing it for the right reasons. And they'll come away from this. They'll hurt. The hurt will make them stronger. They'll come back the next time around, and they'll get past the girls. You know, and I think with more experience, when they start playing more, when more young girls from India play the women's BBL, where they play in England, when the women's IPL comes around, yes, that'll help. But I think when you get that first taste of blood, when you get that first taste of a win, winning is a habit. Losing is also a habit. They're not losing to all the big sides anymore. Remember that. They've beaten England, who are a strong side. They've beaten them at home, in a semi-final, in a big game. A lot of people said the same thing about PV Sindhu. Oh, she's the finals girl. She loses in finals. But what happens when you win that first one? The floodgates open. So we've got to keep faith. We've got to talk about the positives. Yes, but we also have to hurt us as fans, them as players. When you
sense that you really, really, really came close and it really hurts you, you'll remember it, and you build more character, you build more strength, you work harder in the nets. As Lele sir said, you do more time with your power hitting abilities, you put more fitness into your routines. So these are all things that will come from a loss like this. Good things don't only come from victories. Very good things come from losses, and that for me is my parting two cents, I guess. Well said. Well said. Your parting 2 cents. Thanks to the esteemed panel today for tuning in and for helping us with this watch along. Suhail, thank you. Sunandan sir, thank you. Neha, thank you. Achal, Mohit, everyone, thank you for the entire 3.5 hours. There were a lot of other people who joined in. Australia world champions, T20 World Cup champions, ODI World Cup champions, and now Commonwealth Games champions. India finish second. They settle for silver. Yeah, happens. New Zealand win the bronze medal. They earlier beat England, thrashed England earlier in the day. That is how it all ended. Australia gold, India silver. We didn't want this, but yeah, India silver. One just lost by 9 runs. New Zealand bronze. This is us. We had a lot of former cricketers, fans, journalists, presenters, everyone today for our 3.5 hour watch along. This is me signing off on a really hectic day, because tomorrow is the closing ceremony of the Commonwealth Games. We will be active all across on Women's Cricket Zone and Women's Sports Zone. You guys can tune in. Thank you very much.